Hello and welcome to the Pakistan Cup Women's One Day Tournament here at National Stadium, where the first match is being played between the Dynamites and the Blasters. There has been some overnight rain and there is a bit of delay in the match, but things are looking good now and the match is about to get underway. Uh, there has been some overnight rain, quite heavy in fact, because of which there was a bit of water logged on the field, on the outfield, because of which umpires were a bit reluctant to start the game on time. Uh, Here are the two teams, and we will now be going for the national anthem. Well, on the screen you can see the two teams today. The Blasters, the match officials, match referee, and the two teams have lined up, and they are all are ready for the national anthem, which will kick off today's match and the domestic season as well. It is not only the opening match of the women's. Well, now after the national anthem, the match is about to begin shortly. Marina Iqbal has joined me in the commentary box, the former international women's cricketer and a former selector as well. Welcome you, Marina. Thank you so much, Naimbai, and a very warm welcome and good morning. A lovely morning, rather, from National Stadium. Well, well, the overnight rain would most probably might just have an effect on the wicket as well. Uh, there might be a few damp spots which might help the bowlers early on. But overall, the conditions look good. Very good work from the. Here you see the pitch. It looks all right. Looks very good for batting. No grass at all. Very placid. But we did have a close look uh, a while ago. There were a few damp spots which might just make the ball to stop on the batsman.
and might affect the timing of the opening batsman. So, what do you think of the wicket, Marina? It's quite solid. Looks like a good batting track, but yes, with the rain and the breeze uh, just blowing across the ground, there might be some initial hiccups for the opening openers probably. But it will be interesting to see how the bowlers utilize these conditions, because early on getting some wickets will definitely put a dent in the Dynamites batting lineup. Yes, definitely. That must be the idea uh, for the Blasters, who would like to take on early wickets just to stop that flow of runs. And definitely early wickets do help in fact, I believe that's the only way to stop the scoring rate actually in one day cricket, especially on tracks such as this one, batting tracks, and with all the fielding restrictions. कहाँ है? It's a beautiful ground with a lush green outfield, solid outfield, and probably it's one of the best batting tracks in whole Pakistan for a batter. But yet again, it's a one-day game. It's a long game, long format. Again, it will be really crucial to utilize the initial spell of the bowlers. And it will be also very crucial for the batters to give a good, solid start for their team. Yes, of course, this being the first match of the tournament of the season, both the teams would be looking to start off the season on a very positive note. Of course, it is very important for teams to get on to a good start early on in the tournament, because of course the tone set in the early matches takes you a long way in the tournament, affects your form, affects the whole body language of teams and the attitude. The opening batters. Sadaf Shams, she's been around in the domestic circuit for a while. A good prospect, a young prospect. And we've got Fatma Sana with the ball. She's been exceptional for Pakistan. Really evolving as an all-rounder. A really good character, aggressive, and loves to take on the responsibility and perform for her team. So it will be a good contest. Yes, definitely. Lot of talent. Over the years, we've seen women's cricket really develop here in Pakistan. A lot of good work done by not only the coaches, but of course the former cricketers. Here's Muniba Siddiqui, the left-hand batter. A lot of experience, 45 matches. Here's the first ball of the match. Ooh. Good enthusiastic start. Enthusiastic appeal as well. The ball going down really, but yes, as we all expected, everyone is geared up, everyone is pumped up. So a very exciting start. A direct hit as well. Getting some good shape, Fatma Sana. She's normally an in-swinger, but can swing both ways. And that's what makes her lethal. And one of the best things is her nagging length. She doesn't allow any batter any room at all. And she studies her opposition. That's what makes her very effective bowler. Muniba Ali is off the mark. It was on to the pads, a leg by. Leading the side, Muniba Ali, it will be a huge responsibility on her shoulders. Well, that's some shape again. The ball moving away, but a bit wide. Wide, says the umpire. Well, that does happen usually early on
with the new ball. It's difficult to control, especially in overcast conditions at times. I'm actually not sure of this end for Fatma Sana because she's a genuine in-swinger. And she's picked the end for the outswinger, probably some strategy. We'll have to see that. That's good bowling, much better, a bit straighter, and that swing again, the away swing. Some good pace as well. Yeah, she's probably one of the fastest right now in the Pakistan domestic circuit. And she's improving day by day with her swing as well. It was a good length. That's the length you need to hit early on, and when you got the slip out in the corner. Oh, excellent bowling, excellent areas. And then again, the hint of away swing. Muniba beaten outside off stump. A loose shot, really. I beg your pardon, it was Sadaf. A loose shot, really, outside off stump. A bit early for those flashy shots. It was a brilliant ball, just inviting the batsman to drive, and you have to be very careful with this swing. Just enough swing away, and it was a close call for Sadaf. Very well bowled again. In the wickets, that is what your captain wants, your opening bowlers to bowl those lines, those lengths, not to give away, not to give any space or any length where you can, free your arms and hit those shots. And that is where Fatma has started very well with those excellent lines and hitting the right lengths. Driven outside off stump, straight to the fielder. No run again. With the amount of swing Fatma's getting, I would like to see another slip or probably a gully, just inviting the batter to drive. And with that wicket, every batter would love, because the ball seems to be coming onto a bat very nicely. But that's the swing you need to counter. I would like to see more attacking field. They need early wickets, they need to utilize these conditions. White ball. A bit outside that red line. Swing, away swing, not very easy to control at times. The length was right, but the line, that's where she was struggling this time. Has to be more compiled and composed. Well, that's the end of the first over. It's 2 runs without any loss. Well, the delayed start today has forced a change in the total overs being bowled. It's now a 45 over game. 45 overs each side instead of the regular 50. Well, there is no hint of any. The ball is not really stopping on the bat so far. It's playing very well. The ball is coming onto the bat very well. Some very nice drives straight to the wicket. Yes, straight to the fielders. But yes, the ball is coming nicely on the bat. It's a hard deck, a good batting track, as I mentioned earlier, and it seems like the swing is the only thing batters need to counter. Otherwise, it looks like a very evenly paced wicket. Aisha Amjad, she's another good prospect for Pakistan cricket. Been around in domestic circuit. She has a very clingy action.
brings the ball back into the batters. It will be interesting to see how she operates with this condition. Well, Aisha, the new bowler, bowling from the pavilion end. Good start, really. Good lines. A bit short on pace in comparison to Fatma, but good lines. Lack of pace can be really tricky at times, especially if you're an international player. Muniba Ali opens for Pakistan team. Usually likes the ball coming onto the bat. With this kind of pace, she needs to be very aware of her shots, and waiting for the ball is crucial. Yes, absolutely right. I think in these that's pulled really a bit short. Pulled to square leg. That would be 4 runs, the first boundary of the match. Muniba getting off to a good start. Well, you're absolutely right, Marina, in situations like these when the ball is not coming onto the bat. It's always difficult to time it, and you need to concentrate more on just playing the balls in the gaps and picking those singles and doubles, even if the boundaries are not coming. Yeah, straight away change in the field. Square leg is now in position. Full toss, but it's straight to square leg. That's the change Marina was talking about. Immediately comes into play, but I'm sure Muniba will be disappointed with that. It's a full toss there to be hit. Missed chance. Yes, missed opportunity for consecutive boundaries, but she'll probably make it up to it. And again a full toss outside off stump, played through the gap on the onside, and another boundary. Asking for it, Aisha was able to get away with that on the previous ball, not this time. Of course, Muniba, being a Pakistan international player, won't let such opportunities go every time. Aisha Amjad struggling to land the ball. She has to be consistent. Much better. That's where the captain would like her to bowl. That's the end of the second over. It's 10 without loss. Two overs have gone, 10 runs on the board. Both the opening bowlers have failed so far to Fatma not getting the line right, and Aisha not getting the length right. Well, we talk about partnerships. Like in batting, you need partnerships in bowling as well. The conditions are there, you need to utilize it. And from both ends, because we've seen Aisha leaking some runs, pressure is back on Fatma. That's the areas the captain would like her to bowl, especially with the new ball and a hint of swing. She would like Fatma as well would like to see the batsman driving the ball through those cover and extra cover areas, because that slip will only come into play if the batsman is made to drive the ball. She's been spot on in the previous over, but this over is very crucial because of the runs. Excellent areas, very well bowled, and the length was immaculate this time.
wasn't there to drive, a bit expansive by the batter, especially early on, where the opening batsmen are expected to play close to the body. That was away and away from the body. Could have been dangerous. That's much better. Very good lines. Very good over so far by Fatma. Previous delivery was a ripper. Perfect line, perfect length, and just enough swing. This time probably just a tad shorter. I would like her to go to the previous length because that is where she can create problems for Sadaf. And yes, you were right, playing for a longer format, and especially with this kind of swing, you need to be very aware of the line of the ball and the length. Usually these short swings, I mean, if the ball is swinging a lot. Dead ball. Problems with the foothold. Most probably because of that rain, there's a bit of dampness. There was a bit of slip. Fatma doing some repair work with her shoes. Nida Dar, one of the most prolific players for Pakistan team, has been around at internationals, been performing well, played big bash for Pakistan as well. She's one of the seniors in this team and a huge responsibility on her. Been in and out of form, but she knows how to come back. Well, looking at the lineups, Marina, there is a lot of experience in the Blasters team compared to the Dynamites, I think. You know, they've got 6 players in both sides who have represented Pakistan, but it's on the day who performs that matters. Ooh, short one. Well, lucky to get away with that one. A bit outside leg stump, but the umpire thought otherwise. Good pace. I'm very impressed with Fatma's pace, and of course that the swing she's getting. It would be very unlucky for her if she doesn't get early wickets with that swing going for her. Yeah, but she needs to be consistent with the line and length. Ooh, that was aerial, but in the gap. It's 4 more runs through the covers. It was there to drive, and she took that opportunity, drove well, got very near to the ball. The ball did go in the air a bit, but safe. 4 more. Roop Shah at point, she's one of the better fielders. And yes, it was uppish, but in safe zone. Well, Fatma Sana won't be disappointed because these kind of shots really, you know, invite the bowler's confidence to pitch it up. And that's exactly what Blasters should be looking for. They still need to attack. They've got the slip there, they've got the swing. All they need to do is hit the right areas. Good bowling. That's after 3 overs. It's 15 runs without loss. If you look at that shot, Marina, I think it was a moral a win for the bowler, as of course that shot was not full of confidence. It was aerial. It was yes, she did time it well, but there was, you know, if you see the body language, she wasn't very sure about that shot, so that is a good sign for the bowler. She actually placed it well, unintentionally into the gap. But yes, again, the thing is that they need the batters to be driving because of the swing. And right now it's a win for Dynamites because no wicket is down. Aisha is going to continue.
Muniba is on 8 with those couple of boundaries she hit on the onside in the previous over. Looking good so far. Full toss once again, and the result is the same. 4 more runs to mid-wicket. Muniba is not going to be missing on these ones. Yeah, the captain cannot place any field for a bad ball. She has delivered actually 2 full tosses in the previous one, and this one was again a freebie for Muniba Ali. Really struggling, Aisha Amjad. She's getting the swing, but she's unable to land the ball, and that can play a huge role for this power play for Dynamites. Down the leg side, glanced to find leg. Yes, these loose balls, of course, a player like Muniba, who's been around for a while, has played international cricket, of course she will not be missing on those opportunities. And it is also very difficult for the captain to, of course, as you mentioned, set fields for such bowling. Struggling, Aisha, it seems, of course, with those lengths and the line. So she's giving width, and of course those full tosses are not helping her. It seems like that she's not completing her action. The follow through is hardly there, which can obviously affect the length of the ball. Going round the wicket now. That's where she needs to bowl. Within the stumps, not giving any width, and getting the length right. It's a good opportunity for the youngsters. The 4th team has been added to this tournament and gives a huge advantage to youngsters like Aisha Amjad to learn and perform. Another single down the leg side to end the over. So after 4 overs, it's 22 without loss. Another thing I like is that we've got 2 young captains, Muniba Ali and Sidra Nawaz. Both are keepers. And they've got a constant battle within the team for the keeping position as well. It's also a good opportunity to groom and develop youngsters as a captain and leadership qualities into them, and playing with other seniors in the squad, that can really help. And this is actually the purpose of this tournament, to include youngsters so that they can watch and learn from the seniors. Yes, very right, Marina. This is the opportunity to not only develop their skills, but their personalities, their attitudes. Very good bowling by Fatma within the stumps, not giving any room. Dot balls, especially in the power plays, especially in the first power play, puts pressure on the batsman. Of course, they want to score as many runs as possible in the first power play with the fielding restrictions, and the more dot balls you bowl, the more you get the batsman under pressure. Driven straight to the fielder, and again, as we have mentioned before, that is the purpose of Fatma, as we have seen, is getting a bit of swing. That is what she wants the batsman to do, drive,
so that that slip position and that gully position can come into play. She's done her work on Muniba because she can go aerial in that gully position, and she's placed it nicely. All she has to do is make her play that shot. Bit on the shorter side this time. Tried to cut. Mistimed. Yes, as you mentioned, Marina, these tournaments, the domestic tournaments, are very important for the young girls especially, to develop, as I said, not only their skills but their personalities, their attitudes, play with the senior players, learn from them, and be as ready as they can for international cricket. Such competitive cricket obviously helps the youngsters, and they need to be ready by the time they reach international cricket. And these type of tournaments, playing under the senior players, playing competitive cricket, watching them perform, watching how skillful they are, and the work ethic and the fitness level, these all things add up to develop a good cricketer which can perform at international level. A bit away from the bat, went for that drive, missed. With that hint of swing, I think Fatma is mentioning to Nidadar that that is what she wanted to do really, and that is why she bowled it a bit away, gave that width so she could drive outside that off stump. Yeah, she wants Muniba to chase that ball because of the slip and gully in place. There you go. That is what she wanted to do. Very close this time. That outside edge she's been looking for. Got it. Unlucky. And as Marina mentioned, that she would have liked to see that second slip. And had there been a second slip, it would have been the end for Muniba, I think. Yeah, that's the area Muniba needs to work. She likes to chase balls way outside off stump, and at times she tends to throw her wicket away, and that's exactly the plan Fatma Sana was looking for. After 5 overs, it's 26 without loss. So change in commentary now. Sabira Pasha and Danish Naeem Abbasi. Danish, khush आमदीद. Thank you, Sabira. Thank you. Finally, Nidadar को हम देख रहे हैं, introduce किया गया है. निदादार अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से खेलती हुई, और जिस तरह स्टार्ट ऑफ हुआ, फातिमा ने बहुत अच्छी अभी तक बॉलिंग यहाँ पे की है और बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि ट्रैप करने की कोशिश करें, चाहे मुनीबा हो या सदफ हो, बट अब निदादार एक्शन में. सीनियर प्लेयर पाकिस्तान के लिए, साथ साथ पाकिस्तान की ऐसी प्लेयर हैं जो कि बिग बैश में खेल चुकी हैं. फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बड़े प्लेयर्स को एक आध मैच दरकार होता है अच्छी फॉर्म में आने के लिए. वेरी गुड फील्डिंग एफर्ट बाय ब्लास्टर्स. जगह नहीं दे रही, स्पेस नहीं दे रही. अभी एक मिस आउट किया.
ये अच्छा इकदाम है, इब्तदाई लम्हात में इन रडार को यूज़ किया गया है ताकि प्रेशर को बढ़ाया जाए किसी तरह विकेट हासिल करके। सदफ को खेलने में मुश्किलात हो रही हैं, इतने आराम से इन रडार को फेस नहीं कर पा रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं इनके ऊपर। Danish, comparatively, Sadaf is very young in comparison to Nida Dar. Nida is a senior, a pro. Wide call होगी ये। आखिरकार सदफ थोड़ी सी सक्सेसफुल हुई कि एटलीस्ट कुछ तो कर सके निदा की इस बॉलिंग पे। एंड ऑफ ओवर, 6 overs down, 28 runs. Fatma Sana back in action. बहुत अच्छा ड्राइव किया था और ख़ासतौर पे बिल्कुल बाउंड्री के करीब अच्छी उतनी फील्डिंग का मुजाहरा किया यहाँ पर। आई थिंक कि ज़रूरत इस बात की है कि रन्स की रफ्तार को जो है वो बढ़ाया जाए सिंगल और डबल्स के साथ साथ। वेरी वेल सेव्ड। और दानिश, जब फातिमा सना की मैं बात करती हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन अपकमिंग यंगस्टर हैं जो कि इस वक्त टीम पाकिस्तान की अगर मैं कहूँ कि बैकबोन का काम करना शुरू कर रही हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अभी वेस्ट इंडीज़ में जो लास्ट 2 ODIs पाकिस्तान ने जीते हैं, थैंक्स टू फातिमा सनाज बॉलिंग, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। वाइड बॉल, अनदर वाइड। इतनी मैंने तारीफें कर दी कि वाइड होना शुरू हो गई। एग्जैक्टली आपने वेस्ट इंडीज़ के जोर की बात की, बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था और पाकिस्तान के लिए काफ़ी उम्दा बॉलिंग का इन्होंने मुजाहरा किया था। ज्यादा हो गया, थोड़ा पीछे। इवन हमने मैचेस में फाइवर भी देखे थे इनकी जानिब से। और एक ख़ास बात अगर देखें फातिमा की बॉलिंग में तो हम देखते हैं कि बड़ी अच्छी ये इनफैक्ट इन स्विंग जो है वो करती हैं, लेकिन आज आप देखें तो गेंद को बाहर भी बड़ा अच्छा निकाल रही हैं। वेरिएट करने की कोशिश करती हैं बहुत, मतलब शी कीप्स आस्किंग क्वेश्चंस, वो कुछ ना कुछ तंग करती रहती हैं, कहीं ना कहीं बैट्समैन को सेटल नहीं होने देती हैं। एक ये ख़ास स्टाइल है फातिमा का। और वही मैं एग्जांपल दूंगी, वेस्ट इंडीज़ के जब लास्ट 2 ODIs थे उसमें दोनों में प्लेयर ऑफ द मैच थी, एक दफ़ा 4 विकेटें ली, एक दफ़ा फाइफर। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस वक्त और इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में भी हैं। फातिमा सना के अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो लिस्ट ए करियर आपके सामने। थोड़ा सा और क्लोज जो है यहाँ पर फील्डिंग करना चाह रही हैं, यही वजह है कि कवर बिल्कुल सर्कल पे एक मौजूद है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है और मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद है, स्लिप भी साथ साथ लेके रखी है, बैक किया है बिल्कुल ऑफ साइड को। मुनीबा को हिलने नहीं दे रही हैं वो ज़्यादा, बिल्कुल पीछे रखा हुआ है मुनीबा को और मुनीबा खुलकर शॉट नहीं मार सक रही हैं। ऑन साइड पे आप देखें तो सवेरा खाली 2 फील्डर मौजूद हैं, ऑफ साइड को मुकम्मल पैक कर दिया इनके ऊपर और यही वजह है कि चाह रही हैं कि यहाँ पर किसी तरह विकेट जो है वो हासिल हो जाए मुनीबा की।
दानिश, पिछले ओवर से जो है फातिमा किसी ना किसी तरह कोशिश कर रही है मुनीबा को ट्रैप करने की, बिकॉज मुनीबा एक तो कैप्टन है साइड की, दूसरा डायनामाइट्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। ऊपर से अगर अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर देंगी डायनामाइट्स के लिए तो आगे जाके इस टीम को फ़ायदा होगा। सो मुनीबा को यहाँ पे ट्रैप करना ज़रूरी है और अब आउट करना ज़रूरी है, बिकॉज 7वां ओवर अपने अख्ताम पर है। ज़्यादा देर सेटल नहीं होने देना चाहिए किसी पार्टनरशिप को। ये ऑन साइड पे क्योंकि 2 ही फील्डर्स हैं, यही वजह है कि यहाँ पर बैकअप जो था वो मौजूद नहीं था इससे पहले, और जिसकी वजह से 1 रन यहाँ पर हासिल हुआ है। फातिमा ने अच्छी बॉलिंग का मजा रखी है, लेकिन अब तक कोई विकेट नहीं मिली है, लेकिन जो लाइन और लेंथ है वो बहुत उम्दा अब तक बरकरार रखी है इन्होंने। ऑफ साइड को फुल पैक रखने के बाद ऑन साइड पे सिंगल आना यकीनी तौर पे खलेगा। So last ball of the over. पसीने में शरबोर हो चुकी हैं इस वक्त फातिमा। वो ब्यूटीफुल बॉलिंग डिस्प्ले बाय फातिमा सना, और 7 ओवर्स का यहाँ पे हुआ इख्तिताम। डायनामाइट्स 35 फॉर नन। 45 ओवर्स का मैच है दानिश ये, बिकॉज कल सारी रात कराची में बारिश होती रही है और आज सुबह जब हम यहाँ आए हैं तो काफ़ी वेट आउटफील्ड थी, वेट पैचेस थे, बॉलर्स रन अप एरिया पे वेट पैचेस थे, जिसकी वजह से डिले हुआ, और अब ईच साइड वुड हैव 45 ओवर्स। जी हाँ, और यही वजह है कि हमने थोड़ा सा मैच को जो है वो डिले होते हुए देखा है। बट दानिश, ये कितनी अच्छी बात है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपने और मैंने बहुत ज़्यादा वुमेन क्रिकेट कवर की है। हम 3 टीम्स खेलते हुए देखते थे, बहुत अरसे से 3 टीम्स से चौथी नहीं हो पा रही थी। इवेंचुअली आज हम देख रहे हैं कि अब इस इवेंट में हमें 4 टीम्स खेलती हुई दिखेंगी। 4 टीम्स मतलब ज़्यादा लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज़्यादा लड़कियां आपको एक्शन में दिखेंगे। और ख़ास तौर पे अब जो डोमेस्टिक है इस साल का विमेंस का, उसमें भी ना सिर्फ हम इस पाकिस्तान कप में बल्कि नेशनल T20 में भी 4 टीम्स देखेंगे। वेरी क्लोज। निदा फिर से तंग करना शुरू हो गई। मुनीबा के पीछे मुझे ऐसा लगता है फातिमा भी और निदा भी टारगेट करना चाह रही है मुनीबा को, कि किसी ना किसी तरह मुनीबा को सबसे पहले आउट किया जाए। आई थिंक जो 4 टीम्स की आप बात कर रही हैं सवेरा, हमने देखा कि लास्ट ईयर भी 3 टीम्स थी, लेकिन उसके बाद अंडर 18 से जो लड़कियां आई और उसमें एक अच्छा टैलेंट हमें यहाँ पर नज़र आया, और मे भी आने वाले वक्तों में या आने वाले डोमेस्टिक सीजन्स में हम देख सकते हैं कि शायद 4 से 5 भी टीम्स होती हुई नजर आए। बिल्कुल। ऑफ साइड पे फील्ड लेने के बाद निदा डार को भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने भी ऑफ साइड को पैक किया हुआ है, लेकिन फिर लेग स्टंप से बाहर गेंद करना यकीनी तौर पर वाइट बॉल अंपायर की तरफ से इशारा आया। निदा तंग करते हुए मुनीबा को, और जिस तरह दानिश आपने बात की है, बिल्कुल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे लड़कियों का पूल बढ़ता जाएगा, हमें यहाँ ज़्यादा कम्पिटिटिव क्रिकेट भी दिखेगी और ज़्यादा टीम्स भी दिखेंगे। निदा बहुत ज़्यादा गेंद को हम देखते हैं कि वेरिएशन के साथ कर रही हैं, कहीं पर फ्लाइट जो है वो भी दे रही हैं, और यही वजह है कि यहाँ पे लेकिन सदफ और मुनीबा किसी किस्म का उस गेंद पे रिस्क लेने को तैयार नहीं है। बहुत जल्दी शायद चाह रही हैं कि ना करें और आसानी के साथ अपने आप को मौका दें विकेट पे सेट होने के लिए। यही वजह है कि
ऐसी बॉल पर शॉट खेलने का कोई इरादा नजर नहीं आता। दानिश, निदा, मुझे लगता है निदा के ऊपर एक डिफरेंट किस्म का प्रेशर भी है इस वजह से, बिकॉज निदा इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट राइट नाउ जो कि खेल रही हैं, जिनका एक्सपोजर ज्यादा है। आपने जिस तरह बताया बिग बैश भी खेली हुई, वो उनके लिए परफॉर्मेंस करना और परफॉर्मेंस देना बहुत ज़रूरी है। रीसेंट पास में थोड़ी सी ऑफ कलर दिखी हैं, अभी इससे पहले एक T20 टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकी निदा, अपनी टीम को आगे नहीं ले जा सकी। सो मुझे ये लगता है कि निदा के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है परफॉर्मेंस का। 8 ओवर्स के इख्तिताम पर 37 फॉर नन डायनामाइट्स। ग्राउंड में क्योंकि सवेरा बात करी थी कल रात की बारिश, और अभी भी हम देखते हैं कि हवा बहुत कम कम चल रही है, थोड़ा सा हब्स नज़र आता है। और ऐसी कंडीशंस में फातिमा को हम देख रहे हैं कि अपनी बॉलिंग को जारी रखी हुई है यूनिवर्सिटी रोड एंड से। काफ़ी ज़्यादा एक जज्बा नज़र आ रहा है, और बॉलिंग भी इन्होंने काफ़ी उम्दा की है अभी तक। ओवर्स रिवाइज होने की वजह से ये पावर प्ले का आखिरी ओवर अब शुरू हो रहा है। 9 ओवर्स का पावर प्ले हम यहाँ देखेंगे। वाह, बड़ी अच्छी और बड़ी उम्दा बॉलिंग कर रही हैं फातिमा। यॉर्कर लेंथ भी हमें देखने को मिल रही है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेन करती हैं, वो भी बाहर निकालने में कामयाब हो रही हैं। इन स्विंग भी नजर आया। अब तक बहुत भरपूर पैकेज है फातिमा का जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है। दानिश, जाम फातिमा की बॉलिंग की बात करते हैं, फातिमा बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हैं। एक इनको मिनी डायनामाइट का हमने लकब दिया हुआ है, बिकॉज पिछला जो हमने नेशनल T20 कवर किया था उसमें ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी। वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। और अंपायर की तरफ से हम देख रहे हैं कि जो बैटर्स हैं उनको एक और वार्निंग जो है वो दी गई है, और बताया गया है कि आप पिच के ऊपर रनिंग नहीं करें बल्कि इसके बाहर से करें। इससे पहले हमने सदफ के लिए देखा था, मुनीबा के लिए भी यही अल्फाज हमने अंपायर की जानिब से दोहराते हुए देखे हैं। दानिश, 5 बाउंड्रीज अभी तक लग चुकी हैं इस इनिंग्स में, मगर अभी बहुत देर से ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया बाउंड्री लगे हुए। कोई बहुत अपटाइट बॉलिंग हो रही है और बहुत अच्छी फील्डिंग भी हो रही है। वाओ, लेंथ बहुत अच्छी फातिमा ने मेंटेन की हुई है, और अमूमन जो ये यॉर्कर लेंथ पे गेंदें कर रही हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी बैटर के लिए इस तरह से खेलना, और फिर उसी लेंथ के साथ लाइन को वेरिएशन दे रही हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये बॉल की थी, विकेट कीपर भी इसको फर्स्ट टाइम कैरी नहीं कर सकी, बड़ी उम्दा बॉलिंग की अब तक। ये फातिमा सना जिस तरह जबरदस्त बॉलिंग कर रही हैं, बहुत अच्छी फील्डिंग, चेस डाउन दी बॉल, और बाउंड्री होते होते बच गई। मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने अभी भी बाउंड्री मेंशन की तो हो जाएगी या हो गई, मगर नहीं हुई बाउंड्री यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब गिरते हुए इस गेंद को रोकने में ज़रूर कामयाब रही, लेकिन अच्छा शॉट था यहाँ पर, ये देखते हुए कि गैप तलाश किया पॉइंट और कवर्स के दरमियान से और फिर इसको प्लेस किया,
और मौका भी मिल गया था क्योंकि अमूमन जिस तरह से फातिमा गेंदें कर रही हैं यॉर्कर लैंड पे हम देख रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा शॉर्ट किया था इस गेंद को, जिसकी वजह से मौका मिला यहाँ पे रन हासिल करने के लिए। दानिश, जिस तरह हम फातिमा की ब्रिलियंस की बात कर रहे हैं, आपको पूरे ओवर में ये कुछ ना कुछ नया करती हुई दिखेंगे, कुछ ना कुछ अलग करते हुए दिखेंगे। नो बॉल, नो बॉल एक और अलग चीज, जिस तरह मैं कह रही थी अलग करती हुई दिखेंगी, बट शॉर्ट पिच उन्होंने कोशिश की थी। जी हाँ, लेकिन ये जो अलग कर रहा है ये यकीनी तौर पे बेहतर नहीं रहेगा इनके लिए। इस तरह की वेरिएशंस जो है वो नहीं देनी चाहिए। तो लाइसेंस टू किल है यहाँ पर, फ्री हिट। लेट्स सी इस फ्री हिट का किस तरह से इस्तेमाल करती हैं। सिवाय रन आउट की कोई ताकत इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती विकेट हासिल करने के लिए। मुनीबा अली के पास बेहतरीन मौका इस फ्री हिट पे, जो करना चाहे करें। वाह, एक बार फिर जिस तरह से बार बार मैं बात कर रहा हूँ सवेरा, इनकी जो बॉल है जिस तरह से ये फुल लैंड डिलीवरी कर रही है, बड़ी कमाल की है। और इस बार भी इस फ्री हिट को वेस्ट करवा दिया इन्होंने। मौका नहीं था मुनीबा के पास कि किसी तरह से इसको कहीं खेलती। आसमान पर अभी भी बादल मौजूद हैं सवेरा। क्या मजीद कुछ बारिश की प्रेडिक्शन तो नहीं? क्रिकेट के लिए ऐसे होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल फोरकास्ट है, ऑलमोस्ट 3 बजे की फोरकास्ट है बारिश होने की। तो मुझे लगता है कि जितने रन्स अभी लूट सकती हैं जल्दी से जल्दी डायनामाइट्स की बैटर्स जो हैं यहाँ पे रन्स बना लें। नौ ओवर्स के अख्ताम पे डायनामाइट्स 44 फॉर नन। पावर प्ले का अख्ताम। इस वक्त डायनामाइट्स का ये हालो अहवाल आपके सामने है। मुनीबा अली 28 रन्स 32 बॉल्स में, सदफ शम्स 9 रन्स 23 बॉलों में, 44 इन टोटल। 9 ओवर्स का अख्ताम हो चुका है। अच्छी बैटिंग लाइनअप मौजूद यहाँ पर नजर आती है, खासतौर पे अगर आप बॉलिंग में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सामने आपके फातिमा सना जिन्होंने 5 ओवर में 24 रन दिए हैं। विकेट किसी को भी नहीं मिली। आयशा जावेद ने 2 ओवर में 15 रन दिए। निदा डार ने भी 2 ओवर्स किए हैं, 4 रन दिए हैं, इनको भी कोई विकेट नहीं मिली। लेकिन इकॉनमी के लिहाज से निदा डार ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है। फातिमा लकी रही कि अच्छी बॉलिंग का ज़रूर इन्होंने मुजाहरा किया, लेकिन कोई विकेट इनको अब तक नहीं मिल सकी है। एक अच्छा हसीन इम्तिजाज है सवेरा के अंडर 18 की तरफ से। जो प्लेयर्स हैं वो भी मौजूद हैं, सीनियर्स भी मौजूद हैं। तो आई थिंक कि जो साथ साथ जो जूनियर्स आ रहे हैं उनको बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलेगा अपने सीनियर्स के साथ। और एक जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि चौथी टीम का भी इजाफा किया गया। निदा डार के ऊपर बहुत ज़्यादा शायद चार्ज नहीं करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा डिफेंसिव मोड हम देख रहे हैं कि नज़र आता है सदफ की जानिब से भी और मुनीबा की जानिब से भी। सीनियर्स को वो रिस्पेक्ट देते हुए निदा को वो टोटल रिस्पेक्ट मिल रही है सीनियर्स। और सदफ आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करने की कोशिश कर रही हैं कि कुछ हिट आउट कर सकें, कुछ
थोड़ा सा बेहतर कर सकें, बिकॉज अभी अगर मैं कहूँ पावर प्ले का अख्ताम हो गया है, बिकॉज मैं आप लोगों को फिर याद दिलाती चलूँ 45 ओवर्स पर साइड है बिकॉज ऑफ द रेन लास्ट नाइट। सो पावर प्ले का ये अख्ताम हो गया है और जितने पावर प्ले में एक्सपेक्ट करते हैं रन्स उतने नहीं डायनामाइट्स बना सकी है यहाँ पे। सो अब स्लोली एंड ग्रेजुअली इस पेयर को आगे रन्स की तरफ सोचना पड़ेगा और रन्स तेजी से बनाने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा बाहर थी, अंपायर का इशारा कि वाइट बॉल है, तो एक एक्स्ट्रा रन यहाँ पे मजीद मिला है। पावर प्ले में ऑलमोस्ट 5 रन फी ओवर की रफ्तार से बैटिंग की है। खास बात यह है कि कोई विकेट यहाँ पर नहीं दी। ये बेहतर तरीका है सवेरा ये देखते हुए कि ऑफ साइड पे इतने फील्डर मौजूद हैं, जहाँ मौका मिला वहाँ ऑन साइड पे हल्का सा प्लेस किया और रन यहाँ पर हासिल कर लिया। तो ऐसी सूरत में जो बॉलर है वो भी यकीनी तौर पर परेशान होता है कि मैंने जिस तरफ फील्डिंग ली हुई है वहाँ पर नहीं खेला बल्कि सिंगल जो है वो हासिल किया। बिल्कुल ऑफ साइड पे चांस ही नहीं ले रही हैं वो, बिकॉज ऑब्वियसली एक पूरा कॉर्डन खड़ा हुआ है ऑफ साइड पे। अकलमंदी का मुजाहिरा। इस दौरान जो लॉन्ग ऑन पे फील्डर हैं उनको भी आगे बुलाया है। वेरी गुड बॉलिंग बाय निदा। सदफ को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, समझ नहीं आया सदफ को कि क्या किया जाए इस बॉल के साथ। ये जो आप बात कर रहे हैं दानिश, जिस तरह फ्लाइट देती है निदा अपनी बॉलिंग में, वो नजर आता है। निकलेगी पाउंड देखना इसके तरह ये निकल के खेलेगी। अब शाबाश, जो ओपोनेंट की खिलाफ बात करते हैं ताकि खुल के वो भी सुन लें, ये भी एक अच्छा तरीका है। वैसे विकेट कीपर का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। जिस तरह वो बिहाइंड द विकेट खड़ी होके और कॉन्शियस कर सकते हैं बैटर को, वो देखने वाला होता है। और जिस तरह अभी हम सुन रहे हैं, हमें क्योंकि स्टंप माइक के बाद क्लियर आवाज आ रही है, सो वी कैन जस्ट टेल इट। 10 ओवर का हो गया यहाँ पे इख्तिताम। डायनामाइट्स 47 फॉर नन। सो पावर प्ले में 9 ओवर्स में हमने देखा 45 रन बने थे। 44 इनफैक्ट 5 रन फी ओवर की रफ्तार से बैटिंग की थी। अच्छी हिकमत अमली रही क्योंकि टॉस जीतकर इन कंडीशन से पहले बैटिंग करना और फिर प्रॉपर अपने आप को टाइम दिया। इब्तिदाई पावर प्ले में, ये पावर प्ले में जिस तरह से हमने देखा कि बड़ा अच्छा शॉट था मुनीबा का ये, और ये फुल टॉस बॉल का भी बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ सदफ ने थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर किया शुरू में, और फिर लेकिन जहाँ इनको मौका मिला वहाँ अपने शॉट्स भी खेले, बड़ा भरपूर ड्राइव भी किया। मुनीबा जिनको भरपूर शॉट बॉल पे बाउंड्री लगाने में कामयाब रही थी। साइमा को इंट्रोड्यूस करवाते हुए साइमा आई हैं बॉलिंग करने के लिए। 11वें ओवर की शुरुआत। वेरी गुड सेव, वेरी गुड फील्डिंग। अभी तक ब्लास्टर्स की अगर मैं फील्डिंग की बात करूं दानिश, तो वेरी इंप्रेसिव फील्डिंग बाय देम। रन्स नहीं लेने दे रहे हैं। थोड़े भी ये होता है कि छोटा सा भी एक कोई मार्जिन मिले तो रन निकाला जा सकता है, बट डायनामाइट्स को बिल्कुल इंटैक्ट रखा हुआ है और अपनी अप टाइट फील्डिंग की वजह से जो है वो रन्स नहीं लेने दे रहे। साइमा मलिक अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा अब तक। वेरी गुड बॉलिंग बाय साइमा। अनदर यंग प्रोस्पेक्ट दानिश, और आपको काफी यंग लड़कियां यहाँ दिखेंगी जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मर्स हैं। बिल्कुल सही कहा आपने।
अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। पहले बैकफुट पे जाते हुए मुनीबा ने कोशिश की थी कि ऑन साइड पे खेलें, कामयाब नहीं हुई, फ्रस्ट्रेशन का शिकार नजर आई। अगली गेंद को फ्लाइट किया है और उस पर भी मौका नहीं मिला है, तो अच्छी भरपूर वेरिएशन दे रही हैं अब तक। वेरी गुड बॉलिंग, मतलब मुनीबा को बैकफुट पे इस वक्त रखा हुआ है साइमा ने, और मुनीबा को भी समझ नहीं आ रहा कि हैंडल किस तरह करें साइमा की बॉलिंग को, बिकॉज साइमा मुसलसल कुछ ना कुछ कर रही हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन दे रही हैं, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव बाय हर। जी, इस दौरान जो कवर पर फील्डर थी उनको बिल्कुल पीछे किया है बाउंड्री पर। मे भी शायद चाहती हूँ यहाँ पे फ्लाइट दें और कुछ हिट करें मुनीबा। अनलकी, और जिस तरह से ये बॉल थी, स्लिप भी नहीं थी बहरहाल, लेकिन एक अच्छी बॉल थी जिसपे समझ नहीं सकी थी। बहरहाल ओवर जो है यहाँ पर मुकम्मल हुआ एक और। 11 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 51 फॉर नो लॉस। वैसे दानिश, यहाँ जैसे अभी हमने देखा है कि अगर यहाँ इस जगह पे स्लिप होती तो आपको लगता है कि यहाँ पे आसान हो जाता, शायद पकड़ में आ जाती मुनीबा, विकेट निकाल सकते थे। सो ये अवेयरनेस जो है ना, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब रेगुलरिटी में ये लड़कियाँ खेलेंगी मैचेस, सो ये अवेयरनेस उस वक्त आएगी। जी, निदा डार को आप देखें तो मुसलसल इन्होंने एक स्लिप लेके रखी हुई है और अभी भी एक स्लिप मौजूद है। अपने नए ओवर का आगाज करेंगी। कट करने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हुई है। सीधा सीधा गेंद था, किसी किस्म का ब्रेक नजर नहीं आया हमें। एक बार फिर गेंद को ना सिर्फ फ्लाइट किया बल्कि हल्का सा ब्रेक भी किया अंदर की तरफ निदा डार ने। ऑन साइड पे सिर्फ देखें सवेरा तो 2 फील्डर बाउंड्री पे नजर आते हैं हमें, एक मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि सदफ या मुनीबा, क्योंकि बाउंड्री पर ज्यादा फील्डर जो हैं वो मौजूद नहीं है, किसी किस्म का कोई चार्ज करने का इरादा नहीं रखते हैं, ना ही हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोई रिस्क लेना चाह रहे हैं। इवेंचुअली चार्ज करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। आप कितनी देर तक यहाँ इसी तरह खड़े रहेंगी? सदफ की मैं बात करूँ तो सिर्फ 10 रन बना सकती हैं अभी तक 32 बॉलें फेस करके। मुनीबा कंपैरेटिवली फिर बेहतर, फिर तेज खेल रही हैं, एक्सपीरियंस भी है मुनीबा की साइड पे, बट इवेंचुअली चार्ज करना पड़ेगा। आप कब तक आप कब तक पीछे रहेंगी, कब तक आप कोशिश नहीं करेंगी कि कुछ डिफरेंट करें और कुछ बेहतर करें? वेरी गुड बॉलिंग बाय निदा डार। सदफ कोशिश करती हैं जरूर कि ऑफ साइड पे गेंद को प्लेस करें, लेकिन अमूमन क्योंकि फील्डिंग हम देख रहे हैं थोड़ी सी पैक नजर आती है, या तो फिर वो पॉइंट में जा रही होती है बॉल या फिर कवर्स में, और यही वजह है कि उनको रन वहां पर नहीं मिलता है। सिंगल लेने में कामयाब होंगे। 12 ओवर्स के इख्तिताम पर डायनामाइट्स 52 फॉर नन एंड चेंज इन कमेंट्री बॉक्स। Building quite nicely, and blasters, with the conditions provided, I think probably they will be disappointed. They could have taken few wickets early on, but the bowling line and length wasn't spot on from them. Yes, a bit wavered the bowlers, but with the introduction of Nida, I think things have got better. She's kept
the scoring rate down. Of course, with all that experience, she knows a lot about the game. She's been around for a long time. 12 overs are down. Looking at the batting lineup for Dynamites, I think they know that how important this opening partnership was. And I think we have to give credit to Muniba and Sadaf for just negotiating the early on swing, because they don't have depth in batting. The coming players will be Kainat Hafiz and Alia Riaz and Hurena, and huge responsibility on Alia Riaz in the middle of overs. So I think they have probably poised up nicely, because this opening partnership, they have definitely put up the pressure on blasters, so that later on Alia and probably Hurena is also one of the attacking players. They can obviously change the gears. Yes, definitely. It's a great opportunity for the youngsters to show what they can do. But of course, the responsibility lies on the senior players who would take the match along and set the pace and show what they have learned at international level and what improvement they have made in their game with that international exposure. And of course, there's a huge difference when... That's a fun fact for you. The first Women's World Cup was played in 1973, 2 years earlier than men, actually. Probably not many people know that. And 7 teams have participated in the tournament. So when people question about women's cricket, I think it's more in the origin than the men's cricket. They've been around for a while. Well, that's surprising for me as well, actually. I didn't know that. Well, yes, a very, very interesting fact, in fact. Well, women gathered. They love gathering, so they've gathered for the World Cup earlier than men. Yes. The game is now resuming. It was drinks break. Still some cloud out there in the open, but the batting wicket has been good. The ball's coming on too nicely. We've seen a touch of spin, some swing early on, but I think credit to Dynamites. They've been playing on their team's strength. They know how important this opening partnership could have been for the end result, because blasters have a long depth in their lineup. Yes, it's very important for them to post a very good total, as we mentioned before. There's, of course, talent on both sides, but the blasters, I see a lot of experience as well. So, yes, it's very important to post a total which the bowlers can defend. Saima Malik will continue. Left armer from Quetta. She's been one of the good pickups from under 18 team, has been brilliant left arm spinner. And Sadaf Shams will be on the receiving end. Tossed up, looking for the spin there. Was driven but straight to the fielder. I think right now the rotation of strike will be really important. They haven't really taken any chances. Off the back foot. Will be a chase for the fielder. Umaima picked up 2 quite easily. Well, a good thing about Saima that I've noticed is she's not afraid to toss the ball up. She's giving it air. She's trying to get that whatever turn she can get off this placid track. I think that's the right thing to do as well. They've called the long off fielder into the circle now. More attacking field. Oh, wanted to cut it, but line wasn't there. Good bowling, good change of length from Saima. Yes, 24 wickets from 7 matches in her career so far. It's pretty good.
Tossed up, it was uppish but safe. Well, the reason they're taking the attacking field is that neither Sadaf or Muniba has tried to take on the bowler and go down the wicket or aerial route, so they can afford to just attack. Another dot ball. It's turning out to be a good over by Saima. Yes, it's a much better field set as well now. As we saw earlier, it was a very one-sided field set, putting a lot of pressure on the bowler. No margin of error. It was a bit of short length ball. They're looking for two, but no, turn down. Push the cover fielder back to the boundary, and probably that's where Sadaf was probably looking. End of 13 overs, Dynamites are 55 without loss. Yes, the most important part so far of the Dynamites inning is that they have all their wickets intact. And of course, the more you bat, the more comfortable you become. Here are this is the Dynamites team for you. We've got Alia Riaz, a big responsibility, a big hitter, and has been superb for Pakistan. One of the seniors in the side, Fatma Zahra, another youngster from under 18, Ghulam Fatma, the leg spinner. Got Hamna Bilal. Kainat Hafiz, another prospect, has been playing Pakistan A. They've got some good names out there, but it's important to know when to change the gears for Dynamites. Because with that field and that sort of run rate, they need to put up a good total if they want to win this match, because Blasters have a lot of experience in their lineup. Umaima Sohail will continue. She's a part-time bowler, but I can tell you one thing, she can spin it way long. Tossed up, charge taken, and it will reach the boundary. I was talking about the aggression, and Sadaf has decided to change the gears, utilize that flight, and earn a boundary for herself. It's very good batting by Sadaf. First ball of the over. Took a chance, went over the head, and got a 4. Pressure on the bowler now. New bowler. Straight away, the batsman putting Mayam under pressure. Wanted to just guide it down to the third man. Should be very careful because he does turn it back in. To push the fielder too long on now. If they need singles, they need to open this field up, and that's the only way to do it is to attack. Tossed up again. This time didn't time it well. He's got the cover, the mid-wicket area. Some aggression now. Yes, as I said, once you are set on this track, the longer you bat, the more comfortable you get, and you bat on your terms then. 33 of 39 balls, Muniba, the captain. She's the main wicket right now. She needs to bat through the overs, go deep as much as she can, and then probably with Alia coming in, she can really attack. A bit flatter in the trajectory, straighter one. That's wide. She spun it. That's what I was talking about, but the line wasn't good. Another one. If she can get the line right, it would probably put Muniba under a lot of pressure. And again, that's the over. End of 14 over. Dynamites 61 without loss.
So Mayama has managed to get a bit of spin, as you had mentioned. She can spin it a bit, and she is spinning it a bit. The only thing is, of course, once she gets that confidence, gets that line right, it could prove. There you see, there's a bit of spin. Probably these are the part-timer bowlers you need to be very careful if you want to go after, because they probably are the golden arms. Saima Malik will continue. So far, brilliant in her bowling. White ball. Not a good start this time. Wide ball, just trying to make Sadaf chase the outside ball. Spot on this time. She's a youngster, but she's taking the responsibility from one end. Yes, that is what I'd like to see more from Saima, as she is, of course, left arm leg spin. She should be. Tossed up, but safe. We'll have to see if it will run. No, Fatma Sana is quite quick, but they will pick up 2 runs. I don't think Saima, sorry, would be very upset with that shot. It was aerial. That is exactly what she wants to do. That is why she is flighting the ball, so she could make the batsman play in the air. That's dragged down towards leg stump. Easy single. That's where you need to be very careful as a bowler. Don't just get off the plan. Yes, consistency is the key here. The more you bowl in good areas, the more pressure it will maintain on the batsman, and more opportunities you'll get to get wickets, which are now due, I think. Swept away. Will be just a single. She knows that Muniba can go aerial towards offside, so she's keeping her line within the wickets, which is a good plan against Muniba. Appeal, but it seems like dragging, and it's given out. That's the wicket they were looking for. Finally, one blow for the Dynamites, and none other than Saima Malik. She deserved it thoroughly with a beautiful bowling. Yes, that one didn't turn much. Ball in the stumps, tossed up. Really missed that flick she was trying to make on the onside. Went straight on. Let's see. They're pitched in line. Well, very enthusiastic with that appeal. And why not? Of course, a team needed a wicket, and Saima has got it for the for Blasters. So the Fyams has to walk back, scoring 22. But a good partnership comes to an end, and finally Blasters have strike. Release one. Wicket which Blasters were looking for. Saima has got that breakthrough for them. Kainat Hafiz will now join Muniba Ali. That's her List A career. It's been around for a while, and now in Pakistan team as well. Good line, good length, pushing the batter back.
15 overs gone. Dynamite 66 for 1. Very good bowling by Saima. She's been consistent with that line. She's been round about that middle and off stump. She's put the pressure. She's put the brakes on as well. And got the reward in the previous over. You have to be very careful going on a back foot against a spinner, especially with this kind of pace, because it won't, she's not that fast, probably likes to toss it up, so it won't come onto the bat really good. Yes, I haven't seen both the batsmen, the previous opener that just got out, they were not really keen on using their feet. And I think with the lack of pace, it would be important. Shot driven, brilliant fielding, but single taken. Fatma Sanad shot mid-wicket. That's the kind of fielding you would like to see. Yes, very well fielded. The standards of fielding have gone up definitely. With, of course, the players who have been who have had exposure of the leagues they play outside, when they come back and they are improved players, not only with the batting and bowling, fielding, the fitness. Of course, that has an impact on the new players. Outside off, but no run there. They've got a really tight circle on the offside. Kainata Field likes to take her time, but once she settles in, she can switch on and go big. But right now, Blasters are on the top. Again, outside off stump. Not sure about the line. She's getting some spin. Probably would like to be pitching on off stump, bringing it in. That's a good delivery. Umpires nowadays very strict with the wides and the no balls. So you have to be very, very immaculate with those lines. Anything a bit outside. Played nicely, but for no run. They haven't opened up the field, and for Dynamites, they have to do some work to get that done. What I'd like to see the Dynamite batsmen doing is a bit of maneuvering when you are not getting those boundaries and sixes. Another dot ball. Good line, good length by Umaima. Well, one option could be sweep against an off spinner. You need to have that in your arsenal as a batter. But as you can see on the onside, there are quite a few singles available. And with the off spinner, they'll pick up a single, a thick edge off the mark Aina Tafiz. But that was a brilliant over by Umaima. yes, excellent bowling. She's tossing it up. The variety is there, pushes it at times. She's of course getting the turn. But as a batter, you need to counter-attack the plan of your opposition. You cannot just play along. That's the confirmation for bowling side. Fatma San has been brilliant, unlucky, couldn't pick up a wicket. But Saima Malik, we've talked about youngsters taking up the role. She broke the partnership. And now Umaima playing her role. Another dot ball. At this time, they need to be rotating strike. It's really important. Because for the coming batters, you need to give some space, especially for Alia. If she settles in, she can go really big. You have to provide the platform.
Ah, tight single. But they're safe. Umaima just a tad lazier. That was a quick single, but safe. Yeah, especially when you are starting your innings, as Kainat is now. That was a cheeky single, really. Dangerous as well. And that is what happens when you play a few dot balls. That is the kind of pressure it builds. And these are the mistakes you make at times, which can be costly. Use of feet. That's gone aerial, but will be cut down. Looking for 2 run, but turned down. That's good fielding at the boundary. Yes, very well fielded. Picked up and restricted the batsman to a single. But that was a good shot. That is what I was talking about. When there is no pace in the ball, you have to use those feet not only to hit the boundaries, but to maneuver the ball, to play them in the gaps for singles and doubles. Good bowling, really good bowling. Right areas, just pushing Kainat back into the crease. He has to be careful. But again, we've been talking about some crucial singles. That's what Dynamites need right now. Another dot ball. I'm loving this youngster, taking the responsibility from one end. She's been brilliant. She's put a lot of pressure on Dynamites. Cheeky single, turned down. There was no run there, nowhere in the world. That's the over, 17 down. Dynamite 71 for the loss of 1. Yes, no doubt that Saima has bowled very well. She's flighting the ball, bowling in the right areas. But again, I would like to mention that the batters, they are not really keen on working the ball around and taking those singles and doubles, which is putting that added pressure on them, which is actually not needed at this stage. You know, you don't need to hit boundaries of 4s or 6s. The only thing you have to do is take those singles, and the gaps are available. So I think there should be a strategy shift when you're not getting those boundaries, when the bowling is they're bowling well. So you have to keep that scoreboard ticking. Good fielding. Oh, that seems like a close call, but not out. That was a good fielding again. Liking the body language of blasters. They're onto it. Have a look at that. Yes, very close. A direct hit would have been disastrous for Dynamites, I think. Tossed up. Ah, that's time misfield. Will earn them probably 2 runs or a boundary. It's dragging, but no. The outfield is a bit wet. Comfortable 3 for Muniba. Yes, I think the overnight rain preventing Muniba shot to get to that boundary. A bit slow, the outfield, of course, because it was quite heavy rain yesterday night, or this morning, I think. Some changes in the field. Short mid-wicket, just Sidana was the captain, bringing her into for stopping that single. Oh, that was a brilliant ball. Just playing around with Kainat Hafiz. She likes to go on the back foot. This length and line isn't the one to go, especially if you have a slip. Yes, a bit of bounce. No run there. They've got their plan. But yes, we were talking about the game awareness. If you don't have the arsenal to go against the bowlers for big shots, then you have to rotate the strike.
soft single, drop and run, maneuver with the field. That's what's needed for Dynamites. There's another misfield by Saima. Probably bounced off from her knee. A few changes have been made in the format, or most probably you can say in the rules by which these matches are going to be played. The boundaries have been increased. They can go to maximum 70 yards now. Dragging down the leg will earn a single. That's the end of the over. 18 overs gone. Dynamite 76 for 1. As I was saying, that there have been a few changes in the playing conditions for this year's One Day Cup. The boundaries have increased. Today we are playing on a 65-yard boundary, which is pretty huge. Well, 60 or 65 has been a standard boundary at international cricket for women's as well. So it's only feasible if you prepare for such rules in domestic cricket. You can only then deliver at international level. But I can tell you, these girls can hit big. Probably we'll see later on in this match and later in the tournament as well, some good hitters around the corner. Saima Malik will continue her 5th over. It's brilliant bowling by the youngster. That ball held its line, did not turn or come in to the batsman, went straighter with the arm. She's got the slip in and she's just flirting around that off stump for Muniba because she knows she has the ability to chase balls outside off stump. Swept. Probably a glove. Good single taken. Oh, another direct hit, and it's always some excitement, but it's turned down. Well, one thing these players need to know is how to track the bat. We've seen on a couple of occasions with Kainat Hafiz and probably Muniba. Yeah, she tracked it late. Well, it's good to see Saima bowl really. There's a bit of jump and a bit of energy in her bowling. And the variation, it has been lovely. She flights the ball very well, pushes it at times. Sometimes the ball, she does make it go straighter, which might get that slip into play with the left-hander. Brilliant once again by youngster, fielding on her own bowling. She's not that tall, and because of that, there is more flatter trajectory in her bowling, which it's not in comfortable position for a batter. Oh, it's got an edge, but just falling short of the slip. She's on the money. Saima Malik, a youngster from Quetta, showing her skills. Yeah, I think that slip is too deep. But yes, definitely, she's bowling according to that plan she had from the very start, trying to make the batter's drive. Down to ground, but no run once again. Brilliant over comes to an end by Saima yet again. 19 overs down, Dynamite 77 for the loss of 1.
again you see too many dot balls, and dot balls played needlessly. I mean, these balls which are being driven straight to the fielders, they can be played with soft hands uh, to take those singles in the cover areas, or they could be maneuvered to that mid-wicket, vacant mid-wicket area. But again, that mindset has to be there. The plan has to be there, that how many runs do they really need to score in an over, to put the pressure not only on the bowlers, on the fielders as well, and and keep them in line with some sort of a with some sort of the total which they had in mind when they started the innings. That's the story for Dynamite so far. Muniba still out there with Kainat Hafiz. Just joined her. They've got a huge task. They have to put up a good total to defend it and give something to their bowlers. Maima will continue. Oh, it's an appeal. Sidra Nawaz seems confident, but it's given a wide. And probably Maima is saying, why are you appealing? But we know that wicketkeepers love to go up. Through the offside. Got a sweeper cover there. Maima also needs to give it a bit more air. She's turning the ball. Another dot ball, Kainat Hafiz has faced 18 balls, scored just 3 runs. It's important for her to play her role. You see, that is what I meant. That was a single. And that is the opportunities. Those are the opportunities where you put pressure on the field and on the bowler. If you are able to get those singles, suddenly the mindset of the bowler also changes, that even though she has bowled a good ball, even then runs are being scored off her bowling. So that's pressure, added pressure on the bowler. That's an art of developing your innings. If you know that your field, probably your normal areas of singles are dossed down. Launched her, but will earn a single. Then you need to try few things, probably sweep it, use the crease vertically or horizontally. Try to open the singles and then go for it. Kainat Hafiz is a middle order player. She should have that strike rotating skill in her arsenal. Yes, what this does otherwise is it puts pressure on the lower order batsman, where end of the 20th over, it's 80 for 1. So if you're not rotating the strike and the scoreboard is not ticking, then you're not taking the game forward. You see, the overs are going, but the runs are not coming, and what that does is that it puts pressure on the incoming batsman to catch up with the strike rate or the run rate which the team had planned to get earlier when they started the innings. So to avoid putting that pressure on the coming batsman, it's important to just keep the scoreboard ticking. Cut away, but straight to the fielder. Now we'll be joined by Savera and Danish in the com box.
शुक्रिया मरीना और अहमद। सो ओवरऑल कायनात जिन्होंने अब तक 4 रन बनाए हैं, 23 गेंदों का सामना किया है। मुनीबा मौजूद हैं ज़रूर, जिन्होंने अब तक बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया है। जो ओवरकास्ट कंडीशन थी सवेरा, रात भर की बारिश थी और उसके बाद टॉस जीत के बैटिंग करना, और अभी तक का जो फैसला है वो सही लगता है। यूजुअली ओवरकास्ट कंडीशन में टॉस जीत के पहले बैटिंग करना मेरे हिसाब से सही फैसला तो नहीं हो सकता, बिकॉज ओवरकास्ट कंडीशन में आप टॉस जीतें, आप बॉलिंग करें, आपके फास्ट बॉलर्स को उसका फायदा मिलता है। साइमा मलिक इस वक्त एक्शन में, ये वही बॉलर जिन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाया और डायनामाइट्स की पहली विकेट हासिल की। ओवरऑल जिस तरह से टॉस जीत के मैं बात कर रहा था, पहले उन्होंने बैटिंग किया, तो रन्स इन्होंने यहाँ पर ज़रूर ऑलमोस्ट 4 की औसत से बैटिंग की है, लेकिन विकेट्स अपनी नहीं गिरने दी। अमूमन शायद ये फैसला इनके खिलाफ भी जा सकता था। बहुत अच्छी ट्राई थी कायनात, थोड़ा सा टाइम लेती हैं, थोड़ा सा नहीं, अभी तो खैर काफ़ी टाइम उन्होंने ले लिया, बट कायनात वंस सेटल हो जाती हैं उसके बाद आपको कायनात की तरफ से रन्स आते हुए दिखते हैं। और जहां आपने बात की कि एक ही विकेट का नुकसान हुआ अभी तक डायनामाइट का, साइमा मलिक का ये करियर आपने देखा सामने, एक ही विकेट का नुकसान हुआ है। सो दो माइंडसेट होते हैं दानिश, दो माइंडसेट से आती हैं टीम्स। या तो एक टीम आती है कि जी कंप्लीट हिट आउट करेंगे, आके असॉल्ट करेंगे एक तरीके से दूसरी टीम के अगेंस्ट, दूसरी तरफ ये माइंडसेट है। बाहर निकल के मारने की कोशिश की मुनीबा ने, पार्शियली सक्सेसफुल जरूर हुई। इक्कीस ओवर के अख्ताम पे 82 फॉर 1 डायनामाइट्स। और जहां हम मौसम की बात करते हैं दानिश, तो ये देखें परिंदे भी मौसम एंजॉय करते हुए, इस वक्त इस कबूतर को देख के जरूर लग रहा है कि इट्स वेरी विंडी, दो के अपेरेंटली इट लुक्स विंडी, मगर अजीब सी एक ह्यूमिडिटी भी है। जी हाँ, ये जो हवा आप देख रहे हैं चल रही है, कभी कभी अचानक से बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हमने देखा कि ख़ास तौर पे जब फातिमा सना बॉलिंग कर रही थी, सो पसीने बड़ा शरबोर नज़र आई थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ देख रहे हैं कि हवा चलती हुई दिखाई दी दरख्तों की, से हमने इस बात का अंदाज़ा लगाया। तो मुनीबा 43 किए हैं, कायनात मौजूद हैं 5 पे, और साइमा जो इससे पहले बॉलिंग कर रही थी 6 ओवर में 17 रन दिए थे और वाहिद विकेट उन्होंने हासिल की थी। रूप शाह एक दफा फिर से एक्शन में आते हुए, बैट बॉल थी सवेरा ये, जिसका फ़ायदा ज़रूर उठाने की कोशिश की थी और 2 रन यहाँ पर हासिल कर लिए। डाउन द लेग साइड थी और उसके बाद रन यहाँ पर मिले। जबकि दानिश जब हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बात करते हैं, लेग स्पिनर्स का एक बड़ा खास रोल होता है। रूप जिस तरह बॉलिंग करती हैं, अच्छी बॉलर हैं, बट अभी जिस तरह इन्होंने पहली बॉल की वो इतनी अच्छी नहीं थी, इनकी पार पे नहीं थी बेसिकली। सो ओवरऑल जिस तरह से अभी हम देख रहे थे सवेरा के फील्डिंग में एक स्पार्क नज़र आता है, ख़ासतौर पे विकेटों के पीछे हम ज़रूर देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक थ्रिल है, लेकिन अमूमन जिस तरह से भी थ्रो हुई थी हमने देखा एक पावरफुल नहीं थी। उस पर उन्होंने ज़रूर इनसे कहा भी कि थोड़ा सा जान मार के थ्रो करें, क्या हो गया इस अच्छे मौसम में इस तरह की थ्रो। बिल्कुल, और इस वक्त दिख रहा है कि फील्ड सेट करते हुए दिख रही हैं। उरूब काफ़ी पर्टिकुलर हैं और
फील्ड सेट करवा रही हैं, साथ हेल्प भी कर रही हैं। ऑफ साइड को एक दफ़ा फिर पैक कर लिया है। आप देखें तो गली साथ साथ पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। एक्स्ट्रा कवर को और थोड़ा सा शॉर्ट किया है, तो ऑफ साइड को पैक करते हुए एक दफ़ा फिर प्रेशर डाला है। कायनात हफीज ने ट्राई किया बट आउट, और निदा डार ने कैच किया। कायनात हफीज वाज ट्राइंग मगर थोड़ा सा अनईजी लग रही थी जब से शुरुआत हुई थी, और यहाँ पे उरूप शाह कामयाब हुई दूसरी यहाँ पे विकेट गिराने में डायनामाइट्स की। सो डायनामाइट्स इज 85 फॉर 2। जी हाँ, ये जो बॉल थी ये बैकफुट पे जाकर इन्होंने कोशिश ज़रूर की थी कि जो मिडॉन की फील्डर थी उनको क्लियर कर देती, लेकिन निदा डार के सीधा हाथों में ये कैच गया। और शाहिद खान आफरीदी का स्टाइल जो हमें नज़र आया। बिल्कुल निदा बूम बूम निदा हैं, मगर जिस तरह अभी मैं कायनात को देख रही हूँ, दानिश आपको क्या लगा कि पावर नहीं लगाई हिट करते हुए, या इज इट दैट विंड जिसने थोड़ा सा जो है शेकी किया और शॉट जो है वो कंप्लीट फुलफिल नहीं हो सका? एग्जैक्टली, आई थिंक बहुत ज़्यादा हवा तो ग्राउंड में नज़र नहीं आ रही है, और हम देखते हैं कि ज़रूर हल्की फुल्की मौजूद है, लेकिन आई थिंक कि शायद उसको मिस हिट कर गई। जो प्रॉपर टाइमिंग्स थी वो नहीं आ सकी, और यही वजह थी कि बैकफुट पे ज़रूर गई थी, लेकिन जो एक शायद बॉडी का वेट जो ट्रांसफ़र उन्होंने करना चाहा था बॉल पे वो प्रॉपर हो नहीं पाया। लेकिन बहरहाल एक अच्छी विकेट यहाँ पर हासिल कर ली है रूब ने, आते ही एक और कामयाबी दिलवा दी डायनामाइट्स को। और विकेट लेते ही ना, अभी आप अगर ये देख रहे हैं शॉट्स, ये बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा उरूप की तरफ से, ललचाया, ट्रैप किया कायनात को, और कायनात यहाँ पे अपनी विकेट गवा बैठे। क्योंकि अगर आप रन रेट देखती हैं सवेरा, वो इतना ज़्यादा हम देख रहे हैं कि तेज़ी से हमें मूव करते हुए नज़र नहीं आ रहा है, और अगर यहाँ पर जो बैटिंग है अगर इसमें मज़ीद तेज़ी से स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होता तो फिर मे बी कुछ मुश्किलात का शिकार नज़र आ सकती हैं। लेकिन इस वक्त जो बैटर मौजूद हैं यकीनन लंबी हिट लगाने के लिए खासा रखती हैं। आने वाली नई बैटर आलिया रियाज काफ़ी मशहूर हैं, ये बड़े हिट लगाने के लिए काफ़ी लंबे शॉट्स मारती हैं। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बैटर। जी हाँ, मुझे याद है कि पिंडी में जिस तरह से आप बात कर रही हैं, नेशनल T20 में काफ़ी अच्छे छक्के इन्होंने लगाए थे, और काफ़ी बड़े छक्के भी लगाए थे। एग्जैक्टली कैप्टन कर रही थी साइड को। आलिया ने कंप्लीट टाइम लिया ये शॉट खेलने से पहले, पूरा टाइम लेकर और ये शॉट खेला। बेटा थोड़ा आगे आओ, बेटा थोड़ा आगे आओ। अच्छे ज़्यादा जोर नहीं लगाओ, थोड़ा आगे बॉल करो। ऑन साइड पे ज़रूर सिंगल्स मौजूद हैं यहाँ पे, क्योंकि फील्डर जो हैं दोनों बिल्कुल बाउंड्री पर मौजूद हैं, मिड विकेट भी और स्क्वायर लेग भी। सो सिंगल्स यहाँ पर ज़रूर दावत दे रहे हैं, लेकिन ऑफ साइड पे जिस तरह से बॉलिंग हो रही है वहाँ पे फील्डिंग बिल्कुल पैक है, वहाँ बड़ा मुश्किल होगा सिंगल लेना। इस वक्त रूप शाह बिल्कुल मौका नहीं दे रही हैं आलिया को हाथ खोलने के लिए, बिकॉज आलिया एक वो बैटर हैं जो कि आती हैं और आती चार्ज करना शुरू करती हैं, मगर इस वक्त आलिया को मौका नहीं मिल रहा। आई थिंक सवेरे डायनामाइट्स में इस वक्त ये बड़ा इंपॉर्टेंट बैटिंग का पेयर है, क्योंकि कायनात भी आउट होने के बाद वापस जा चुकी हैं, मुनीबा अपनी हाफ सेंचुरी की तरफ गामजन है, आलिया लंबी हिट लगाने में शोहरत रखती हैं। तो एक आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट पेयर है इस वक्त जो कि मौजूद है डायनामाइट्स के लिए, और अगर ये कोलैप्स होता है तो आगे जाके, क्योंकि बैटिंग में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डेप्थ भी मौजूद नहीं है, सो मुश्किल हो सकती है इनके लिए। बिल्कुल जी, 22 ओवर्स का अख्ताम हो चुका है, 85 फॉर 2 है डायनामाइट्स इस वक्त, और 23वें ओवर की शुरुआत। साइमा मलिक ने खासा मुतासर किया है अपनी बॉलिंग से, ख़ास तौर पर जिस तरह से इन्होंने अपनी लाइन और लाइन को मेंटेन किया है, बड़े दिल के साथ बॉलिंग की है, फ्लाइट के साथ इन्होंने गेंदें की हैं। बेहतरीन बॉलिंग साइमा की तरफ से, और सबसे मजे का इस वक्त कंट्रास्ट दानिश ये है कि अगर मैं दोनों बैटर्स की बात करती हूँ, दो एक्सपीरियंस बैटर्स जो काफ़ी अरसे से टीम पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं वो हैं, और दूसरी तरफ दो यंगस्टर्स हैं, एक तरफ साइमा मलिक, एक तरफ उरूब। तो ये एक बड़ा मजे का कंट्रास्ट। स्वीप करने की कोशिश करी थी मुनीबा बट सक्सेसफुल नहीं हुई,
और करीब हैं अपनी हाफ सेंचुरी के. जस्ट 4 more runs to go. जी, और यही वजह है कि जो सीनियर्स और जूनियर्स का एक बड़ा हसीन इम्तिजाज है ये पाकिस्तान का. इसमें सामा ने अभी तक अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है. सीनियर्स को मौका नहीं दिया कि इस पर शॉट खेलें इतनी आसानी के साथ. मुनीबा जो पिछली बॉल पे करना चाह रही थी, कंपैरेटिवली थोड़ी सी सक्सेसफुल जरूर हुई. कुछ रन्स आए और ये रन्स चलते रहने चाहिए. बोर्ड पे रन्स चलते रहने चाहिए. सिंगल डबल्स में डायनामाइट्स जो है वो दिख रहा है कि इतने ज्यादा सिंगल डबल्स नहीं है. डायनामाइट्स को फोकस करना पड़ेगा, सिंगल डबल्स निकालने पड़ेंगे. जी, इससे पहले जो ऑन साइड पे शॉट खेला ये जानते हुए कि ऑन साइड पे सिंगल और डबल ज़रूर मौजूद हैं क्योंकि फील्डर्स बिल्कुल बाउंड्री और मौजूद हैं. यही वजह है कि मिडिल स्टंप पर गेंद हो या फिर डाउन द लेग साइड उसको ऑन साइड पे खेलते हैं ताकि रन्स मिलते हैं. ऑफ साइड पे थोड़ा प्रॉब्लम है, ये फील्डिंग बिल्कुल पैक नज़र आती है. तारिश, अभी जैसे डॉट बॉल्स की बात हो रही थी, डॉट बॉल्स के रेशो की बात करें, क्या ये इस वक्त बैटिंग का फ्लॉ है जो हमें इतने डॉट बॉल्स दिख रहे हैं या फिर बेहतरीन फील्डिंग है? 23 ओवर्स का अख्ताम हो चुका है. डायनामाइट्स इज 87 for 2 राइट नाउ. वेल आई गेस कि यहाँ पे अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया है और क्योंकि इब्तदाई लम्हात में कंडीशंस ऐसी शायद थी नहीं कि जिस पे आसानी के साथ यहाँ पे शॉट्स खेले जा सकते. यही वजह है कि बैटर्स ने अपना पूरा टाइम लिया और मुनीबा ने भी 48 रन स्कोर कर लिए हैं. तो आई थिंक कि बॉलिंग को भी यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी जिस तरह से बॉलिंग की है. और इस वक्त हमारे इन कैमरामैन को भी दाद देनी पड़ेगी जिस तरह इन्होंने इस चिड़िया को फॉलो किया है. हैट्स ऑफ टू हिम. सो मुनीबा अली स्टार्टिंग स्ट्रॉन्ग, 48 रन 61 बॉल्स पे. 2 रन सिर्फ दूर हैं अपनी हाफ सेंचुरी से. सदफ शम्स 22 रन बनाए थे, आउट हो गई. 47 बॉल्स उन्होंने फेस की थी. कायनात हफीज ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं डाल सकी. जी हाँ, और ओवरऑल 96 डॉट बॉल्स अब तक हो चुकी हैं इस इनिंग्स में. इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंगल्स और डबल्स जो स्ट्राइक रोटेट करने की हम बात कर रहे थे वो ज़्यादा दिखी नहीं. वैसे जिस चिड़िया को फोकस किया था पता नहीं कुछ बता कर गई है, बताने वाली थी या नहीं थी, या सिर्फ दिखाने वाली चिड़िया थी. नहीं, ये वो खामोश चिड़िया थी. आजकल चिड़िया की जरूरत ही नहीं है, खबरें खुद ही इतनी जोश में है. अच्छा सिंगल है, बहुत अच्छा सिंगल यहाँ पे हासिल किया. ये देखते हुए कि फील्डर थोड़ा सा पीछे थे और बैकअप मौजूद नहीं है, दूसरा रन भी यहाँ पर हासिल होगा और हासिल कर लिया. आई थिंक ये प्रेशर चाहिए कि आप देख रहे हैं कि सिंगल्स और डबल्स मौजूद हैं, उसको आप हासिल करें और सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट करें, और यही किया आलिया ने. एग्जैक्टली यही करना चाहिए डायनामाइट्स को. यहाँ फायदा उठाएं, क्विक सिंगल्स लें, हाफ चांसेस को फुल चांसेस में कन्वर्ट करें. जहां देखा कि ओवर थ्रो का फिर एक रन मिल सकता है, रन लेने की कोशिश की और सक्सेसफुल हुई. और ये देख लें उस सिंगल के बाद जो डबल कन्वर्ट किया था तो बैट बॉल थी, तेज गेंद कर दी डाउन द लेग साइड की, जिसकी वजह से यहाँ पर चौका जो है वो मिल गया. और यही वजह है कि इस तरह से जो बॉलर है उसको आप अंडर प्रेशर ला सकते हैं, और बिल्कुल आलिया ने हिकमत अमली अपनाई. ब्यूटिफुली कैलकुलेटेड शॉट बाय आलिया. और थोड़ा सा अगर आप प्रेशर ऑपोजिशन पे डालते हैं सो लाइन लेंथ सब आपको हिलता हुआ दिखता है. जी हाँ सवेरा, जब आप सिंगल्स और डबल्स हासिल करेंगे तो यकीनी तौर पे बॉलर के ऊपर भी प्रेशर जाता है, और यही वजह है कि फ़ौरन ही हमने अरूप को भी देखा था कि जिस तरह से इन्होंने एक बैट बॉल की और उस पर 4 रन हासिल कर लिया आलिया ने. वाइड उरूप की तरफ से वाकई बहुत ही भरपूर किस्म की जो है वो जो प्रेशर डालने के बाद जिस तरह हम लाइन लेंथ की बात करते हैं. दो के उरूप बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही हैं. अभी जितने अभी पास में ओवर्स किए उरूप इज बॉलिंग वेल. वाओ माय गुडनेस, एक फ्लाइट मिला और उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और कवर्स पे बड़ी खूबसूरत ड्राइव करके 4 रन हासिल कर लिए. बिटवीन द फील्डर्स, बिटवीन द गैप, आलिया ने गैप ढूंढा और चौका. घुटनों के बल बैठते हुए शानदार शॉट यहाँ पर,
और 4 कीमती रन मिल गए हैं, तो इस ओवर में 2 बाउंड्रीज अब तक आ चुकी हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर ऑफ द मैच, और जिस तरह उरूक की बॉलिंग में भी वो बात एकदम से ख़त्म हो गई है, बिकॉज आलिया वैसे ही मौका नहीं छोड़ती हैं। अगर आलिया को कोई अच्छी बॉल मिलती है तो वो पूरे तरीके से कोशिश करती हैं कि उसका फ़ायदा उठा सके। बुरी बॉल का भरपूर फ़ायदा। 24 ओवर्स के इख्तिताम पर 99 फॉर 2 डायनामाइट्स। सो आई गेस सवेरा यहाँ पे जो रन्स बनाने की रफ्तार है उसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि आलिया जिस तरह से आई हैं, और आलिया ने कोई आते ही हमने देखा कि मारधाड़ नहीं की, बल्कि एक प्रॉपर जो शॉट्स हैं वो खेले हैं। डाउन द लेग साइड की जो गेंद थी उसको चौके के लिए पहले हमने देखा बाउंड्री के बाहर पहुंचाया, फिर ड्राइव किया कवर्स पे। सो आई थिंक इस तरह के शॉट्स की ज़रूरत है, और आते ही प्रेशर जो है उन्होंने एक बढ़ा दिया है ओपोनेंट के ऊपर। बिल्कुल, आप ये देखें कि इस वक्त सिर्फ आलिया के ही बॉक्स में आपको रन्स दिख रहे हैं। मुनीबा 48 पे थी जिस वक्त आलिया आई थी, और अभी भी मुनीबा वहीं 48 पे हैं। सो आलिया ने सारी जिम्मेदारी उठाई हुई है, और मौका नहीं मिल रहा मुनीबा को कि अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर सकें। साइमा मलिक अगेन इन एक्शन। वाओ, एक दफ़ा फिर वही चीज़ जो सिंगल की हम बात कर रहे थे, प्रेशर बढ़ाया है ये देखते हुए कि ऑफ साइड जो है पैक है, लेकिन फिर भी वहाँ पे रन जो है वो लेना है, और यकीनी तौर पे इन सिंगल से प्रेशर आता है। बिल्कुल, क्विक सिंगल्स बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी मैच के लिए। बोर्ड चलाते हुए जिस तरह हम डॉट बॉल्स की बात कर रहे हैं, ये डॉट बॉल्स बैटिंग साइड पे खुद प्रेशर डालता है। सो आपके ऊपर है, बैटर्स के ऊपर है कि किस तरह वो इस प्रेशर से बाहर निकलें और डॉट बॉल्स को सिंगल्स में कन्वर्ट करें। Hundred up for Dynamites. वेरी गुड शॉट बाय मुनीबा, और यहाँ पे बाउंड्री मिलेगी और हाफ सेंचुरी मुनीबा की यहाँ मुकम्मल होती है। चौके के साथ स्टाइल में मुनीबा ने जो है वो अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल की। सो 52 फॉर मुनीबा। वेल, इससे अच्छा चौके के साथ जश्न नहीं हो सकता। अपनी शानदार जो हाफ सेंचुरी है इन्होंने वो मुकम्मल की है इस चौके के साथ। हल्का सा शफल किया था आगे आते हुए, बाउंड्री यहाँ पर लगा दी और 4 रन्स हासिल कर लिए हैं। सो अब पिछले ओवर से जब से आलिया आई हैं बैटिंग करने के लिए, जब से हम देख रहे हैं कि जो बाउंड्रीज हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और मुनीबा अली इस वक्त नॉट आउट है। 52 रन्स हैं उनके ऑल टुगेदर। सो 52 रन्स नॉट आउट मुनीबा अली। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, लेकिन इस बार आसानी के साथ एक सिंगल जो है वो मिल गया है। तो ये फ़र्क पड़ता है सवेरा, एक
आपका ऐसा बैटर जिसका माइंड बिल्कुल चेंज हो, जो ये जानता हो कि मुझे शॉट्स लगाने हैं, मुझे रन्स लेने हैं, उसके बाद एकदम से आप देखते हैं कि जो कलर है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज का एकदम चेंज होता है, और यही हमने डायनामाइट्स में अभी तक देखा है पिछले ओवर से खास तौर पे। बिल्कुल बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं आलिया की बात करूं तो आलिया आपको रेयरली डिफेंसिव होती हुई खेलती हुई दिखती हैं। आलिया का जो नेचुरल गेम है दैट इज बीइंग वेरी अटैकिंग, और जिस तरह ही आलिया क्रीज पे आई हैं आपने देखा कि डायनामाइट्स का रंग बदल गया, डायनामाइट्स अलग तरीके से बैटिंग करती हुई दिख रही है अब आपको। साइमा हो, उरूब हो, इस वक्त कोई भी अब ट्रबल नहीं कर पा रही हैं इन दोनों बैटर्स को। यहाँ 25 ओवर्स का जो है वो इख्तिताम हो गया है, 106 पे 2 विकेटों का नुकसान डायनामाइट्स। तो ये है डायनामाइट्स के अभी तक जो भी हालो अहवाल के अभी तक क्या क्या किया डायनामाइट्स ने। मुनीबा अली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टन इनिंग्स खेलते हुए 53 रन एंड 64 बॉल्स पे। सदफ 22 रन बना सकी, कायनात हफीज बिल्कुल इंप्रेस नहीं कर सकी, 5 रन बनाए 28 बॉलों पे, और अभी आलिया रियाज अपनी इनिंग खेलते हुए जारी। एक बार फिर प्रेशर डाला है ओपोनेंट पे, एक आसान सिंगल ऐसा लगता है कि इनके लिए अब हो चुके हैं आलिया के लिए। अमूमन जो ये सिंगल्स हम देख रहे थे मुश्किल थे ओपनिंग पेयर के लिए, अब आलिया ने बहुत आसान बना दिए, और ये जूनियर्स जो हैं उनको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से आपको सिंगल्स लेने हैं और प्रेशर बढ़ाना है। वरना अमूमन हमने देखा था इब्तदाई लम्हात में जब बैटिंग हो रही थी ये सिंगल्स नहीं हासिल हो रहे थे, और यही वजह है कि जो हमें बताया गया है कि ऑलमोस्ट 100 के करीब डॉट बॉल्स जो हैं वो खेली गई हैं। और दूसरी तरफ जहां आपने जूनियर्स की बात की तो बोलर्स को भी ये समझने की जरूरत है कि जब ये सिंगल डबल्स ऑपोजिशन की तरफ से बन रहे हैं तो आपने अंडर प्रेशर नहीं होना। एक बहुत बैड बॉल थी लेकिन इसका फायदा नहीं उठाया मुनीबा ने बिल्कुल भी, और अमूमन ऐसे बॉल पे हम देखते हैं कि बाउंड्री के बाहर ही ये बॉल्स जाती हैं, लेकिन लकी रही अरूब के उनके ऊपर पेनल्टी नहीं हुई इस बॉल के ऊपर खास रन्स की। एग्जैक्टली मुझे लगता है मुनीबा खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये बॉल इस तरह की होगी। लगा ऐसे जैसे रूप के हाथ से छूट गई बॉल, जिस तरह की बॉल इस वक्त रूप ने यहाँ पे की है। सो यही मैं कह रही हूँ, प्रेशर बढ़ रहा है बॉलर्स के ऊपर, और प्रेशर की वजह से ये परफॉर्मेंस दिख रही है। थोड़ा सा लो रहा था और अपनी बॉडी को नीचे करते हुए यहाँ पर ड्राइव किया था। अच्छा कमबैक रूप की, जिस तरह मैं बात कर रही हूँ उस बॉल के बाद ये बॉल करना, गुड कमबैक बाय हर। अगर आपने विकेटों के पीछे से आवाज सुनी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उरूप शाह वापस अपनी फॉर्म में वापस आते हुए, बिकॉज इससे पहले जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो गई थी जब आलिया और मुनीबा मुसलसल सिंगल्स ले रही थी। उरूब अब वापस उसी तरह बैटिंग बॉलिंग करना शुरू कर रही है जिस तरह पिछले ओवर्स में दिखी। एक रन यहाँ पे लिया है, दूसरा लेना चाहते हैं लेकिन मना किया इस बार आलिया ने, देखते हुए कि फील्डर बहुत जल्दी जो है गेंद पर आई हैं और लिहाजा रन बनाने का मौका नहीं मिला बिल्कुल। और अरूब का आई थिंक कि बहुत जल्दी जो है वो भूलना पड़ेगा जो भी एक ओवर में इनके 11 रन बने थे, क्योंकि अभी भी इनके कोटे के 6 ओवर्स जो हैं बाकी रह गए हैं और वो इनको यहाँ पर करने हैं, क्योंकि अदरवाइज बॉलिंग में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। सो 26 ओवर्स अब मुकम्मल हो चुके हैं, 110, 2 आउट। तो जैसे प्लेइंग कंडीशंस में चेंज हुआ है, 45 ओवर्स पर साइड है, तो एक बॉलर का जो कोटा है वो भी कम हुआ है और 9 ओवर्स की इजाजत है एक बॉलर को बॉल करने की। तो इसका मतलब साइमा का ये आखिरी ओवर है जो कि आप करने के लिए आई हैं यूनिवर्सिटी रोड एंड से।
साइमा ने बड़ा मुतासिर किया है। इवन इनके ऊपर अगर रन्स बन भी गए हैं तब भी इन्होंने अपने हवासों पर काबू रखा है और अपनी लाइन और लेंथ को एक तरह से भरपूर मेंटेन किया इब्तिदाई लम्हात से। काफ़ी इम्प्रेसिव रही हैं साइमा, मगर मुनीबा क्योंकि एक तरीके से एक्सपीरियंस की मार मार सकती हैं, सो मुनीबा ने कैपिटलाइज किया। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी इंप्रेसिव रही और अगर आप साइमा को देखें कि इन्होंने फ्लाइट के साथ भरपूर गेंदें करती रही हैं। ऐसा नहीं हुआ कि अगर रन्स बने हैं तो इन्होंने तेज़ तेज़ गेंदें करना शुरू कर दी हैं और ये एक अच्छे बॉलर की पहचान होती है, कितने बड़े दिल के साथ वो बॉलिंग करे। वेरी गुड बॉलिंग बाय साइमा, गुड डिस्प्ले ऑफ बॉलिंग। और जिस तरह हम यंगस्टर्स की अभी बात कर रहे हैं तो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कोई बात नहीं रन्स बन रहे हों, कोई बात नहीं सिंगल डबल्स बन रहे हों, आपने अपना काम करते नहीं छोड़ना। मुश्किल हो रही है मुनीबा को इनके ऊपर चार्ज करने से पहले भी इन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन हिट नहीं कर सकी। इस बार भी स्वीप करना चाह रही थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बहुत ज़्यादा बाहर ये गेंद थी और उसको स्वीप करना चाह रही थी लेकिन कामयाब नहीं हुई। आलिया ने फिर इनको समझाया कि जहाँ की बॉल है आप वहीं खेलें, तो लेट्स सी कि उनकी बात समझ में आई नहीं आई। और लगता है ऐसा समझने की कोशिश ज़रूर की थी, मगर अपटाइट फील्डिंग की वजह से भी सिंगल्स लेने में यहाँ पे मसला हो रहा है। और अब फिर से हमें दानिश यहाँ पे डॉट बॉल्स होती हुई दिख रही हैं, बट एक रन यहाँ पे ज़रूर लिया। आलिया को आप देखें तो आलिया बहुत अनरेस्ट होता है उनको जब वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ी होती हैं। ज़्यादा पसंद नहीं आलिया को नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े होना, फ़ौरन चाहती हैं वो कि जाएं और जाके फेस करें बॉलर को। So this would be wide, called by umpire. आखिरी बॉल इस ओवर की साइमा की तरफ से और आखिरी बॉल साइमा के कोटे को। कट किया था लेकिन सीधा फील्डर के पास रन बनाने का यहाँ पे मौका नहीं मिला। तो 27 ओवर्स मुकम्मल, 114 पे 2। बिल्कुल जी, और यहाँ कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली, मरीना और अहमर ज्वाइन इन करेंगे। और साइमा की एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, एक विकेट हासिल करके 30 रन्स दिए हैं अपने कंप्लीट कोटा में। Sidra Nawaz marshalling her troops from behind the stumps. Ruba will continue. Ever since the arrival of Alia, things have changed a bit. They have looked a bit different, playing more positive cricket. Oh, misfield. Unusual for Nidadar. Usually a good fielder. A couple of runs, resulting that misfield. Big appeal for LBW. Enthusiastic, I think. Bowling down the leg side. Marina, as we were talking or discussing before, ever since Alia has come into bat, things have changed a bit. And down the track, hit it straight over the bowler's head for a single. And also,
After Muniba has reached that 50, she's a bit more aggressive, bit more positive now, using her feet more. Short, pulled away by Alia. That was lucky. Usually Alia is very harsh on loose deliveries. Yeah, she's the sort of character that she will never ever leave these sort of deliveries out. She will punish you for it. Again, the length was a bit on the shorter side, pulled by Muniba, but straight to the fielder. So at the end of the 28th over, it's 119 for 2. We saw some intention from Muniba early on as well, but the problem was the other end. There were so many dot balls and there was no intention, especially if I talk about Kainat Hafiz. She was totally blocked down. So all pressure came on to Muniba. And now with Alia, she's an attacking player. She likes to go after the bowlers. She will never just block down. So this partnership is really important, and that's probably the last recognized pair, batting pair. So they know the importance of this partnership. And they know that they have to press on the gas to put a good total. Nida Dar coming back into the attack. She bowled very well early on, 4 overs for 8 runs. Of course, with all that experience, she knows how to cut the flow of runs, and that is exactly what she did early on. Flighting it. Excellent bowling, flighted, turned, down the wicket. Muniba missed it. That's the end of Muniba for a well played 62 of 79 balls. Very well bowled, Nida Dar. That is inviting her to play that shot, missed it, and back she goes. It was a matter of time for Nida to strike, and Muniba had to go because of the situation she was in. But brilliant bowling. Kept in the stump, just enough spin away from her. Missed it completely, and a good glove work by Sidra Nawaz. She's yes, well, these are, again, as we discussed, these are the little things you have to learn. Muniba, of course, has international experience, but still it is always, there are things to learn, even though she has scored a very well played 62 actually. But yes, this was the time when she needed to continue for her team to take them to a good total, and especially when Alia Riaz was playing with her. She didn't need to play that shot. Her role should have been to take the singles and doubles and give more strike to Alia, who is of course well known for her big shots. Yeah, Muniba is more sort of very strong towards offsides. Wanted to go down the ground, probably not a good idea because the ball was spinning. Had she gone towards the offside, would have been a good connection, but well, that was brilliant bowling by Nida Dar. Inshira now joining Alia Riaz. She's also one of the youngsters. Good prospect in batting. Yes, I think it's also now the more responsibility of Alia to guide Inshra. Oh, a bit of turn. And of course, when new batter, it's always difficult to
handle this sort of turn, or if there is swing. It's always difficult early on. Once again, a bit of turn. Nida mixing it up beautifully. The previous one turned quite a bit. This one just slight bit straighter. Probably Inshira playing for the turn, but missed it. It's up in the air. Yes, it's gone. Inexperience showing with the senior partner Alia still on the wicket. She went for that drive, mistimed it completely. The ball went straight up in the air. Good catch at mid-on. So that's the end of Inshira, going without troubling the scorers. In no form of playing that shot. It wasn't really required. All she had to do was to survive this over and let Alia take the charge. But yes, inexperience. Inshira will have to go back to the dugout. And now Dynamites are in all sort of trouble. Well, that is exactly what we were talking about, Marina. When you put pressure on yourself by not taking singles, not availing the opportunities, not dispatching the loose balls, this is what happens. All of a sudden, few wickets go down and then you're under pressure. Soha now coming into the middle. It will be a huge task for her. She can bat, but mainly she's a wicket keeper. They need a partnership right now, and Soha has a huge responsibility to just create that sort of partnership with Alia Riaz, because she is the key. Well, Soha Fatma, 11 matches, 56 runs, 26 is her highest. Aruba continues, and immediately she gets that outside edge with that flight and a bit of turn. Well bowled, that's good bowling. Well, the Blasters now making quite a bit of noise. They know they have the opportunity to put more pressure. And restrict Dynamites to a low total now. They have that opportunity, another wicket or two, and it will be very difficult for Dynamites to come back from there then. She's the important one on the screen, Alia Riaz. All eyes and probably pressure on her. Oh, what a beautiful shot that is. Using her feet, getting to the ball. It straight over the bowler's head, down the ground, 4 more. Lovely shot. That's Alia Riaz for you. If it's in her zone, she will not spare. Good use of feet, just enough elevation to beat the fielders. It was a good boundary to pick up. Wickets or no wickets, Alia Riaz is not taking any pressure. She'll be playing a shot. Well, that was, I must say that was, again, Aruba was lucky there. That Alia Riaz did not punish that bad ball. Very short and down the leg side. Yeah, that was a half trekker. Lucky for Aruba, she got away with it. She's been struggling. She's been around for Pakistan team for quite a while now, but the sort of bowling you expect from her, she's unable to deliver. So after 30 overs, it's 125 for 4. The thing we were talking earlier, that if you take charge against the bowlers, they will definitely make mistakes, and we've seen in this over as well that Aruba was hit down the ground and then her length changed suddenly. And this is the story so far for Dynamites. Munib Ali playing a captain's inning, but probably would be disappointed at the time she got out. Sadaf Shams, Kainat Hafiz just
a little bit contribution, but Alia Riaz still out in the middle. All hopes for Dynamites is still there. Well, Nidar Dar is going to continue after that successful last over. Couple of wickets for her in that. Well, that should be a good contest. Contest between two most probably the experienced players. Well bowled and equally well played, I think. Yeah, That they're similar characters, Alia and Nidar Dar. They like to take on the challenge. And we'll have to see which one wins this contest, because Alia is looking to go big, but it's not easy to hit out Nidar Dar. Good bowling. Good contest between the two. She is looking to go down the track, go straight over her head, but yes, there is a long on. Maybe the experience of Alia is showing here, just to see her off Dar, so she can attack the other bowlers. Ooh. Now that is sharp turn. Very sharp. It's expected to see such sharp turns from Nidar Dar. She mixed it up really well, got some variations and surprised Alia. Again, that turn. Surprising Alia once again, trying to cut the ball, but it came a bit close. After 31 overs, it's 125 for 4. Alia knows the importance of her being out there in the middle till the end overs. She has to see it through, otherwise Dynamites will be in a lot of trouble. Speaking at the toss, the Dynamites wanted to restrict them under 170, 180, and they've done that. That's the bowling performance from Blasters. 2 for Nidar Dar, all experience from her, but Saima Malik, Umaima also playing a good role, and Fatma Sana up in the innings as well. Umaima Malik bowling her 5th. Umaima bowling her 5th over. Good areas. Good start for Umaima. Now these are the balls, shorter in length. These needs to be maneuvered in the gap. Especially at this stage of the game, where you need to rotate the strike, to take singles, to score at least 4 or 5 runs and over without taking the risks. You can, and it's easy to do that on this wicket because the track is not doing much. And it's important not to put all the pressure on Alia, because you know she can go big, but it's important for her to stay out there. So Soha has an important role to play. Sweeper coming into the play on the offside. That's a good captainship as well, putting a bit of pressure on the new batsman, trying to take that wicket.
No run again. A dot ball. End of the over. After 32, it's 127 for 4. Myanmar has now bowled 5 overs for 19 runs. Soha and Alia on the crease for Dynamites. Very important for Alia to play through the overs, stay there till the end, guide the youngsters on how to go about it. The experience of Alia will be an important factor from now till the end of the innings. Alia and Soha play for the same club, so they've got good understanding. And we've seen that Alia's guiding her, and it's important that she stays out there with her. But now brought into the attack is Fatma Sana, the key bowler, the arc bowler for Blasters. She'll be looking for the wickets. She's got some good variation, slow ones, short balls, good yorkers. Short, down leg side, guided towards the fine leg boundary. That's 4 runs. Easy pickings for Alia. Can't bowl there to a batter of Alia's class. It's too easy for her. Yeah, started off with a slow one, the cross seam ball, but the line, that's where she made the mistake. It was easy picking for Alia. These are the crucial runs. Blasters need to make sure that they utilize the start they've got. That's good cricket. After getting that 4, taking a single, rotating the strike. Getting off strike is very important at times. Also gives you an opportunity to stand at the other end and analyze the game. Think about what is needed and what your game plan is. Good thinking by Alia. Good thinking by Fatma. She has asked her captain to bring in the mid-wicket fielder to put that extra pressure, stop those singles, keep Alia off the strike. She might be looking for a slower, shorter one. She's got that in her arsenal. Let's see. Good bowling, good areas. That is the place where he should be looking to bowl consistently. Round about that off stump. Just a word from Alia to Soha. She definitely needs her there. But Fatma putting all the pressure on Soha. Some really good variations with that bowling. Very exciting times for women's cricket. They have a very, very busy schedule this season. They're playing England at home, and then they will be going for the qualifiers. And then it's the West Indies coming home. So a lot of opportunity for the youngsters to show their talent in this tournament and get opportunities and play at international levels. So after 33 overs, it's 132 for 4. Well, Marina, do please talk us through the system, which has, of course, come a long way since you were most probably playing.
as we were talking, the hardships you've gone through while developing your game and coming up to play for Pakistan. These young girls are very fortunate that all of your lot has provided that path to them, really, and a lot of facilities are now available. So what is really happening at the grassroots level? Yes, women's cricket in Pakistan has come a long way, and it's really nice to see all the youngsters getting the facilities, and now probably a good pathway set, because in our times there were hardly any international cricket around. Also domestic cricket wasn't there. But if I talk about the highlights from previous years, the one major thing we've introduced is obviously the under 18 thing, the Skill to Shine Academy, and the domestic fee, if we talk about financial differences, has been introduced in domestic level, which wasn't there when we played. That's a good run. Very good run. That is what we were talking about. Those singles, very important, have to be taken now at this stage. Well, a full toss. Oh, brilliant fielding by Nida Dar at the mid-wicket boundary. Certainly stopped a boundary. So going down the track, heaved it over mid-wicket, but excellent fielding, kept them down to just a single. Full toss offered, and it was really brilliant fielding by Nida Dar, stopped a certain boundary. That's the difference we need to see from international players at this level. You need to inspire these youngsters, especially in fielding. Well bowled, a bit of turn, inviting Alia to come down the track. Well negotiated in the end by Alia. It's at the end of 34 overs, it's 135 for 4. Getting back to women cricket, the contracts have been introduced, emerging contracts have been introduced to encourage youngsters to come and play, and that's the proper setup we need to develop and perform at international cricket. We've seen the big, nations setting up and working at their grassroots level, and that's exactly what we've done. So far, getting back to the match, that's the bowling from Blasters. Yes, pick of the bowlers, Saima Malik so far, 9 overs, 30 runs, 1 wicket. Yes, it is very important, and as it has happened, that people like yourself and of course your fellow teammates who were there when you were playing to come forward and of course guide not only the players but also at the management level, because of course you people know what the problems are, and it would be your input could prevent. Tried to play a big shot, did not time it at all. Straight to mid-off. Yes, so your input of course can provide, prevent any such shortcomings in the future. It could help improve the game, make the facilities better. It's the idea behind us getting into these positions by Sir Wasim obviously was to pick up problem areas. Short, slower, shorter, tried to pull it, could not time it because of the lack of pace. Just a single.
Fatma applying all the variations she knows. And it's probably good bowling with the feel she has. Changing with every ball according to the batter. Alia is on strike now. That's the crucial wicket blasters are looking for. Some argument going on between the captain and the bowler. Fast bowlers tend to have that, no? They want their field exactly where they want. Yes, and that's a very good thing, actually. Appeal for LBW, guided down a fine leg for a couple of runs. Yes, it's a good thing for the bowlers to know the areas they are going to bowl, and the awareness that what sort of field sets they want. And of course, it's the job of the captain to have a discussion, to communicate with their bowlers, to give them whatever fields they want. It's even better coming from a youngster like Fatma Sana. She knows her bowling, she knows the areas where the batters are struggling, and she can probably get a wicket. So it's all encouraging to see taking her responsibility. Single for Alia. Quite a character, Fatma seems. She's very pumped up whenever she's asked to bowl. She is really running in, giving it her all. Good over, keeping the scoring rate down. After 35 overs, it's 139 for 4. अरे बेटा भाग के जाओगी 35 overs down, 139 for 4 Dynamites. दानिश आपको खुशामदीद. Thank you so much once again. बीबी हम लेट हैं Alia Riaz looking strong and stronger. पूरा पीछे जाओ यही बहुत अच्छी बात है आलिया की. Once settle हो जाती हैं, so बड़ी reliable. पकड़ बीबी आउट हो गया ठीक है बहुत अच्छे ब्रिलियंट ऑलमोस्ट 10 ओवर्स का खेल अब बाकी रह गया है इस इनिंग्स का. और सवेरा, व्हाट इज़ योर कॉल? कितने हो सकते हैं 10 ओवर्स में जो एक अच्छा टारगेट सेट हो सकता है आपके ख्याल में? Last 10 overs कम से कम अगर मैं करके भी बताऊं तो 200 तो यहाँ करने चाहिए. बहुत ज़रूरी है कि 200 तो बोर्ड पे होने चाहिए. वाओ, ब्यूटी, बड़ी अच्छी बॉल और ब्रेक हुई, अंदर की तरफ आई थी, बहुत मुश्किल इसको खेल पाई. और मत भूलें कि आलिया भी मौजूद हैं क्रीज पे. सो आई थिंक कि आपने जो बात की है वहाँ पर अगर पहुँचना है तो आलिया के स्ट्रोक्स यकीनी तौर पे पहुँचा सकते हैं. बिल्कुल, आलिया को यहाँ मौजूद रहना पड़ेगा, आखिर तक खेलना पड़ेगा. बट यहाँ मैं उमैमा की ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगी. उमैमा इज़ अ वेरी गुड बॉलर एंड नॉट जस्ट अ वेरी गुड बॉलर, ऑलराउंड परफॉर्मर बहुत अच्छी हैं. बैटिंग में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं अपनी टीम को. मेडॉन को क्लियर करना चाहे, कदमों का इस्तेमाल किया इस बार, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए. कोशिश ज़रूर की थी. अब इरादे साफ बताते हैं कि बाउंड्रीज हासिल करना चाहते हैं. आलिया के ऊपर जो मेडॉन है उसको पीछे लिया गया है. लॉन्ग ऑन पर मौजूद हैं बिल्कुल बाउंड्री पर फील्डर.
वेरी गुड बॉलिंग। सवेरा ब्रेक देखें कितना ज़्यादा गेंद को ये ब्रेक कर रही हैं आई थिंक, और बड़ी खुशाइन बात है कि कंट्रोल के साथ जो गेंद है वो अच्छी ब्रेक की जा रही है। पकड़ लेना, वेल डन और उमैमा की आपने बात की, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमने देखा कि बड़ी अच्छी इनिंग्स इन्होंने खेली थी, हाफ सेंचुरीज भी बनाई थी। बॉलिंग में इन्होंने विकेटें हासिल नहीं की थी, लेकिन बड़ी अच्छी इकोनॉमिकली बॉलिंग की थी इन्होंने। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं ये पाकिस्तान टीम का। एक ही है, जल्दी आना, ठीक है। A very good over by Alia, by उमैमा सुहेल, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उमैमा की यहाँ पे। रोक के रखा डायनामाइट्स को, कोशिश की कि रन्स इतनी तेज़ी से ना बने, बिकॉज अगर आलिया क्रीज पे मौजूद हों और रन्स ना बन रहे हो, सो वाकई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उमैमा की तरफ से। 36 ओवर्स का यहाँ हुआ इख्तिताम, 140 फॉर 2 डायनामाइट्स। राइट, तो अब 9 ओवर्स का खेल जो है वो बाकी रह गया है, और जिस तरह सवेरा आपने कहा कि ऑलमोस्ट 200 यहाँ पर होने चाहिए। एक ओवरकास्ट कंडीशंस में रात भर की बारिश में टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इब्तदाई लम्हात में हमने देखा कि जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी उसमें रन ज़रूर बन रहे थे, लेकिन सिंगल्स और डबल्स हम देख रहे थे कि वो इस तरीके से नहीं ले पा रहे थे। बिल्कुल, सिंगल और डबल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, और आपने देखा कि जैसे ही सिंगल और डबल्स शुरू हुए, जैसे ही आलिया क्रीज पे आई, डिफरेंस लगा एकदम से। टीम डायनामाइट्स का माइंडसेट चेंज होता हुआ लगा आपको यहाँ पे। अरूप अपने छठे ओवर का आगाज करेंगी यूनिवर्सिटी रोड एंड से। अच्छी बॉलिंग, बैकफुट पर जाकर इसको ड्राइव किया, सीधा फील्डर के पास, रन नहीं बनाए। यही लाइन और लेंथ यकीनी तौर पे कप्तान को दरकार होगी अरूप की जानिब से। अरूप को कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग करनी होगी। अरूप का एक सबसे बड़ा मसला ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा यही गया है कि कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग नहीं करती। जहां थोड़ी सी मार पड़ती है, जहां थोड़े से रन्स बन जाते हैं उनके खिलाफ, थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं, और यही वजह है कि आपको रेगुलर मेंबर नहीं दिखती पाकिस्तान टीम का भी। आज भी हमने कुछ इसी तरह का देखा था जब आलिया बैटिंग करने के लिए आई थी। वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, भरपूर फायदा उठा रही हैं, और आलिया और सोहा इस वक्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी हो रही है। आलिया ने जिस तरह से अब तक बैटिंग की है, इब्तिदाई लम्हात में जब ये बैटिंग करने के लिए आई थी तो उस वक्त इन्होंने प्रेशर बिल्ड किया था और रन्स बनाने शुरू कर दिए थे। तुम्हें क्या कीड़ा है तेज करने का? और अब जबकि इन्होंने देखा कि विकेट्स गिरी हैं तो सेंसिबल बैटिंग की है। अब बहुत ज़्यादा अपने गियर्स जो थे इन्होंने वापस थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पर लेकर आए हैं, और एग्रेसिव जो नज़र आ रही थी उसको थोड़ा सा अपने मूड को चेंज किया है। आई थिंक अच्छी सेंसिबल बैटिंग है आलिया की तरफ से। बहुत अच्छा शॉट फिर से सोहा की तरफ से, और मुनीबा का खुश नहीं लग रही हैं, मुनीबा नहीं, सिद्रा जो हैं वो खुश नहीं लग रही हैं उरूप से, बिकॉज उरूप को जिस तरह वो कंसिस्टेंसी में बॉलिंग चाह रही हैं कि उरूप वैसी बॉलिंग करती रहें। एक बॉल अच्छी, दो बॉल अच्छी, तीसरी बॉल में फिर मिस आउट कर जाती हैं उरूप। एक और अच्छा सिंगल हासिल किया यहाँ पे आलिया ने। 100 ओवर यहाँ पे मुकम्मल, 37 ओवर्स के बाद 147 पे 4। शायद ये वजह है कि अरूप जब बॉलिंग करने के लिए आ रही हैं, देखती हैं कि जब फ्लाइट के साथ गेंद करती हैं तो उस पर रन्स बन रहे होते हैं तो वो तेज़ गेंद करना शुरू कर देती हैं, और सिद्रा उस पर खुश नज़र नहीं आती हैं, और यही वजह है उनसे कहती हैं कि आप चलें जाने दो। कहती हैं क्यों तेज़ गेंदें कर रही हैं। बिल्कुल यही तरीका है। अगर आपको रन्स पड़ भी रहे हैं तो आप
फिक्स रहें जो आप कर रही हैं, जो आप करना चाह रही हैं, बिकॉज आप इवेंचुअली फ्लाइट बॉलिंग करती रहेंगी, आप ललचाएंगी बैट्समैन को और ललचाएंगी, और अगर बैट्समैन आगे बढ़ के मारने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं विकेट निकल सकती है। चांस लेने की कोशिश की थी। अच्छी बॉलिंग कर रही हैं और अच्छी लाइन के साथ गेंद को ब्रेक भी कर रही हैं। ब्रिलियंट बॉलिंग बाय उमैमा, और उमैमा कंटिन्यू कर रही है उसी तरह अच्छी बॉलिंग करते हुए। 8वां ओवर चल रहा है उमैमा का और सिर्फ 25 रन दिए हैं। अनलकी रही हैं, विकेट के कॉलम में कोई अभी तक शुरुआत नहीं है, इट्स जस्ट नल देयर। और ये बात जानती हैं आलिया कि अब क्योंकि इनके 2 ओवर्स रह जाएंगे तो लिहाजा बहुत ज़्यादा इनके ऊपर शायद वो चार्ज नहीं कर रही हैं कि इनके ओवर्स मुकम्मल हो जाएं तो दूसरे बॉलर्स के ऊपर ये कार्रवाई की जाए। अपनी लाइन को एकदम से चेंज किया, आउटसाइड द ऑफ स्टंप रखा था इस बार कि जहां पर आसानी के साथ एक सिंगल बन गया। बट मुझे लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली टेम्प्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि कोई शॉट मारे, कुछ करे, बैटर्स को ललचा रही हैं। आखिरी बॉल पे एक और सिंगल यहां पर हासिल हुआ। तो 48 ओवर के बाद 149 पे 4 डायनामाइट्स। इनफैक्ट 38 ओवर के बाद 149 पे 4। अब 7 ओवर का खेल बाकी रह गया है और 50 ओवर्स के इस मैच को बारिश की वजह से क्योंकि देर से शुरू हुआ था और 45 ओवर्स तक महदूद किया गया एक इनिंग्स को इस मैच की। दानिश, लंच का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी आप बढ़ा रहे हैं आगे। बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट गेंद कर दी और थोड़ा सा लो रही है और इस पर रन्स तो फिर बनेंगे अगर इस तरह की बॉलिंग आएगी और फिर कप्तान तो नाखुश हो गई। बिल्कुल, और सिद्रा बहुत ज़्यादा ऑडिबल हैं, आप बहुत आराम से सुन सकते हैं कि सिद्रा इस वक्त क्या सोच रही हैं, क्या समझ रही हैं, क्या कर रही हैं और क्या करना चाह रही हैं, आपको सब पता चल रहा है। फिर थोड़ा सा लो बाउंस नजर आया और एक बार फिर एक आसानी के साथ एक रन यहाँ पर हासिल कर लिया है। तो सिंगल्स यहाँ पर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं दोनों बैटर जो हैं। कोशिश ये है कि स्ट्राइक को रोटेट करते रहें और उसके बाद जो बैट बॉल मिले उस पर शॉट्स खेलें। वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय उरूब एंड आउट हुए यहाँ पे। सोहा को समझ नहीं आई कि हुआ क्या, अचानक से कहां से बॉल आई और कहां चली गई। जी हाँ, बोल्ड कर दिया इस बार। एक दफा फिर बड़ी अच्छी जगह पे गेंद पिच हुआ और जो ब्रेक हो रहा है उसका भी फायदा उठाया और इस तरह से बोल्ड किया और एक विकेट हासिल कर लिया यहाँ पे। तो 5वां नुकसान उठाना पड़ गया है यहाँ पर डायनामाइट्स को। अल्लाह की चार्ज करने के लिए जा रही थी सोहा फातिमा लेकिन कामयाब नहीं हुई और ऑफ स्टंप पर जो बेल्स थी वो गिरी और इस तरह से एक और कीमती विकेट यहाँ पर मिल गई। ब्लास्टर्स ऑलमोस्ट कुछ मिनी लंच कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, मैंने कहा ना लंच टाइम हो गया और हर किसी को पता है कि ये लंच टाइम करीब आता जा रहा है। बट ब्लास्टर्स ने जो है वो आई वुड से कि अच्छे तरीके से पार्टनरशिप सेटल नहीं होने दिया, अच्छे तरीके से बैकफुट पे रखा डायनामाइट्स को। जहां अभी हम देख रहे हैं कि 155 फॉर 5 हैं डायनामाइट्स। 200 की बात तो मैं यहाँ कर रही हूँ दानिश, मगर अब मुझे लग रहा है कि आलिया इज लूजिंग हर पार्टनर्स वेरी फ्रीक्वेंटली। जी हाँ, ज़रूरी बात यह है कि आलिया के साथ जो पार्टनर है वो ज़रूर कोई ना कोई मौजूद रहें अगर एक अच्छा टारगेट यहाँ पर पोस्ट करना है, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आलिया
अगर अकेली खड़ी रहेंगी तो प्रेशर उनके ऊपर आएगा, फिर वो भी कोई गलत शॉट खेल के आउट हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल अभी 5 विकेटें बाकी हैं। ऑलमोस्ट इस ओवर के बाद 6 ओवर से खेल बाकी रह जाएगा। उरूप की कंसिस्टेंसी की इसलिए बार बार बात होती है, कंसिस्टेंटली वो अगर बॉलिंग करती हैं तो विकेटें निकालती हैं। सिद्रा बिल्कुल खुश हैं इस वक्त उरूप की इस बॉलिंग परफॉर्मेंस से, और यही बॉल करनी है, यही बॉल करनी है इज व्हाट हर वर्ड्स आर। शॉर्ट गेंद एक बार फिर, और एक दफ़ा फिर इजी सिंगल यहाँ पर बना है। सिद्रा जितनी जल्दी खुश होती हैं तो जल्दी नाराज भी हो जाती हैं सवेरा वैसे। नशरा संधू आई हैं अब क्रीज पर, और नशरा इज अ वेरी गुड बैटर एंड बॉलर एज वेल। नशरा की परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रहती हैं, अच्छी पार्टनरशिप लगा सकती हैं ये आलिया के साथ अगर सोच समझ के और संभल के खेलें तो। दानिश, क्रीज पे अब 2 ऐसे लोग हैं जो कि रेगुलर मेंबर हैं टीम पाकिस्तान के। नशरा भी रेगुलरली पाकिस्तान की तरफ से खेलती हैं, आलिया भी रेगुलरली पाकिस्तान की तरफ से खेलती हैं। और अभी अगर मैं रीसेंट पास में बात करूं तो नशरा की अच्छी परफॉर्मेंस रही थी बॉलिंग में। अगर मैं बात करूं तो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस रही। सो अगर मैं कहूँ कि बैटिंग में तो अच्छे तरीके से डाउन द ऑर्डर चिप करना जानती हैं। जी, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप होगी अब ये, और यही वजह है कि सिद्रा जो है वो यकीनी तौर पे कोई हिकमत अमली चाहेंगी अपनाई जाए इनको आउट करने के लिए। ऑन साइड पे ड्राइव सीधा फील्डर के पास, डॉट बॉल। तो अब डॉट्स बॉल जो है वो कम से कम खेलनी होंगी। 6 ओवर से खेल वैसे ही बाकी रह गया है। उमैमा सोहेल बिल्कुल मार्जिन नहीं दे रही हैं रन्स बनाने के लिए, बिल्कुल टाइट बॉलिंग की हुई है इस वक्त, और फील्डिंग भी बहुत अच्छी हुई हुई है। ठीक है, एक ही है, जल्दी आना आजा, ये भी आ जाना, ये भी उमैमा का ये आखिरी ओवर है अपने कोचे का। कोई विकेट हासिल नहीं किए इन्होंने अब तक। दूसरी तरफ न्यू कमर नशरा मौजूद हैं, और आलिया जो कि 40 रन पे बैटिंग कर रही हैं। एक अच्छी और लंबी हिट्स की तवक्को रखते हैं उनसे। वेरी गुड बॉल बाय उमैमा। जो ऑलमोस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद को पिच करती हैं, और जो बॉल है वो ब्रेक होने के बाद मिडिल स्टंप और जो लेग स्टंप पे टांग उस तरफ मूव कर जाता है। अच्छी लाइन को मेंटेन किया है ऑलमोस्ट एक बार फिर। और गेंद में आप देखें तो यहाँ पर उमैमा को थोड़ा सा कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम देखते हैं कि बाउंस ही मिल जाता है, जबकि दूसरी तरफ अगर अरूप गेंद करती हैं तो उनका गेंद थोड़ा सा नीचे की तरफ रहता है, जिससे हम देखते हैं विकेटों के पीछे कप्तान खुश नजर नहीं आती। अगर मैं इन कंडीशंस की बात करूं तो उमैमा बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही हैं यहाँ पे। दो के आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस वक्त उरूब बॉलिंग कर रही होती हैं लगता है बिल्कुल डिफरेंट सरफेस है जिस पे वो बॉलिंग कर रही हैं, बॉल बैठता हुआ नज़र आता है। बट उमैमा जिस तरह कैपिटलाइज कर रही हैं यहाँ इस सरफेस पे, इनको इस्तेमाल करना आता है सरफेस का प्रॉपर्ली, और वो दिख रहा है जिस तरह वो ट्रबल कर रही हैं बैटर्स को। तो यूं उमैमा ने भी अपना कोटा मुकम्मल कर लिया है 9 ओवर्स के बाद। 28 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। निदा डार हमें भी एक दफ़ा फिर एक्शन में नजर आएंगे। 5 ओवर से खेल बाकी रह गया है। यूनिवर्सिटी रोड एंड से आई हैं बॉलिंग करने के लिए। So 40 ओवर के इख्तिताम पे इस वक्त 154 फॉर 5 डायनामाइट्स। इंटरेस्टिंग होगा कि आलिया किस तरह से चार्ज करेंगी निदा के ऊपर, क्योंकि निदा के अभी 3 ओवर्स बाकी हैं और इन्होंने 8 रन देकर 2 आउट किए हैं, तो इनके ऊपर चार्ज करना आसान भी नहीं होगा। एक्सपीरियंस्ड हैं, और दूसरी तरफ आलिया भी जो है वो लंबी हिट लगाने की जरूरत रखती हैं आखिरी लम्हात में। तो एक इंटरेस्टिंग बैटल यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों के दरमियान। लास्ट 5 ओवर्स 154 रन्स बनाने पड़ेंगे, थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा इस पार्टनरशिप में। पहली बॉल डाउन द लेग साइड और फुल टॉस की गेंद था।
इस पे खाली एक ही रन बना। शुक्र अदा करना चाहिए निदा डार को कि इस पे कोई बाउंड्री नहीं लगी। निदा ने ऐसा लगा कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, बिकॉज एकदम से समझ नहीं आया, निदा को खुद भी नहीं समझ आया कि हुआ क्या है, और फ़ायदा नहीं उठाया यहाँ पे बैटर ने, वरना भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता था इस बॉल का। सो अभी भी जो डॉट्स बॉल है वो हम देख रहे हैं कि उसका प्रेशर जो है वो नज़र आता है हमें डायनामाइट्स के ऊपर, और क्योंकि अब तकरीबन 5 ओवर का खेल बाकी रह गया है तो ये जो डॉट बॉल हैं वो परेशान कर सकती हैं एक जो टारगेट सोचा होगा उसको हासिल करने के लिए। गुड बॉलिंग बाय निदा, बैठ ही गई बिल्कुल बॉल। कोशिश कर रही हैं चार्ज करने के लिए नशरा, लेकिन कामयाब नहीं हुई हैं, और ये बात निदा खुद भी जानती हैं। दानिश बड़ा क्रूशल होगा यहाँ पे, हम कह रहे हैं 5 ओवर्स बाकी हैं जिसमें निदा के 3 ओवर्स दिख रहे हैं, यानी इन 3 ओवर्स में रन्स बनाना मुश्किल होगा डायनामाइट्स के लिए। एक बार एज हुआ और एक रन यहाँ पर हासिल कर लिया बिल्कुल, क्योंकि इस ओवर के बाद 4 ओवर्स जब रह जाएंगे और उन 4 ओवर्स में 2 ओवर्स करने निदा डार ने, तो यकीनी तौर पे मुश्किलात हो सकती हैं, आसानी से चार्ज नहीं कर सकते आलिया और नशरा, क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है निदा डार के ऊपर। डाउन द लेग साइड एक आसानी के साथ एक और सिंगल यहाँ पर हासिल हुआ, और इसी सिंगल के साथ ओवर मुकम्मल हुआ 41 ओवर्स 157 पे 5। सो आई होप सवेरा कि जो आखिरी 4 ओवर्स हैं इसमें हम बाउंड्रीज देख सकें। बिल्कुल, क्योंकि दानिश काल पड़ा हुआ है यहाँ बाउंड्रीज का। 53 बॉल्स हो चुकी हैं जब लास्ट बाउंड्री लगी थी, विच मीन्स बहुत ज़रूरी है इस वक्त बाउंड्रीज ही डायनामाइट्स को एक अच्छे टोटल पे, एक फाइटिंग टोटल पे ला सकते हैं, बिकॉज अपने बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ तो करके दें जिसको डिफेंड कर सकें डायनामाइट्स के बॉलर्स। स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ये 3 फील्डर्स हैं इस वक्त जो बाउंड्री पर नजर आते हैं हमें। फातिमा सना वापस आई हैं बॉलिंग करने के लिए, और फातिमा सना एक ऐसा तुरुप का पत्ता है ब्लास्टर्स के पास, बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करती हैं, अभी तक अनलकी रही हैं कि विकेट नहीं निकाल पाई हैं कोई, और काफ़ी देर तक खामोश नहीं रहती हैं ये। आलिया जिन्होंने सिंगल लेने के बाद अब स्ट्राइक जो है नशरा को दिया है, ऑन साइड पे जो लॉन्ग ऑन है अब उसको ऊपर बुलाया है मिड ऑन पर, और थर्ड मैन को पीछे लिया है, इनफैक्ट फाइनल लेग को। तो सिंगल्स अभी भी हासिल हो रहे हैं यहाँ पे सवेरा, और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो बाउंड्रीज हासिल करने की बात की जा रही है वो बड़ा मुश्किल हो गया है, नज़र नहीं आ रही हैं, और ख़ास कुछ ज़्यादा मुझे लग रहा है कि दोनों बैटर जो हैं वो तवज्जो भी नहीं दे रही हैं कि बाउंड्रीज यहाँ पर मिल जाएं, और दूसरी तरफ 65 गज की हम देख रहे हैं जो बाउंड्री है वो है। दानिश कॉशियस होके खेल रही हैं यहाँ पे, बिकॉज आलिया को भी पता है कि आलिया के बाद यहाँ पे कोई ऐसी प्लेयर नहीं है जो कि बड़े हिट्स मार सके और कुछ रन्स कम्यूलेट कर सके। एक रन ले लिया है, दूसरा रन भी लेना चाहती हैं, और ये देखते हुए कि फील्डर पीछे हैं और 2 रन यहाँ पर हासिल कर लिया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और इसी तरह से प्रेशर डालना होगा रन्स को आगे लाने के लिए और मजीद रन्स बनाने के लिए। बिल्कुल जी, इसी तरह की क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट्स चाहिए होगी कि रन्स आते रहें, बोर्ड पे रन्स चलते रहें, बिकॉज बाउंड्रीज जिस तरह दानिश आपने अभी कहा कि
दिख नहीं रहा, बाउंड्रीज के लिए कोशिश भी नहीं दिख रही है। ऑन साइड पर हालांकि एक अच्छा बड़ा गैप जरूर मौजूद है। फातिमा ने भी बड़ी अच्छी अब तक बॉलिंग का मुजाहरा किया है, खासतौर पे जो फर्स्ट स्पेल था वो भी और ये भी। यॉर्कर लेंथ हमने देखा डिलीवरीज की हैं, फुलर लेंथ डिलीवरीज हमें इनकी तरफ से नज़र आई हैं। बहुत ज़्यादा जो बैटर है उसको मौका नहीं मिला कि खुल के इनके ऊपर बैटिंग कर सकें, और अभी भी इस ओवर में इन्होंने इसी चीज़ को कंटिन्यू किया है जो पिछले स्पेल में था। फातिमा सना बिल्कुल मौका नहीं दे रही हैं। आलिया हिट आउट करना चाहती हैं मगर फातिमा सना को मौका बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। 4 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं, 2 सिंगल्स 1 डबल, और आपने कहा था 53 बॉल्स हो गई हैं, तो 3 और मिला लें 56 गेंदें हो गई हैं। अभी तक नसीब नहीं हुई हमें बाउंड्री देखना। बिल्कुल भी डायनामाइट्स के बैटर्स और डायनामाइट्स के जो प्लेयर्स डगआउट में बैठे हैं वो भी यही सोच रहे होंगे कब लगेगी वो अगली बाउंड्री। फुल टॉस गेंद थी और इसको बिलाखिर ज़रूर कोशिश की थी कि पहुंचा सकें बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। फील्डर गई और गिरते हुए इस गेंद को फील्ड किया, लेकिन बहरहाल सिंगल्स के बाद इसको कन्वर्ट किया 2 रन में, और बाउंड्री एक बार फिर नहीं आई। 42 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, 42 ओवर्स के बाद 164 पर 5। इसी के साथ चेंज इन कमेंट्री बॉक्स, मरीना और अहमद वुड ज्वाइन। Dynamites struggling to post a good total. They know how crucial these runs will be, especially Alia still out in the middle. But we haven't seen the full potential. She knows how crucial her wicket will be. Last 3 overs, acceleration needed. And Alia has the capability of doing it. She has done it before. She has shown that she can use the long handle. She can go for those big shots. But can she do it in this situation? Oh, that's guided down the third man. Won't reach the boundary. Fielders behind it. Trying to pick the third one. It will be a tight, but made home safely. Good running. Nashra and Alia grabbing the crucial runs. Very, very good shot to begin with. Played it very late cut, and then some excellent running. And that is the urgency that is needed in these last 3 overs. I have to give credit to Sidra as well. She operated her bowlers pretty good. Tossed up. Oh, that's a midfield. That's not what you would like to see at this stage. Easy single given away. Yes, the bowler not happy with that effort. She, of course, at this stage, every run counts. The batting side wants more runs and the bowling side needs to pin them down. Alia goes. There's a chance of Aroop Shah there, just falling short of it. Medard are not amused by the effort. They know how crucial this wicket could have been. But now glimpses of aggression. Alia knows how important it is to big hit. Alia Riaz with that shot gets to her half century. Again aggression. Would be looking for 2, no, settles for 1. Good innings by Alia Riaz, just cruising her team towards a good total probably.
50 or 59 deliveries. 13th list A half century for Alia. Nudged away. Would be looking for 2 runs. Not available there. Alia has not really found her timing yet, even though she has got to a 50, but she's not still timing it as well as she usually does. Wanted to take a cheeky single, Nashra Sandhu, but turned down. Good over by Nedadar. 171 for 5. Dynamites cruising to the end of the innings. Well, the last couple of overs remaining now, and all eyes on Alia. If she could finish it off well, I think another 10-12 runs in the last 2 overs will get the Dynamites to a very competitive total. It's definitely, they would be looking for it, but it's not easy task. Nidadar holding one end, and Fatma Sana, we've seen how brilliant she was in her previous overs. She's good at using the variation at the depth of innings. Good jokers, slow ones, cutters. Some serious challenge for Alia. Goes aerial, will land safely. They're looking for a second run. Nashra has to hurry. Puts in the dive, we'll have to see. Yeah, it's a safe run. That's good running. Pushing hard for the second run. Well, the wicket seems to be a bit slow, and I think it has been judged very nicely by the skipper, the fielding side skipper, Sidra Nawaz. Driven will be just single run. That's good bowling by Fatma. Hitting the block hole. Good Yorkers with some serious pace. 33 out of the 43 overs bowled so far have been bowled by spinners. So that is, I would say, good captaincy or good planning by Sidra. Also, that's probably the composition of their side. They've got more spinners than fast bowlers. But the way she operated her spinners from both ends was really crucial. Rare bad delivery. Another single taken. Couldn't put it away. Nashra Sandhu, but main important thing is Alia is on strike. I think she was trying the slow one and didn't get the length right. Could have been costly, but lucky to get away with just a single. Dynamites did actually missed out on some really loose deliveries. Another slow one, nudged away for single. Alia still holding on to go big. I think Fatma has been very impressive, especially in, yes, early on with that swing, and now in the later part of her spell, bowling fuller and bowling in the stumps, not giving away any room to the batsmen to free their arms. She's been impressive. There'll be a chase for the fielder, but ball will win. It's a rare boundary by Nashra. Trying to bowl a Yorker, but ended up in a full toss. 4 runs earned. Dynamites move to 180. Well, yes, a very good shot. Saw that gap, mid-wicket gap,
a boundary, a very welcome boundary after 70 balls. It's the first boundary in 70 balls. Well, that shows how well actually the Blasters have bowled. Oh, that's rare runs for Dynamites. Will reach. Oh, that's good effort. Really good effort by Arija Hasib, another youngster. That's the kind of commitment we need, but Dynamites will grab 2 runs. Well, it doesn't matter how they come in these last couple of overs, as long as they are coming. Excellent fielding, yes. Definitely stopped 2 runs. So it's 44 overs gone. It's 182 for 5. It was mentioned that 70 balls were gone by without scoring a boundary, and that too being Alia in the middle. It seems very unlikely, but I think that she's played against her nature. She knew that her wicket was very crucial and she had to be out there for the team to play the full quota of overs. Yes, a very responsible innings today by Alia. And of course, that is what was expected of a senior player. Nida Dar will bowl the last over. Can we see some fireworks? No single there, no run there. Good bowling, fuller and faster by Nida. Very, very well bowled by Nida Dar. Saw her coming down, pushed it a bit further, nearly yoked herself, Alia. Full toss. Another single, another bad ball missed. Will they pick up 2? No, they won't. If that's been the story of Dynamite's innings, not punishing the loose balls, and they, by doing so, they've at least lost, I think, I would say 20 runs. It's 20-25 probably. Another full toss, and again straight to the fielder. Another full toss missed. Not good bowling by Nida, given the kind of senior player she is, but it's poor from Dynamites. Alia chips it away. It's in the gap, but will be cut down. Good fielding by Fatma Sana at the boundary. Just single. That's brilliant by Blasters. Not very good piece of running. I think Alia at all costs should have tried to take the strike. There was a bit of misfield. They could have easily picked the second run. She needs to be on the strike, Alia Riaz. That's a cheeky single. Oh, direct hit. And turned down yet again. Well, direct hit always brings some excitement, but Alia easily home this time. Yeah. Nashra literally pushing it straight back to Nida Dar and then taking the single. That was a brave call. We've seen quite few direct hits from Blasters. That tells how committed they are in the field. Adjusting the field, she wants to finish good. Nida Dar, that's how she is. Missed it, and that's the end of the innings. Brilliant performance by Blasters. Dynamites winning the toss. They've cruised towards 186 as a total. But talking about Blasters, they have been brilliant. The captaincy was brilliant, fielding was brilliant, and the bowling performance. Yes, definitely, and especially in the death overs, they've bowled very well. They've bowled fuller. They've bowled in the stumps, not given anything away. And whatever bad balls they've even bowled, the Dynamites failed to capitalize on it.
So overall, was probably a good performance for the Blasters, and they have restricted them to 186, where as at one stage we were thinking that they might get to that 200 mark, but yes, so the Blasters have done well, and it is a 186 for 6 for the Blasters, for the Dynamite, sorry. Sidra Nawaz will be very pleased with her squad. The bowlers had done their job now. It's time for their batters. We'll have to see how they operate, because it's going to be a big task for the Dynamites to defend this total. There's the confirmation. Muniba Ali leading the side. 62 runs, crucial innings. Alia Riaz not out 57. That was a crucial innings by the end of. And then Nashra Sandhu playing a bit of cameo with 16. But 186 is the total to defend for Dynamites, and Blasters have a good lineup. We'll have to see how they go. That's the bowling card for the Blasters. Brilliant. Good captaincy, good start by the youngsters. Probably Aisha Javed was probably the weak link, but Fatma Sana, Saima Malik, Umaima, Arup Shah, they all played their role. There are the highlights. Muniba Ali putting away the loose ones. Some full tosses being put away to the boundary. Aisha Amjad was struggling to land the ball. Some lucky chances by Sadaf. That was a good opening partnership. Capitalized on the loose balls. They kept their cool. And then some lucky chances. But you know, they say luck favors the brave. That was the first glance of Sadaf. That was the crucial wicket. Saima Malik has been brilliant. That's the second wicket. Kainat Hafiz trying to capitalize on it, but ended in straight in the fielder's hand. But Alia Riaz kept the show going on. That was crucial innings by her. Very well played. Some good bowling at the end by the spinners, but they capitalized. And then Nidar Dar with a brilliant ball and a good glove work by Sidra. But that did not stop Alia Riaz. She kept on going, even with putting away the bad balls. And Shirar trying to slog it. And then Nashra Sandhu playing some part with Alia Riaz to grab the crucial runs. And that's the end. Soha. Nidar just cleanly getting a run out. That's the story so far from the first match. Dynamites have posted 186. Blasters need to chase it down, and Dynamites will have some work to do to get the Blasters out of the game and win this one. We'll take a break and we'll join you for the second innings, where the Blasters will be chasing 186, the target.
Welcome back to the National Stadium where Dynamites are playing Blasters in the Pakistan Cup Women's One Day Tournament 2021-22. The target for the Blasters is 187 runs to win, as the Dynamites finished on 186. The umpires are there in the middle, and the second innings, the chase by the Blasters is about to get underway. The umpires checking the stumps just to make sure everything is perfect before the start. The fielding side walking in now, and so are the batsmen. The Dynamites batting first today, getting that total. We were expecting a few more runs, quite a few opportunities missed, but in the end, Alia Riaz, the experienced all-rounder for the Blasters. Here's the scorecard for the Dynamites. 62 at the top of the order by Muniba Ali. Sadaf Shams, 22 of 47 balls. That was a good opening partnership between them. Then Kainat Hafiz struggled to get to 5 of 28. And Alia Riaz, who finished with 57 of 67 balls, she was not out. And Nashra Sandhu, 16 of 20. They had a good partnership at the end. So that partnership enabled them to get to a competitive total, 186, and now it is up to the Blasters to get to that target of 187 of 45 overs available to them. Maham is going to start the proceedings for the Dynamites. Right arm over the wicket. Play. So that was misfield immediately. Good start by Maham on the stumps, and a good single. Something that was missing from the Dynamites innings. No singles at all. Even when the boundaries were not coming, they hardly concentrated on taking those singles and doubles to get the scorecard ticking. That was down the leg side, guided to fine leg. It was picked up by the fielder. Another couple to Nahida. Nahida and Firoza have opened the innings for the Blasters. Part of Pakistan being still out of form. Driven on the offside. Point fielder got a hand to it. Well, if you look at the figures in this over, a single, a double
and a single. That was something which was missing from the Dynamites inning. Hardly ever did we see such a sequence in their innings. Blasters have learned something from Dynamite's innings. It's going to be not a very hard chase if they stick to their basics, because they've got a good batting lineup. With all experience, Gulfaroza is also an attacking player coming from under 18. But huge responsibility on the bowlers right now. They need early wickets. Much better line. In fact, much better length from Maham. He has the record, 43 matches, 76 wickets, and economy rate of 4.10 and an average of 26.17. Good ball to end the over. It's 5 without loss. Maham Tariq, she's also on a good prospect for Pakistan cricket. Has been around for a while in and out of Pakistan team, but she's gained some form in previous few months. She's got some good height, good pace, working on her variations. Recently was with Pakistan A team touring West Indies. Amna Bilal is another under 18 player. Good start. That one did come back a bit. Good all-rounder Hamna Bilal, one of the picks from under 18 tournaments. That's her debut in the List A career. Good in-swinger, can hit the ball as well. Good area she is bowling. The ball is coming back in, and she has managed to get the line right from the very start, starting from a couple of stumps outside off stump and bringing the ball back in. Is chasing a target of 187. That is all the Blasters actually need to do, is to pick up those singles, and whenever there's an opportunity, hit the ball for 4. They don't need to do anything extraordinary. Driven straight to a fielder, Alia Riaz misfields, but still there was no single. Yeah, they don't need to do anything extravagant. They've got the batting lineup, they've got the start. Just keep rotating the strike and put the bad balls away, which was missing from the Dynamites innings. Nahida's record, 118 matches for 3,000 plus runs. Very good record.
Has she been in good form lately, Marina? She's struggling from like since 5-6 months probably. Didn't perform on South Africa tour, neither on West Indies. Looking for the form right now. Ooh, excellent fielding there. Throw was a bit wayward, otherwise it might have been difficult for the batter to come back. End of the over. It's 6 runs without pass. Yes, I must say it's not only a good opportunity for the youngsters to show the talent on stage where people are, you know, having a look at their capabilities, but it's also an opportunity for the senior players, the players who are not in form, who haven't been performing lately, to get back that form. Close shout across the stumps to try to guide it down to the leg side. I think there was a bit of bat in there. Seemed really close to me, but yes, probably some wood on it. Maham Tariq attacking the stumps. That's the need to be. They have no margin of error because it's not a big mammoth total. They need wickets, early on wickets, and have to put some pressure on blasters to make them commit mistakes. Driven once again handsomely, but straight to a fielder. Not trying to hit the ball too hard, trying to time it. Sign of a good opening bat. Yeah, she's one of the players who like to time it. Kulfaroza, she's been around but didn't get much of opportunities to perform. Well, she's got one now. There's a lot of singles available, especially if the bowlers stray down the leg side or bowl on the batter's pad. There is a lot of opportunity to nudge it around and take those singles, unlike the Dynamites who are unwilling to take those opportunities. Well, these are good lengths to bowl unless you get a batter who can really hit you over the head and get under that ball quickly to take advantage of that 30-yard circle. It's good to bowl a bit fuller. If there is any swing, you can also get that if you are bowling a bit full. It's all about reading the batsmen and their strengths and weaknesses, and then it's coming up with a plan. Very well bowled. Good lines. Not giving away anything, Maham, so far. The only runs scored for her are the singles, which have been nudged here and there by both the batters. It's good plan to work on. Straight within the wickets, good length to hit. And she's been brilliant so far. All she needs is a wicket to put a cherry on it. Driven. Good shot. Beautiful shot that through the covers. First opportunity she got a loose ball outside off stump. There was width available, and there was
the length. She got the length wrong. Half volley, driven through the covers, 4 runs. End of 3 overs, it's 12 without loss. Marina, they have been, the Blasters have been more positive from the onset. As soon as the 2 batters came into bat, took guard, it showed from their body language that they are in the mood to be positive, taking every opportunity to score, even if the ball was bowled in the right areas. There's no apparent threat for the Blasters, nothing off the wicket, probably just a hint of swing, but not that threatening that they need to watch out. Whereas in the first innings, there was a good opportunity for the Dynamite bowlers to utilize that, Blasters bowlers to utilize that spin. But right now it's easy going for them. They can make mistakes. We'll have to see. Well, I think in the end it will depend on Nashra Sandhu and all the other spinners to bowl around her and create the impact needed, get the wickets, which are important, of course, when you are defending a rather low total. So we've seen how spinners have operated in the first innings, and we've seen some spin, probably more spin from Nida and Umaima. But Dynamite's got Nashra Sandhu, the ace spinner, left armer. They've got Ghulam Fatma, the leg spinner. Fatma also can play a role. But that's the line and length very crucial for them, on which they will be bowling. Well, fielding is a bit sloppy at the moment. They will have to pick up the standards here if they are to put some pressure on the batters. Good bowling by Humna so far. He's bowled within the stumps, bowling good lengths. He's just swinging in to Gulfiroza and bowling according to her feel. That's also a good credit given to Muniba Ali, the captain. End of a good over. After 4 overs, it's 13 without loss. Well, the field setting is also a bit more defensive, or I should say rather more helpful for the bowlers, as the Dynamites, they were going all out for wickets, of course, because Fatma was getting that swing, but they have started with a mid-wicket, which of course, because the ball is not swinging that much anymore and giving a bit of cushion to the bowler. So I think it's a good move. Yeah, Hamna Bilal is bringing the ball back into it, so it's a good feel for her. But yes, I do agree with you that they are defending this total. They need wickets. And they have to put pressure up front because there's nothing coming off the wicket. So the bowlers have to be very calculated in the line and length. And then the fielders, we've seen some sloppy fielding. They have to play their part. They have to put pressures, cutting out that singles, grabbing to every half opportunity even if they want to win this match. Because they cannot contain it. They have to take wickets. Yes, a sign of good players is definitely how quickly they learn, not only from their past experiences, but
also from the match they are playing presently, and I'm sure the Blasters would have learned that how difficult it gets to get the momentum going once you've lost it, and those singles and doubles, how important they are to keep that momentum going. It's a bigger boundary and the pitch has gone a bit slower. So they know that the importance of single and doubles are really crucial here. They're not going out for the boundaries. Obviously, they have to put the bad balls away to open the field and just play against the play plan of bowlers. But again, they have to be very calculated and not allow the run rate to climb, because they've got some good spinners in their arsenal as well. A bit of width, tried to drive it through the covers or the point region, but it's quite full Yorker length really. It will also be important to see how skipper Muniba operates with the spinners, as the skipper for Blasters used her spinners. Let's see if the spinners are as effective as they were in the first innings. Sidra did move her spinners here and there, changing their ends, bringing them on when she needed to apply the brakes, and at times when using Nida Dar when she wanted wickets. It was good piece of captainship from her. And the way she utilized the non-regular bowlers, that was really crucial with Umaima, and giving the confidence to Saima Malik. She was a youngster, but the way she took responsibility and the way Sidra was talking to her constantly, that was really brilliant. It was a good overall bowling performance and captaincy as well. Uppish but driven straight, timed it pretty well for a couple of runs. Good shot. That would give neither a bit of confidence when you get that ball in the middle of that bat. It's a very good feeling. Probably not a convincing shot. Oh, that was too close to Maham. It's not easy to take such catches in your follow-through as a fast bowler, but again, you have to be exceptional. You have to take wickets. You have to take these half chances. Yeah, especially when defending a relatively low total. It's very important to take those half chances. It's important when you're defending a total not that big enough. You have to create those chances. You cannot rely on batters to make mistakes. You have to come up with plan and some tactical things. Umna continues her spell and starts off well. She's been very economical, very tight with those lines. She's in a third over and has only given away 2 runs. Yes, she's providing a good partnership to Maham from the other end. Full toss, missed. Played back to the bowler. How many times have we seen that today? Plenty of times. That's another thing. As a batter, you need to utilize these half volleys and full tosses.
have to be that should be an instinct reaction from a batter. Well, what these missed opportunities do is that they, of course, they put pressure on the batsman, that they have played a dot ball, and then also they give this confidence to the bowler that even if they bowl a loose ball, they'll get away with it, and that confidence makes them bowl in the right areas actually. As they say that the batter's got one chance but bowler's got six. So you have to punish those bad deliveries. Otherwise there can be a scenario when the bowler will not allow any and you can be blocked down. So you always need to keep looking for runs, whether it's a good ball or a bad ball. As a batter, that's your duty. And when you're chasing, you have to keep rotating that strike. Well, again, as Marina has just mentioned to me, the same pattern is being repeated now. The number of dot balls being played by the two batters. They started off well. They were taking those quick singles, and all of a sudden they've gone into a shell. Excellent over once again. At the end of 6 overs, it's 16 without loss. Whoa, the Pakistani flag and a message of peace. It's a black pigeon, yes, I know, but anyway. Yeah, some crowd watching women's tournament. Short ball pulled towards mid wicket. That's going to go to the boundary. 4. That's a good shot. Short ball, an opportunity, and Firoza made full use of that. A welcome boundary. Gul Firoza tested by a short ball by Maham Tariq, and she delivered. It was way short, had ample time to put away. It was a good boundary. That's much better from Maham. A rare short ball, really. She's bowled a good lengths, good lines. She's been fuller. A very rare short ball, and got punished for it. And that is how it should be. That shows the positivity of the batters wherever they get an opportunity to go for runs. Gul Firoza tends to be staying on leg side. We haven't seen much of a foot movement towards the ball, towards the offside. Just maneuvering with the bat. That can be a really dangerous task for a batter if the ball is swinging and if you've got some difficult conditions. But right now she's just getting away with it. Yes, it's a matter of concern that
for the like 50 odd overs that have been bowled today. Only a couple of times have we seen that a batter has hit a 4 and that immediately has taken a single or rotated the strike. Yes, that's the game awareness they need to learn. Obviously, most of them are youngsters, but from senior player point of view, we've seen probably Alia and Muniba Ali doing that. But that is how you develop innings. That's how you should learn the art of developing innings. You've got a boundary, get off the mark, puts pressure on the opposition. Very well bowled by Maham. Testing the batting with those exceptional lines and length. She's having a word with Gulfaroza after being hit by her for 4 runs and then followed by dot balls. Typical fast bowler thing. Well, one line that I remember from my playing days, after you hit a fast bowler for 4, he comes in and says, "Ab maar ke dikhao na." End of over number 7. It's 20 without loss. Asha Sandhu has a huge role to play. We've seen some spin off the wicket. She likes to spin it. She's got a good armour ball. It'll be really crucial for her. We'll have to wait and see when Muniba will introduce her, because she needs wicket if the Dynamites want to restrict and win this, because right now Blasters are cruising. Well, at this stage, the Dynamites were 35 without loss after 7 overs, and Blasters are 20 without loss. So, yes, they have kept the run rate down, the Dynamites so far. Maham and Hamna are just brilliant, because we've seen some runs leaking from Aisha Amjad. That was the Dynamites. A really hard throw to the keeper. Well, the fielders in the infield, they have been good. They've been very alert, quick. Have stopped most of those singles even when Nahida has tried to nudge it in that gap in the covers and tried to run. They have been very quick and have stopped those singles, which is creating that pressure. Yes, that yeah, she is a bit frustrated with herself. Missed that full toss, should have put that away. But well, that has been the story of the day actually. Loose balls not being punished. We've seen many trends, just continuing from first innings to second. Rather it's run outs or missing on bad balls. And this one seems like it. There was another delivery missed by Naida. All the fielders were in the circle on the leg side, but she missed it. And these things, these sort of deliveries you missed out, these runs you missed out, do matter at the end. Because again, as I mentioned, there can be a scenario when the ball is around the top
It's really hard to get your runs going. That was close. Totally mistimed it. I think the ball came to a bit slower than she expected. Went up in the air. Lucky that it fell short of mid-off. You see, she tried to drive a ball that was not there to be driven. After 8 overs, it's 21 without loss. Change in commentary. Savera Pasha and Danish Naeem Abbasi. Danish, खुश आमदीद एक दफ़ा फिर से. थैंक यू सो मच. एक हैवी लंच के बाद. हैवी आपको लग रहा होगा, हैवी ऐसा ऐसा था नहीं, बट यस लंच के बाद आवाज़ों में दम आपको ज़्यादा दिखेगा शायद. और 8 ओवर्स अब तक जो है वो डाले जा चुके हैं. 8 ओवर्स बाद जो परफॉर्मेंस अभी ब्लास्टर्स की रही, काफ़ी स्लो खेल रहे हैं. आलिया रियाज अब आई हैं बॉलिंग करने के लिए. लिस्ट ए करियर, बड़ी कोई सीजन प्लेयर हैं ये. 89 मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं और अच्छी खासी विकेट्स हासिल की हुई हैं. आती पहली बॉल पे अच्छी तरीके से ड्राइव किया है और फील्डर के लिए लगता है ये है कि पहुंचना मुश्किल होगा और 4 रन मिल गए. तो अच्छी टाइमिंग ये देखते हुए कि आउटसाइड द वेस्टर्न गेंद थी और उसको से ड्राइव किया और पहुंचा दिया 4 रन के लिए. और आते हुए स्कोर जो है वो इस ओवर में बढ़ के 25 पे पहुंच चुका है. 2 सीनियर प्लेयर्स एक दूसरे के आमने सामने. एक तरफ है आलिया तो दूसरी तरफ है नाहिदा. नाहिदा इज़ अ वेरी वेरी सीनियर प्लेयर जो कि बहुत अरसे से आपको पाकिस्तान क्रिकेट के सर्किट में दिखती हैं. 2009 में इन्होंने डेब्यू किया था दानिश. छोटा सा था मैं जब. नाहिदा खुद भी छोटी सी थी तब. तो जिस तरह से आगाज ब्लास्टर्स ने किया है, डायनामाइट्स को हम कह रहे थे कि थोड़ा सा स्लो स्टार्ट है. हालांकि पावर प्ले में उनके 44 रन से 9 ओवर्स के बाद और इनके 25 हैं और पावर प्ले का आखिरी ओवर है. ओवरऑल जिस तरह से हम बात कर रहे थे सबीरा के फर्स्ट इनिंग्स में डायनामाइट जो थी वो स्ट्राइक को रोटेट कम कर रहे थे, बाउंड्रीज की तरफ इतने नहीं जा रहे थे. यही वजह है कि हमने जो डॉट बॉल्स थी बहुत ज़्यादा देखी थी. तो ब्लास्टर्स भी कुछ उसी तरह उसी ट्रैक पे हमें नज़र आ रहे हैं अभी तक. बिल्कुल माइंडसेट सिमिलर लग रहा है दोनों टीम्स का कि विकेट्स ना गंवाएं अर्ली ऑन और लेटर दी इनिंग्स चार्ज करें. एक और इजी सिंगल और शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि टारगेट बहुत बड़ा नहीं. इनकी तो चने समझ में भी आती जैसे फैब ये कि 187 का टारगेट है तो बहुत ज़्यादा कोई जल्दी नहीं करना चाहते, पैनिक नहीं होना चाहते, आराम से इस टारगेट तक शायद जाना चाहते हैं. यही वजह है कि बहुत ज़्यादा हम नहीं देख रहे हैं कि इनकी तरफ से बाउंड्रीज का सिलसिला शुरू हुआ. बट जल्दी यहाँ पे डायनामाइट्स को करनी पड़ेगी. डायनामाइट्स को विकेट निकालनी पड़ेंगी. टारगेट इतना नहीं है. जी हाँ, डायनामाइट्स के लिए एक ही चीज़ है कि विकेट्स यहाँ पर हासिल करेंगे तो मैच जीत सकते हैं. अदरवाइज स्कोर कोई बहुत बड़ा इनके पास है नहीं, या फिर किसी तरह सस्टेन करें और विकेट्स हासिल करने का प्रेशर डालें डॉट बॉल्स का. आखिरी बॉल बाकी यहाँ आलिया के लिए. अभी तक 6 रन आए हैं इस ओवर में. अभी तक 6 रन आए हैं इस ओवर में. वेरी गुड फील्डिंग डिस्प्ले. बहुत अच्छी फील्डिंग हो रही है डायनामाइट्स की तरफ से. यही डायनामाइट्स को बचा सकेगी. अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग, यही इस छोटे से टारगेट को डिफेंड करने के लिए काम आएगी. और यहाँ पावर प्ले का हुआ इख्तिताम. 9 ओवर्स का इख्तिताम, 27 फॉर नन.
अभी तक ये हाल अहवाल है ब्लास्टर्स का। मुनीबा अली और सदफ शम्स दोनों मौजूद हैं। इस वक्त क्रीज पे फिरोजा मौजूद हैं, गुल फिरोजा और नाहिदा मौजूद हैं। महम जिन्होंने 4 ओवर्स में 16 रन दिए, साथ साथ हमना बिलाल ने भी 4 ओवर में 4 रन दिए, और आलिया रियाज ने अभी अभी अपना पावर प्ले का जो ओवर किया उसमें लास्ट ओवर था 6 रन दिए हैं। कोई भी बॉलर अब तक विकेट हासिल नहीं कर सका है। तो 3 रन पर ओवर की रफ्तार से बैटिंग की है यहाँ पर ब्लास्टर्स ने, जबकि दूसरी तरफ इसी पावर प्ले में बैटिंग की थी डायनामाइट्स ने ऑलमोस्ट 5 रन पर ओवर से। लेकिन बुनियादी फ़र्क यह है कि जो टारगेट चेस की तरफ जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कोई बड़ा नहीं, वो 187 का है। लेकिन याद रहे कि ये 45 ओवर का मैच है, इट्स अ 45 ओवर्स मैच। दानिश, ब्लास्टर्स को यही एडवांटेज है, उनको पता है कि किस तरह इनिंग बिल्ड करनी है, उनके सामने एक टारगेट है। फुल टॉस करवाई यहाँ पे। क्या ये जानते हैं कि हमने जो टारगेट चेस करना है तो उसको देखते हुए मोहतात अंदाज अब तक अपनाया इन दोनों बैटर्स ने। फील्डिंग यहाँ पर जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, और इसका फ़ायदा उठाया कि जो सिंगल नहीं था वो हासिल किया। फील्डिंग में ये लैप्सेस बाद में गले पड़ सकते हैं डायनामाइट्स को, बिकॉज ये मार्जिन आप नहीं दे सकते ब्लास्टर्स को। टारगेट इतना बड़ा नहीं है, हम बार बार इस बात पे इसलिए एम्फोसाइज कर रहे हैं बिकॉज सिर्फ 187 रन्स का टारगेट है यहाँ पे ब्लास्टर्स के लिए। हमने बड़ी उम्दा बॉलिंग की है, अपना 5वां ओवर कर रही हैं और सिर्फ 5 रन इन्होंने दिए हैं। कोशिश कर रहे हैं ब्लास्टर्स के यहाँ पर जो सिंगल्स हैं वो हासिल कर लें आहिस्ती के साथ खेलकर, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर डायनामाइट्स की फील्डिंग है वो इजाज़त नहीं दे रही है। सो आलिया रियाज को भी हम देखते हैं जब बैटिंग करने के लिए आई थी, जो सिंगल्स नहीं बन पा रहे थे उस वक्त डायनामाइट्स के, तो उस वक्त आलिया रियाज ने वो सिंगल्स जो थे वो हासिल करना शुरू किए थे, बॉलर से प्रेशर डाला। तो अगर इसी तरह यहाँ पर सिंगल्स हासिल होते हैं, प्रेशर बढ़ता है, तो अच्छा हो सकता है ब्लास्टर्स के लिए। दानिश, यहाँ पे देखना पड़ेगा, नाहिदा के लिए भी बहुत एक मेजर अपॉर्चुनिटी है ये, बिकॉज अगर मैं रीसेंट पास की बात करूँ, नाहिदा वैसे तो टीम पाकिस्तान का एक रेगुलर हिस्सा है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नाहिदा टीम पाकिस्तान के लिए खेली थी, मगर उसके बाद वहाँ क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई थी, जब वेस्ट इंडीज़ गई तो वेस्ट इंडीज़ ए के खिलाफ खेली है पाकिस्तान ए की तरफ से, बिकॉज इनको अपनी फॉर्म वापस लेकर आनी थी। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मौका है नाहिदा के लिए कि यहाँ आएँ और अपना मेटल शो करें। और डॉट बॉल, याद रहे कि डायनामाइट्स कि जिसने आज पहले टॉस जीता था और टॉस जीतकर ओवरकास्ट कंडीशन में रात भर की बारिश के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और 187 का टारगेट सेट किया गया यहाँ पे ब्लास्टर्स के लिए। चार टीम्स हिस्सा ले रही हैं इस पाकिस्तान विमेंस वनडे कप में। इससे पहले इनकी तादाद 3 होती थी, लेकिन इस साल से इसको बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। और ना सिर्फ ये बल्कि डोमेस्टिक की अगर हम बात करते हैं, ख़ासतौर पे विमेंस सर्किट की, तो जो नेशनल T20 कप होगा उसमें भी यही 4 टीम्स हम देखेंगे जो हमें नज़र आएंगी। सो ये है आपके सामने ब्लास्टर्स का हाल व अहवाल। नाहिदा और गुल फिरोज़ा इस वक्त मौजूद हैं, दोनों ओपनर्स ब्लास्टर्स की मौजूद हैं। 14 रन्स दोनों ने बनाए हैं, बट नाहिदा ने 30 बॉलें फेस की और गुल फिरोज़ा ने 29 बॉल्स।
बाहर बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, यकीनी तौर पे वाइड बॉल ही होनी चाहिए थी। एक ओवर में आलिया ने जो पहला ओवर किया था, जो कि इनफैक्ट पावर प्ले का आखिरी ओवर था, उसमें इन्होंने 6 रन दिए थे। आज बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया, अपनी शानदार हाफ सेंचुरी भी इन्होंने बनाई। बिल्कुल, और आलिया जितनी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, यंगस्टर्स के लिए एक एग्जाम्पल हैं। और इस तरह की जब आप एग्जाम्पल बन के बॉलिंग कर रही होती हैं, बैटिंग कर रही होती हैं, तो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि एक्स्ट्राज ना दिए जाएं, बिकॉज यंगस्टर्स लुक अप टू यू। यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं कि आप कैसा खेल रही हैं, आप कैसी बॉलिंग कर रही हैं। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है फिर। जी हाँ, सीनियर्स में हमने देखा कि आज इसी तरह निदा डार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 22 रन देकर 2 विकेट हासिल की, और जिस तरह से बॉलिंग उनका खासा रही है, ना सिर्फ सस्टेन किया बल्कि विकेटें हासिल करने में भी कामयाब रही दो। वेरी गुड बॉलिंग बाय आलिया रियाज। मौका नहीं दे रही हैं कि गुलफरोजा हिट आउट कर सकें। सो बड़ा अच्छा कंटेन कर रहा है निदा डार ने, और यहाँ पर आलिया जो कि अपना दूसरा ओवर कर रही हैं, अब तक 8 रन दे चुकी हैं, कोई विकेट हासिल नहीं किया आलिया ने। वेरी गुड शॉट बाय गुलफिरोजा, मगर उतनी ही अच्छी फील्डिंग करने की कोशिश की थी माहम ने, मगर कोई बैकअप नहीं था पीछे। सिंगल्स इस तरह के अगर बनेंगे सवेरा, तो फिर अच्छा रहेगा ब्लास्टर्स के लिए, क्योंकि इस तरह के सिंगल्स जो हैं वो ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर डालते हैं। अगर आपने फील्डिंग क्लोज भी रखी है, तब भी अगर ऐसे सिंगल्स जाएंगे तो फिर इन प्रेशर की वजह से बॉलर जो है कहीं ना कहीं हम देखते हैं गलती करता है। एक और वाइड आलिया की तरफ से। आलिया को अपनी बॉलिंग में डिसिप्लिन लेकर आना होगा। बहुत ज़रूरी है कि डिसिप्लिन बॉलिंग करवाएं वो यहाँ पे, बिकॉज सीनियर्स को ये मार्जिन नहीं मिलता कि वो एक्स्ट्रास दें ज़्यादा। अच्छी कोशिश अपने बाएं जाने गिर के गेंद को रोकना चाहा, लेकिन बॉल की रफ्तार को कम ज़रूर किया, और 1 रन यहाँ पर बन गया इस दौरान में। शहर कराची का मौसम के जहाँ पर हम देखते हैं कि कल रात बारिश हुई, और अब मौसम जो है कभी कभी अचानक हवा चलती है और फिर कभी कभी हब्स हो जाता है। सो आखिरी बॉल बाकी है इस ओवर की, और अगर मैं बात करूं, अब तक 11 ओवर फेंके जा चुके हैं, आखिरी बॉल रह गई है 11वें ओवर की। ये भी बहुत ज़्यादा आउटसाइड द ऑफ स्टंप की थी गेंद, और उसको बहरहाल लकी रही कि खेलने के लिए चली गई, वरना वाइड बॉल ये भी हो सकती थी। बहरहाल 11 ओवर्स मुकम्मल, 36 रन हैं, और 36 रन पर कोई विकेट यहाँ पर नहीं गिरी है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से अब तक बॉलिंग की है यहाँ पर, ख़ासतौर पे आलिया शायद अपनी बॉलिंग से इतना ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आती हैं, और मुतमईन दानिश नज़र भी नहीं आना चाहिए। जिस तरह मैं बार बार बात कर रही हूँ, सीनियर्स को ये मार्जिन नहीं मिलता कि एक्स्ट्रास दे सकें। इस वक्त आपने कहा 36 रन हो चुके हैं, मगर इस 36 में से जो 15 रन हैं वो एक्स्ट्रा के हैं। सो एक्स्ट्रास के अगर 15 रन हैं, तो आप देख लें कि ऑल टुगेदर ब्लास्टर्स ने अभी तक रन बनाए कितने हैं। वाओ 15 रन्स, माय गुडनेस। सो बहरहाल यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बॉलिंग है, जिस तरह आप कहेंगे, डिसिप्लिन लाना होगा अपनी डायनामाइट्स को, अदरवाइज टारगेट इतना बड़ा नहीं है कि इतनी गलतियां जो हैं वो हों। डायनामाइट्स के बॉलर्स को डायनामाइट्स के लिए खेलना पड़ेगा। अभी 15 रन तो डायनामाइट्स के बॉलर्स ने एडअप किए हैं ब्लास्टर्स के स्कोर्स के लिए, तो ब्लास्टर्स की तरफ से खेलती हुई दिख रही है ये डायनामाइट्स की बॉलर्स।
हमना ने बड़ी अच्छी बॉलिंग का अब तक मुजाहरा किया है। काफ़ी जान मारती हुई दिख रही हैं हमना यहाँ पे और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही हैं। अब तक 5 ओवर कर चुकी हैं, ये छठा ओवर हमना का शुरू हुआ है और अभी तक सिर्फ 6 रन्स दिए हैं। जो इनकी जो लाइन और लेंथ है ना, सिर्फ उस पर हम देख रहे हैं कि बैटर जो है वो चार्ज नहीं कर पा रहा है। इवन जो सिंगल्स और डबल्स हैं वो भी निकालना बड़े मुश्किल नज़र आते हैं, जिस तरह से इन्होंने अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन किया है। ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू फील्ड इन्होंने बॉलिंग की अब तक। जो आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदें की हैं, ऑफ साइड पे फील्ड लेके रखी, वही प्लान लेकर इन्होंने गेंदें की हैं और यही वजह है कि हमने देखा कि इन्होंने कंटेन भी किया अब तक। दानिश, जैसे ही मैंने रन्स देखे हमना के तो मैंने अपने स्टैटिशियन से ये पूछा कि मेडन कितने हैं इसमें, तो बड़े मज़े का स्टैट है हमना से रिलेटेड। हर ओवर में 1 से मैक्सिमम 2 रन्स इन्होंने दिए हैं। मेडन कोई भी नहीं है अभी तक इनके इन 6 ओवर्स में। 1 से 2 रन्स दे के उसके बाद फिर ये बाकी और डॉट्स करवा रही हैं, विच मीन्स प्रेशर ज़रूर बिल्ड कर रही हैं। बट अब इस प्रेशर बिल्ड करने के बाद मेरा ख्याल से नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि विकेट निकाली जाए। जी ऑलमोस्ट हर ओवर में एक ओवर ऐसा था जिसमें 2 रन्स बने। बिल्कुल आपने सही कहा, प्रेशर इन्होंने ना सिर्फ बढ़ाया बल्कि मुश्किलात पैदा की हैं। सिंगल यहाँ पर हासिल किया है और इस तरह के सिंगल्स यकीनी तौर पर परेशान कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल जितनी दाद दी जाए हमना की बॉलिंग की कम होगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो रन्स हैं वो रोके हैं। विकेट नहीं ली, लेकिन फिर भी जो टारगेट है 187 का, उसके लिए विकेट कहीं ना कहीं जब आप इस तरह का प्रेशर देते हैं बैटर को तो आपको मिल जाती है। बड़ी उम्दा बॉलिंग का अब तक मुजाहरा किया। अनदर गुड बॉल बाय हमना। और अब जब ऑलमोस्ट 12 ओवर्स हो चुके हैं, इट्स हाई टाइम कि कोई ना कोई विकेट ज़रूर चाहिए डायनामाइट्स को। नहीं सेट होने दें, नहीं पार्टनरशिप बनने दें। नाहिदा एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। गुल फिरोज़ा भी, अभी रिसेंटली हमने T20 टूर्नामेंट में गुल फिरोज़ा को देखा, एंड गुल फिरोज़ा वाज ब्रिलियंट इन दैट। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही गुल फिरोज़ा की। गुलफरोजा जिन्होंने 17 रन बना लिए हैं, इसके साथ एक और मुकम्मल हुआ 12 ओवर्स के बाद। 39, कोई आउट नहीं ब्लास्टर्स का। तो ये ब्लास्टर्स का बैटिंग कार्ड इस वक्त। नाहिदा और गुलफरोजा दोनों क्रीज पे मौजूद हैं। नाहिदा विद 19 रन्स एंड गुलफरोजा विद 17 रन्स। उमामा सोहेल का नंबर मुझे थोड़ा नीचे नज़र आ रहा है। आई थिंक मे बी के इनको ऊपर ही भेजा जाए, जो इनको सूट करता है, क्योंकि इनकी जो फॉर्म हमने देखी है वेस्ट इंडीज़ में वो बड़ी कमाल की नज़र आई थी। उमामा सोहेल के जिन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था। बॉलिंग भी ज़रूर इन्होंने की थी, विकेट्स इनको नहीं मिली थी, लेकिन बड़ी अच्छी बैटर हैं जिनको ब्लास्टर्स को खिदमात हासिल है उनकी। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ड्राइव और इजी सिंगल। ब्लास्टर्स ऑलमोस्ट अपने 13th ओवर में 40 के मार्क पे पहुंची हैं और पावर प्ले में इससे ज़्यादा रन्स कर चुकी थी डायनामाइट्स। किस्मत की धनी रही हैं, इनसाइड एज हुआ और बाल बची है यहाँ पर कि जो बॉल थी वो स्टंप्स को छू के नहीं गई है।
खुद भी मुस्कुरा रही हैं, अपनी किस्मत पे नाज कर रही होंगी कि जिस तरह से ये बच गई हैं, और आलिया बहरहाल इस पे खुश नजर नहीं आती हैं। ओह माय गुडनेस, कोशिश जरूर की अपने दाएं जानिब गिर के, लेकिन मुश्किल हो गया था। बहरहाल जिस तरह के चांसेस यहाँ पर बैक टू बैक मिले हैं दोनों बैटर को, आलिया कमबैक अच्छा किया है लेकिन अनलकी। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, बहुत दूर था। आलिया ने कोशिश पूरी की बट ऑब्वियसली कैरी नहीं हो सका बिकॉज इट वाज प्रीटी फार। तो 187 का जो टारगेट चेस करना है, 3.24 का करंट रन रेट है जिस रफ्तार से तक बैटिंग की। वेरी गुड बॉल बाय आलिया, मगर इवेंचुअली वाइड का इशारा यहाँ पे आया है, मगर चैलेंज कर रही हैं आलिया, मुसलसल चैलेंज कर रही हैं। शी इज आस्किंग क्वेश्चंस, नाहिदा को डिस्टर्ब कर रही हैं, गुल फिरोजा को डिस्टर्ब कर रही हैं। जी हाँ, लेंथ अच्छी थी, थोड़ा सा लाइन जो थी वो लेग स्टंप से बाहर हो गई। अगर इसको आउटसाइड द ऑफ स्टंप रखें या फिर मिडिल स्टंप पे लेकर आए तो अच्छा हो सकता है इनके लिए। जब डायनामाइट्स बैटिंग कर रही थी और ब्लास्टर्स की फील्डिंग थी तो हम देख रहे थे विकेटों के पीछे सिदरा ने बड़ा हम रोल प्ले किया था। मुसलसल हम देख रहे थे कि बैकअप कर रही थी, और इस वक्त जब ब्लास्टर्स की टीम बैटिंग कर रही है तो खामोशी नज़र आती है और बिल्कुल भी हम ये देख रहे हैं कि कोई शोर शराबा नहीं है। बिल्कुल कंपैरेटिवली अगर सोहा को कहें तो सोहा इज़ अ वेरी क्वाइट विकेट कीपर। फिज़ा यहाँ मौजूद हैं, फिज़ा मैनेजर हैं गालिबन ब्लास्टर्स की। सो 13 ओवर्स का इख्तिताम, 43 फॉर नन, टाइम फॉर ड्रिंक्स। सो फन फैक्ट, पाकिस्तान कप वुमेन्स वनडे टूर्नामेंट का ये फन फैक्ट आपके सामने। द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन पाकिस्तान वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सिस्टर शाइजा खान एंड शारमीन इन 1996. Shaiza went on to become the first captain of Pakistan women's team, captaining Pakistan in 3 tests and 40 ODIs. टेस्ट मैचेस की अब बात करें तो हमें वुमेन क्रिकेट में रेयरली टेस्ट मैचेस दिखते हैं। अभी रिसेंटली टीम इंडिया ने टीम इंग्लैंड से एक टेस्ट मैच खेला था, और आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक टेस्ट मैच होने वाला है। बट ऑल टुगेदर अगर मैं पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की बात करूं तो बहुत अरसा हो गया हमें टेस्ट मैचेस देखे। जी हाँ, बिल्कुल इन दोनों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू करने के लिए। और उस ज़माने में क्योंकि सहूलियात इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो लिहाजा खुद पिक एंड ड्रॉप करना, प्लेयर को ग्राउंड तक लेकर आना एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इनका पाकिस्तान में क्रिकेट को शुरू करने के लिए, जो विमेंस क्रिकेट है। एग्जैक्टली इन दोनों बहनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। और दानिश, अगर मैं वो टाइम याद करती हूँ तो उस टाइम से लेके अब जब मैं कंपेयर करती हूँ, इन लड़कियों के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं उस टाइम के मुकाबले में। इस वक्त अगर मैं देखूँ तो इन लड़कियों के पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि अब इनके पास कोई रीज़न नहीं है परफॉर्म ना करने की। परफॉर्मेंस करना ज़रूरी है बिकॉज इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। ये अब जब इंटरनेशनल ट्रैवल्स करती हैं तो इनको बिजनेस क्लास ट्रैवलिंग मिलती है। ये जब अब इंटरनेशनली मूव आउट करती हैं तो इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, अच्छी अकोमोडेशन मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस हो गए लड़कियों के। बिल्कुल सही कहा आपने। इवन हमारे साथ कमेंट्री टीम में मौजूद हैं मरीना। इवन मरीना ने जब तक क्रिकेट खेली उस वक्त भी इतनी ज़्यादा सहूलियात नहीं थी,
मरीना इकबाल जो था हम देखते जब वो खेलती थी या उनकी साथी, तो इनका दौर भी कोई इतना पुराना नहीं, लेकिन उस वक्त भी इतनी ज़्यादा शायद सहूलियात मौजूद नहीं थी और कॉन्ट्रैक्ट कह लें आप या दूसरे बेनिफिट्स। लेकिन अब जितना हम देख रहे हैं कि क्रिकेट में ख़ासतौर पे विमेंस क्रिकेट में ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं बल्कि इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो एक बहुत अच्छा साइन है कि अब हम देख रहे हैं कि जो पैसा है वो यहाँ पर भी हर एक के लिए ज़रूरी है, विमेंस के लिए भी मौजूद है। बिल्कुल दानिश, और इसीलिए ज़रूरी था कि जो एक्स वुमेन क्रिकेटर्स हैं वो सेटअप का हिस्सा बने, वो प्रॉपरली एम्पथाइज कर सकती हैं इन लड़कियों से कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको क्या क्या इश्यूज होते हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं हेड ऑफ वुमेन विंग इस वक्त उरूज मुमताज़ हैं, चीफ सिलेक्टर भी हैं उरूज मुमताज़ खान, 7 सिलेक्टर हैं अस्माविया। सो इन लोगों को ये बता सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये सोच सकते हैं किन किन प्रॉब्लम से गुजरती हैं वुमेन क्रिकेटर्स, और इसलिए आपको ये सारे चेंजेस दिख रहे हैं। ये यही टाइम फ्रेम है, ये यही एरा है, ये यही जोन है जिसमें ये सारे चेंजेस दिखे हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ दिखी हैं इन लड़कियों के लिए। एंड देन अ फॉरेन कोच जो कि अभी इस वक्त डेविड हेम्प मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के साथ, वो भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। जी हाँ, भरपूर कोचिंग स्टाफ मौजूद है। फैसिलिटीज़ के साथ साथ अच्छी मैनेजमेंट भी मौजूद है कोचिंग स्टाफ की सूरत में। अच्छा गेंद ब्रेक हुआ एक बार फिर, और इस पिच पे अगर आप देखें तो नज़र आता है कि जो ब्रेक है वो मौजूद है, और फातिमा जहरा को भी हम देख रहे हैं कि इन्होंने भी बड़ा अच्छा ब्रेक किया इस गेंद को, और एक बाउंस भी नज़र आया। और जहां मैं इस वक्त सिस्टम फैसिलिटी सेटअप के, वेरी गुड बॉल फातिमा जहरा की तरफ से। और दानिश, जहां मैं सिस्टम सेटअप की बात कर रही थी, बेहतरी की बात कर रही थी, वहाँ आप देख रहे हैं कि अब लड़कियों के मैचेस ब्रॉडकास्ट भी होते हैं, लाइव स्ट्रीम भी होते हैं। वंडरफुल बॉलिंग बाय फातिमा, प्रॉपर यूटिलाइज कर रही हैं इन कंडीशंस को यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ से कि लड़कियों को पता है कि ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं मैचेस। ये देखते हुए कि गैप मौजूद था, स्वीप किया, और जब तक फील्डर आएंगी 2 रन यहाँ पर बन जाएंगे आसानी के साथ। जी हाँ, बिल्कुल इससे फ़र्क पड़ता है कि जब आपको ये बात पता है, और अब तो सबसे बड़ी बात कि आप लाइव स्ट्रीमिंग पे मौजूद हैं और आप फ़ौरन घर जाके अपने होटल जाके अपनी गलतियाँ भी देख सकते हैं। अब किसी हाइलाइट्स का वेट नहीं करना आपने। एग्जैक्टली अपनी परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को खुद एनालाइज कर सकते हैं, उसमें बेहतरी ला सकते हैं। वेरी गुड बॉलिंग, नाहिदा को रोक के रखा हुआ है फातिमा ने यहाँ पे। दो के नाहिदा बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, फातिमा इज़ अ न्यूबी, इतनी एक्सपीरियंस नहीं है जितनी एक्सपीरियंस नाहिदा हैं, बट फिर भी रोक के रखा हुआ है। 14 ओवर्स का हुआ यहाँ पे इख्तिताम, 47 फॉर नन ब्लास्टर्स। कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली, मरीना और अहमर ज्वाइन इन करेंगे। Blasters are 47 for no loss. Well, the run rate is climbing. That is a concerning part for Blasters. Dynamites will be happy. They haven't been successful in taking wickets, but they're containing the runs. Yes, they have done pretty well so far.
exactly what the plan was. Bowling good lines, good lengths. Straight up, is there a chance? No, falls safely. Wanted a double, but neither has been sent back by Gulfiroza. Nashra Sandhu, she'll play an important part. We've seen some spin off the wicket, and she has the ability to provide breakthroughs. And yes, and if she manages to provide that breakthrough, you can imagine what sort of pressure the Blasters will get. Swept is Apesh, but will again fall safely. Naida Khan now taking the attacking approach. She likes to sweep the ball. She likes to take on the spinners. Because you see, as we discussed in the first innings as well, when you're playing so many dot balls, game is not going forward. Now from here, the scorecard is looking good because Down the ground will be another single. And that brings up the 50 for Blasters. Slow and steady probably wins the race. We'll have to see that at the end. But right now, Naida and Gulfiroza are out there. 50-run partnership for them. Oh, that was swept again. Probably got some bat on it. We'll be looking for 2 easy double. it's much better cricket from Blasters now. They're going for those singles, doubles, most probably putting pressure on the main bowler of Dynamites, which is actually a good ploy if it works. Driven straight to the fielder. If you talk about bowling from Dynamites, they have been really disciplined. They're hitting the right areas, unable to pick up a wicket, but they managed to just make sure that run rate keeps up climbing for Blasters. Driven again, and that's through. There'll be a chase for fielder, but for no use. That's a brilliant shot through the covers by Naida Khan. Overpitched, and she utilized it for 4 runs. That was a beautiful shot. Inside out, really. See the ball on the middle stump. She made some room and drove it through covers. Not an easy shot to play. 15 overs gone, 56 for no loss. They need to shift the gears. They've got good batting lineup with Nidar Dar coming. Sidra Nawaz, he's a busy player. So there's no trouble for that, but the only trouble is the dot balls, which will result in climbing of the run rate. That's the story for Dynamites for now. The wicket column still empty. We've utilized 5 bowlers. Omna Bilal has been exceptional. 6 overs for 9 runs. Another youngster taking responsibility. That's Fatma Khan now. Another easy single. That's a good thing. If anything is pitched up, they're going after it. But Naida Khan, she's the senior one, playing a crucial role in this chase. She needs to shift gear, probably take 1 or 2 chances. Moved across, managed to get bat on it. There'll be another single. Aham Tariq at the boundary. Well, runs are coming at good pace now. Current run rate is 3.78 and the required run rate is 4.35. So a bit of catching up to do for the Blasters. Pulled away. They've got protection there. Again, we've seen that loose balls, loose deliveries,
half-trackers are not being punished as they should be. Way outside off stump. She tried to fetch it to place in a gap for 4 runs. Not a conventional shot, but that'll do it for Naida. Well, she is gaining confidence now. Naida has been on the wicket for quite some time. That one way outside off stump and dragged to mid-wicket literally, and pretty good shot that in the end. Saw that gap. Swept away straight to the fielder. She likes to sweep. She likes to move into the crease for spinners. That's one of her strengths. Fatma Khan now last ball. She needs to finish good. Already conceded boundary. Dot ball to end the over. 16 overs gone. Blasters are 63 without loss. Well, it has been much better in the last couple of overs. 9 runs in the first over from the left armour, and then 7 runs in this previous over. Blasters need to continue that momentum now, and it doesn't seem to be a difficult task really. You just need to maneuver the ball in the gaps, get those 4s every now and then whenever the opportunity is there, and that is about it. They don't have to do anything extraordinary, nothing which will get them into trouble. Very easily they can maintain that run rate of 5 runs and over, or sorry, 4+ runs and over. Top edge, fallen safe. Going back into the crease and playing off the back foot it's a crucial decision, a dangerous one against the left armour. Yet again, this time some spin from Nashra Sandhu. Well, I'd like to see some attacking fields, some catching positions. After all, she is the main bowler. Slogged, but will be a single. Got the fielders on the right area. She is the bowler actually who's expected to get the breakthroughs, the wickets. But well, I would like to see her bowl with a slip at least. She'll keep doing that. Sweep shot is one of her strengths against spinners. And an easy single again for Naida. As we've been talking about how important Nashra would be. They need wicket. They need to take wickets if they want to defend this total, because the Blasters got good batting lineup. But right now, no single there. Right now, it seems like the Dynamites are on the top of the game. Well, Nashra so far has bowled a bit quicker. The trajectory is very low. Quick single. These are the singles they need to be taking. They need to rotate a strike. And that brings the over to an end. 17 gone. Blasters are 66 without loss. I would like my strike bowler to flight the ball a bit more. Try to get that turn out of that wicket, or try to make the batsman play a false shot, and that would only be possible once the batsman is on the front foot.
when he's trying to hit a shot, or at least when he's trying to play positively. Once you bowl with that trajectory, that low trajectory, that quicker ball, the batsman gets on the back foot, you don't get that turn, and once he's on the back foot, the options of getting him out go down. So for me, so far, she's not bowling to get a wicket. Oh, good ball, yeah. Fatma continues with the dot ball. Got a long on and a deep square leg in position. Well, they need to do something different, the Blasters. They cannot play along with the bowler's plan. They have to do different. They have to attack. Full toss. Just for the single. And the trend continues. Good single down the ground. That's experience for you. That's a rare thing we've seen today. Batters just going down the ground, rotating strike, and it's important for Blasters. Nahida now on 38. Is looking comfortable now. She's looking. She's looking much more comfortable. She's playing her shots now. Played a couple of very beautiful shots, in fact. Would be nice to see her back in form. Apesh, but will land safely. Another single. Mohammad Tariq just patrolling that deep square leg boundary. Firoza seems like now attacking the bowlers, just trying to fetch outside off stump, dragging on to the leg side to get some runs. Again into the leg side, will be a single. 70 up at the end of 18th over. That's 71 in fact for the Blasters. Plenty of batting to come for Blasters. We've got Nidar in the dugout, Sidra Nawaz as well, Rana. No problems there. The only concern would be the rising run rate. And for Dynamites, they need to take wickets. A happy dugout. And change of bowling. We've got Ghulam Fatma, the leg spinner. She can turn it. We've got some variation in the pace. They need wickets. Can she deliver? Turn straight away. That's what you would like to see from a leg spinner. Good start. A brilliant start. Let's say flight, the spin, but no slip. Wanted a single. Good fielding by Inshira. They need wickets. They need attacking fielding. Probably Muniba should be thinking about it. Put the slip in, bring up a few fielders in, cut down that singles.
Tracked shot will be a single. They've got protection there. We've seen leg spinners dropping short, probably just first match of the tournament. Aroop Shah in the first innings and now Ghulam Fatma. You can expect that from a leg spinner. Swept. They're looking for two, pushing hard. And they will get 2 runs comfortably. It was placed beautifully between the two fielders at the boundary. Yes, leg spinners always have a license to bowl a few bad balls, provided that the rest of the balls they bowl are attacking and they're trying to take wickets on that ball. Naida sweeping again. Just picking up a single. Why is that license only for leg spinners? And still is it valid in the modern cricketing times? Yes, most probably it's because of the difficult art leg spin is. It's difficult to master really. No run there, hitting the good areas. Good over comes to end by Ghulam Fatma. Blasters 75 without loss. And also because most probably leg spinners or wrist spinners are usually attacking bowlers used by captains, especially in limited overs cricket, to get the wickets, even if they give away the runs. And that is why most probably we say that they have the license to bowl, because they're tossing it up, maybe bowling half volleys or something like that. So but yes, it's of course that depends on what sort of quality they have and are they good enough to get that turn, that bounce of the wicket and get the wickets for their team. Opening partnership still going strong for Blasters. Naida Khan and Gulfiroza out there. And that is a worrying sign for Dynamites. Nashra will continue. Well, the Dynamite skipper Muniba is waiting for things to happen, and so far in the 19 overs it hasn't happened. Even then she's not trying to do something different. Use of feet down the ground, and it's a misfield. Probably a hard chance, will reach to the boundary. Naida Khan now changing gears, moves on to 42, 46 probably. Well, visibly they are going after Nashra, as of course she is the main bowler for Dynamites, and they wouldn't want her to settle down with a line and length. Both the batters have played very positively against her so far. Swept, pushing for second, but it's not available. Maham Tarek, the fast bowler, she has a good arm. Yeah, it's one way to go about the opposition's arc bowler is to attack, and that's exactly what Naida's done. Well, apparently Muniba is looking to defend this total in the 45 overs available, which for me is quite impossible with all those wickets in hand. Drop shot, will pick up another single. Yeah, they cannot contain it, obviously. It's not a mammoth total. The only way they could have won it, they should have won, was to take wickets. But so far, unsuccessful, and as you were mentioning, she's waiting for things to happen. She's waiting for batters to make mistake rather than creating opportunities. No run there through the offside. Well, a main wicket taking bowler is most probably not bowling
to the plan, and if that is the plan, for me it's a wrong plan. Pushing for 2 runs. Clear call by Naida. They will pick up a comfortable double. Wrong line by Nashra Sandhu, just dragging down. Probably trying to avoid the sweep shot. But things are not working for Dynamites. Well, if Nashra Sandhu, the most experienced bowler, is trying to bowl to contain the batsman, there's something wrong with the plan, definitely. Gone upish, but in no man's land, and will bring up 50 for Naida Khan. She's been brilliant, she's been very calculated, out of form, but will be very happy after this achievement. Yes, a good innings, a good comeback innings really, back to form. Hopefully she'll be back in form now. This innings will give her confidence, and to get it in the first match of the tournament, it's even better. 20 overs gone, Blasters are 84 without loss. As we had discussed before, it's a very busy season for the Pakistan women's cricket team, and it's a very good sign for Nahida to be back in form. Pitched up, it's upish, but in the gap, and it will run away for 4 runs. Naida Khan now more confident after completing her half century. It was there to be hit, and she's put it away. And Nahida seems to be in a hurry now to go home, and that is what Marina was mentioning before when we were having lunch, that the players who have played for Pakistan, they should be doing something different on the field. They should look different. They should have a different approach. Edged. And again there will be a chase, but cut down, just a single. Well, now being an experienced player, Naida should be taking her team home, should play all the way through. That's a good sign, that also guiding the other batter. That was an attempt to sweep, but a good swing. Rather spin from Ghulam Fatma. That's what she does best, giving the air, getting some bounce and spin. And Gul Firoza was in no form to play that shot. Yes, the ball was a bit slower. She was through with the shot before the ball got to her. Straight up, is that a chance? And taken, Maham Tariq, an easy catch. And at last, Ghulam Fatma strikes. Gul Firoza is the one to go now. Finally a breakthrough for Dynamites. First wicket down for Blasters. Very well judged catch there by the fast bowler. And well, that was that's a much needed wicket. Flighting the ball, that is what I'd like to see more. There is no chance of them containing the Blasters from here. It has to be, they have to take wickets. Gul Firoza, 30 of 30 balls. A good opening stand with the experienced Nahida. Maima Suhail walking in, will join Naida Khan. That's the wicket, trying to force that shot, but nowhere near the pitch of the ball. Probably too little too late for Dynamites. We'll have to see that. Yes, most probably you're right, Marina, but I think in one-day cricket it's never too late. Anything can happen. A couple of wickets here might bring them back in the game, putting pressure on the
Blasters, and if they manage to get the prize scalp of Nahida at this stage, well, it could still be a good game. Yes, but Muniba, being the captain of Dynamite, she needs to capitalize on this opportunity. New batter coming in, Umaima Sohail. She's an attacking player, but that's where the difference will come. As you mentioned, 1 or 2 more wickets, quick wickets can turn around the game. And if someone has the ability, it's Ghulam Fatma who has the ball in the hand and has provided a breakthrough. No slip for the new batter. It was Naida Khan on the strike, rather. That's why probably. They need to attack. There's no other way for Dynamites to defend this total or win this game. There's the slip, captain herself. Adjusting the field, they need wickets. Off the back foot for no run. Well, that's much better for starts. A slip in, a short cover won't hurt at this point actually, because she is flighting the ball. Might the batter might just drive uppishly early on, and that is also an option. 21 overs gone, 90 for 1 Blasters. You need to have different tactics to put pressure on batters when they are really comfortable. You have to give the confidence to your bowlers and do something different tactically in the field that can apply some pressure to the batters. Otherwise, if you're waiting for them to make mistakes, then it's the whole wrong plan you've got. And with the new batter in, this is really the time to put pressure not only on the new batter but also on Nahida, who's in batting. Just to keep her off strike will put her under pressure now. Sweeping for 1. Have to do something different. There's no threat, apparent threat for neither. She's sweeping the ball and still no change of lines by Nashra Sandhu or off field by Muniba Siddiqui, the captain. That is not going to help them. Oh, good ball. Inside edge. Naima is also one brilliant prospect for Pakistan. She's been around Pakistan team. Been not in the form of her life, but she's got huge potential. Oh, good ball. Nashra with those lines, and of course she's bowling correct line, but I'm a bit concerned about the role she's playing. Through the offside, off the back foot by Umaima, but won't reach the boundary. They'll pick up 2 runs. Yes, from the ace bowler, you cannot expect her to go with a defensive plan, defensive mindset. You cannot expect her to go for the containing runs. You want wicket, that's why you give your ball to them. That's Apesh. Is that a chance? Yes, taken easily. And Nashra Sandhu finally strikes. Big wicket of Umaima Sohail is gone now. Yes, that was much better. Giving the ball a bit of air, making the batsman drive or playing a false shot. And that was a pretty well judged catch as well. So another breakthrough, which of course the Dynamites were looking for. Still, at this stage, they need a
a couple more wickets to put the Blasters in real pressure. A lot was expected of Umaima Sohail, but she'll have to take the walk back to the pavilion. Captain walks in. Sidra Nawaz has been brilliant in the first innings with her bowlers and captaincy. Now she has a role to play. Make sure she creates a partnership with Naida Khan and takes her team home. I'm sure the coaches and the staff will make a note of this dismissal, where these things need to be emphasized, that how batsmen or batters have to play in different situations. There was no need of this shot which she played, especially with Nahida at the crease and going well. Her role was to just rotate the strike, give it to Nahida. Swinging hard, the first ball, Sidra Nawaz. It was way outside off stump. You have to be very careful. Sidra Nawaz, the captain of the Blasters, is the new batter. It's 93 for 2 after 22 overs. Change in com box now. Savera Pasha and Danish will join you. शुक्रिया मरीना और एमर. सो इस दौरान जो रन्स हैं वो हासिल हुए 2. 95 पे स्कोर पहुंचा. 187 का टारगेट है जो कि चेस करना है, और इस टारगेट को चेस करने के लिए जो अपना स्ट्राइक रेट है उसको काफ़ी बेहतर किया है. रन रेट बेहतर नज़र आया हमें. इस मौके पर 85 for 2 स्कोर था डायनामाइट्स जब बैटिंग कर रही थी. Savira, welcome to commentary box once again. थैंक यू दानिश. गुलाम फातिमा काफ़ी फ्लाइट देती हुई ये बॉल की उन्होंने, और जिस तरह आप इस वक्त देख रहे हैं 95 for 2 है ब्लास्टर्स ने स्टार्ट ऑफ काफ़ी स्लो किया था. डायनामाइट से अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी स्लो स्टार्ट था. पावर प्ले में भी कम रन्स थे डायनामाइट्स के मुकाबले में, मगर अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है ब्लास्टर्स अपनी इनिंग्स को आगे बिल्ड करते जा रही है. 2 के 2 विकेटों का नुकसान हो गया है. जिस तरह डायनामाइट्स इस वक्त 85 for 2 थे, बट अब ब्लास्टर्स आर अहेड. सानी के साथ सिंगल. तो अब स्ट्राइक को रोटेट करने पे भरपूर तवज्जो नज़र आती है, और जो एक डॉट बॉल्स हम देख रहे थे खेली जा रही थी उनकी तादाद थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम ज़रूर हुई है. 2 सीनियर्स इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं. एक तरफ नाहिदा हैं तो दूसरी तरफ सिद्रा नवाज द कैप्टन ऑफ ब्लास्टर्स यहाँ मौजूद हैं. वेरी गुड फील्डिंग. एक दूसरे का बैकअप करती हुई दिख रही हैं ये प्लेयर्स. सो 133 बॉलें और इसमें जो रन्स चाहिए वो है 91 यानी कि 91. सवेरा, मुश्किल इक्वेशन है या सही है? दानिश सही इक्वेशन है. अभी जिस तरह मैं बात कर रही थी कि ब्लास्टर स्टार्टेड ऑफ स्लो, पर इवेंचुअली उन्होंने कवर अप कर लिया मार्जिन. वो जो मार्जिन था दोनों टीम्स के दरमियान उसको कवर अप करके अब आगे बढ़ गई हैं डायनामाइट से. तो मुझे लग रहा है कि अगर तो इसी तरह खेलती रही, और इस वक्त जो है 2 एक्सपीरियंस प्लेयर्स क्रीज में मौजूद हैं, अगर ये पार्टनरशिप अच्छी होती है तो यहाँ से ब्लास्टर्स को और आसानी हो जाएगी. 23 ओवर का हो गया अख्ताम. 96 for 2 ब्लास्टर्स. जी हाँ, विकेट्स हासिल करनी होंगी डायनामाइट्स को और रन्स यहाँ पर रोकने होंगे.
नशरा आउटसाइड ऑफ स्टंप कट किया है, फील्डर मौजूद थी, रन लिया तेजी के साथ, अच्छा सिंगल। दानिश, इससे पिछले स्पेल में जब हम कमेंट्री करने आए थे उस वक्त मुझे सोहा बड़ी खामोश लग रही थी, आपने भी ये मेंशन किया था, अब वो भी पम्प्ड अप लग रही हैं। अच्छा, मुझे लगता है उन्होंने शायद 20-22 ओवर्स के बाद सोचा था कि मैं कुछ बोलना शुरू करूंगी। Nashra Sandhu bowling right now. Nashra is a very, very good bowler. बैक टू बैक मजबूर किया है यहाँ पे सिद्रा को दिफाई अंदाज अपनाने के लिए। मे बी वो सिद्रा क्योंकि आई हैं तो शायद बदला ले रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा पीछे बोल रही थी, उन्होंने कहा कि इनके विकेटों के पीछे मैं भी काफ़ी ज़्यादा बोलूँ। जबरदस्त बॉलिंग नशरा की तरफ से। और नशरा की जब बात की जाए दानिश, तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ काफ़ी अच्छी नशरा की परफॉर्मेंस रही है। जो चौथा ओडीआई जो पाकिस्तान ने अपने नाम किया था, वहाँ नशरा ने भी 4 विकेटें हासिल की थी, फातिमा सना ने भी 4 विकेटें हासिल की थी। सो ये दोनों उस पिलर की तरह मौजूद थी वहाँ उस ओडीआई में, चौथे ओडीआई में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, जिन्होंने जीत दिलाई पाकिस्तान को। दिफाई अंदाज नाहिदा का एक बार फिर। अच्छा सिंगल पुश किया था लेकिन रनआउट यहाँ पर हो सकती है। अपील बड़ी जोरदार, लेकिन अंपायर ने अब तक जो इशारा है वो कहा कि नॉट आउट। सो मे बी एक अच्छा क्लोज यहाँ पे शायद मामला हो सकता था, लेकिन काफ़ी तेज़ी के साथ ये रन हासिल किया। बहुत अच्छी कोशिश फील्डिंग की भी हुई और बहुत अच्छी कोशिश रन्स की भी हुई और बहुत तेज़ी से रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पे की गई, वरना बहुत क्लोज था ये मामला। जी हाँ, कोशिश यही कर रहे हैं कि स्ट्राइक को रोटेट करें, सिंगल को ना छोड़ा जाए और प्रेशर जो है वो ऑपोजिशन के ऊपर डाला जाए। यही वजह था कि ये जो सिंगल हासिल किया था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन बहरहाल कामयाबी के साथ ये रन हासिल किया। सवेरे एक चीज़ तो क्लियर नज़र आती है कि शायद प्लान इनका ये था कि शुरू में जो ओपनिंग पेयर है उसको सेट किया जाए, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रन्स में इजाफा किया जाए। यही हिकमत अमली अभी तक हमने देखी है ब्लास्टर्स की। बिल्कुल, और मुझे लगता है यही जो प्लान है ये बहुत अच्छा है दानिश, वो इस वजह से क्योंकि इनके पास एक टारगेट है, इनको पता है कि इन्होंने किस पेस पे चलना है, इन्होंने क्या, इनका रिक्वायर्ड रन रेट क्या है, इन्होंने किस रन रेट को मेंटेन करना है। सो दे हैव अ प्लान सॉर्टेड आउट। गुड, सो अकॉर्डिंग टू प्लान जो है वो जा रहे हैं। वेरी गुड फील्डिंग एफर्ट यहाँ पे, और फील्डिंग इतनी अच्छी करके उसके बाद खुद टॉपल कर गई। नाहिदा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इनका अब तक, 3 से ट्रांसफर बैटिंग कर रही हैं। इस जगह पर तो कोई चांस नज़र नहीं आता सिंगल का, क्योंकि खुद मौजूद है यहाँ पे मुनीब। अभी तो जैसे ही यहाँ पर शॉट खेला जाता है सीधा फील्डर के पास पहुँचता है, डॉट बॉल होती है यहाँ पर। ये एरिया बड़ा मुश्किल है सिंगल के लिए। सो दानिश यहाँ 100 अप हो चुके हैं ब्लास्टर्स के लिए। कोशिश ज़रूर की थी और
जगह अपनी छोड़ दी थी, लेकिन जो कनेक्ट करना चाह रही थी वो कर नहीं सकी। Very good bowling display by Nashra. गुलाम फातिमा बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए हैं यहाँ पे। जी हाँ, बड़ा भरपूर ब्रेक यहाँ पर नज़र आया, चाहे ऑफ स्पिनर हो या फिर कोई लैगी। इस पिच पे बहरहाल हमने देखा कि ब्रेक ज़रूर मौजूद है। तो ओवर मुकम्मल हुआ, 25 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, 101 पर 2। पाकिस्तान कप वुमेन वनडे टूर्नामेंट 2021 आप ये देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग इसकी हो रही है। जी हाँ, 4:11 पाकिस्तान का म्यारी वक्त, लेकिन इस वक्त अमूमन हम देखते हैं कि धूप नज़र आती है, लेकिन धूप का नामो निशान नहीं शहर कराची में। बादल पूरी तरह से मौजूद हैं। इस बार स्लॉग सेव किया है और बिल्कुल बाउंड्री पर गिरकर इस गेंद को रोकने में कामयाब रही। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया, 2 रन यहाँ पर सिर्फ बने। वेरी गुड फील्डिंग डिस्प्ले बाय इंशरा। इंशरा ने बहुत अच्छे तरीके से ये 2 रन डेफिनेटली बचाए उन्होंने। 2 रन तो बने वहाँ पे, मगर 2 रन बचाए पे। जी ऐसे वक्तों में यकीनी तौर पे जो रन्स रोके जाते हैं उसका फ़ायदा हो सकता है। दानिश, यहाँ पे एक एक रन मैटर करता है डायनामाइट्स के लिए, बिकॉज 187 का टारगेट, ये छोटे छोटे, ये एक एक सिंगल डबल्स, ये रन्स, बाउंड्रीज, ये सब मैटर करेंगी जब बिल्कुल एंड पे एट द वायर ये गेम पहुंचेगा। तो एक रन लिया है, दूसरा रन भी लेना चाहती हैं और आसानी के साथ मुकम्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। और 2 रन हासिल किए बिल्कुल। और ये बात जानते हैं शायद डायनामाइट सवेरा के यहाँ पर अगर 1-2 विकेट्स मिल जाती हैं तो फिर डॉट बॉल का प्रेशर भी आ सकता है, तो ये मैच जीतना जो है वो उनके लिए भी उतना ही मुमकिन हो सकता है जितना ब्लास्टर्स के लिए है। हर टीम ये चाहती है कि किसी भी टूर्नामेंट की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पे करे, एक जीत के साथ करे। वेरी गुड बॉलिंग। नशरा मुसलसल तंग कर रही हैं, मुसलसल कहीं ना कहीं कभी सिद्रा को डिस्टर्ब कर रही हैं, कभी नाहिदा को डिस्टर्ब कर रही हैं। नाहिदा इस वक्त बहुत सेटल्ड लग रही हैं, सिद्रा थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए। ऑलमोस्ट जो करंट रन रेट है वो 4 से कुछ ऊपर का है। रिक्वायर्ड रन रेट भी कुछ इसके आसपास है, 4.28 का। छब्बीस ओवर्स के बाद 105 पे 2। सो एंड ऑफ ओवर 105 पे 2। एक बार फिर मिड विकेट की जाने बॉल, लेकिन एक ही रन यहाँ पर हासिल किया। सो ओवरऑल जिस तरह से इस वक्त फील्डिंग अगर हम आपको बताएं कि पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ मौजूद है। इनफैक्ट मिड ऑफ को पीछे करके रखा हुआ है। ये ऑफ साइड की फील्ड है जो कि लेके रखी है। ऑन साइड पे 2 फील्डर बिल्कुल बाउंड्री पर मौजूद हैं, स्क्वायर लेग और मिड विकेट। तो डॉट बॉल आपके ख्याल में सवेरा परेशान कर सकती हैं आगे जाके यहाँ पे ब्लास्टर्स को? बिल्कुल परेशानी, डॉट बॉल्स हमेशा परेशान करेंगी।
आपके ऊपर प्रेशर बनेगा, बैटर्स के ऊपर जब प्रेशर बनेगा सो वो ट्राई करेंगी कुछ और करने को और उसमें अपनी विकेट गंवा सकती हैं। जबरदस्त बॉलिंग फातिमा की तरफ से। एक तरफ से फातिमा, दूसरी तरफ से नशरा, ये दोनों मिलके बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही हैं इस वक्त ब्लास्टर्स के ऊपर और कहीं इर्द गिर्द दानिश ऐसा लग रहा है कि कोई विकेट आने वाली है। खुशबू आ गई आपको? डॉट बॉल्स पे डॉट बॉल्स, जाहिर सी बात है जब इतनी डॉट बॉल्स होंगी तो कहीं ना कहीं कोई गलती बैटर्स की तरफ से ज़रूर होगी और उस बैटर की गलती का फ़ायदा उठा सकती हैं डायनामाइट की बॉलर्स। एक और अच्छी बॉल और ब्रेक हमें बिल्कुल इस पिच पे नज़र आया है और अच्छा खासा ब्रेक हमने देखा है यहाँ पर। इससे पहले डायनामाइट जब बैटिंग कर रही थी तब भी और अब जब ब्लास्टर्स बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त भी, दोनों इनिंग्स में एक भरपूर ब्रेक स्पिनर्स के लिए मौजूद। सत्ताईसवें ओवर के अख्ताम पर 106 पे 2 ब्लास्टर्स। तो ये डायनामाइट्स का बॉलिंग कार्ड इस वक्त। माहम तारिक विकेट लेस रही हैं, सिर्फ 16 रन दिए हैं 4 ओवर करवा के। हमना ने 6 ओवर्स किए हैं, 9 रन दिए हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रही हैं बट अभी भी विकेट के कॉलम में 0 ही है उनका। आलिया रियाज 17 रन दिए 3 ओवर्स में। विकेट्स की अगर मैं बात करूं तो नशरा संधू ने 1 विकेट हासिल की है, गुलाम फातिमा ने दूसरी विकेट हासिल की है। हमना जिनके 3 ओवर्स बाकी हैं, 9 रन दिए हैं, बड़ी उम्दा बॉलिंग की है। विकेट इन्होंने हासिल नहीं की लेकिन जो रन्स हैं वो रोके हैं और बड़ा अहम रोल प्ले किया है अपनी बॉलिंग लाइनअप में। दानिश 27 ओवर्स के बाद अगर मैं डॉट बॉल्स की बात करूं सो हाँ जी, 27 ओवर्स के बाद अगर मैं डॉट बॉल्स की बात करूं तो डायनामाइट्स ने अब तक 105 डॉट बॉल्स नहीं खेली थी, इसका मतलब 105 डॉट बॉल्स थी उनकी और ब्लास्टर्स की 92 डॉट बॉल्स हैं। सो मुकाबला यहाँ पे भी चल रहा है ऐसा लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल दोनों का तकरीबन एक जैसा ही हाल है। कप्तान खुद आई हैं गेंद करने के लिए मुनीबा और चाहती हैं किसी तरह विकेट जो है वो मिल जाए। और नाहिदा की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बड़ी सेंसिबल बैटिंग कर रही हैं, विकेट पर मौजूद हैं और कोई गैर ज़रूरी शॉट नहीं खेल रही हैं। 106 गेंदों पे 80 रन चाहिए। बज़ाहिर हालात तो हैं वो मुश्किल होते जा रहे हैं थोड़े से और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ रहा है ब्लास्टर्स के लिए क्योंकि बाउंड्रीज हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम आती हुई नज़र आ रही हैं और स्ट्राइक रोटेट करने का जहाँ तक मामला है वो कदर डायनामाइट से थोड़ा सा बेहतर ज़रूर है लेकिन फिर भी इसको मज़ीद और बेहतर करना होगा। बहुत अच्छी बॉल मुनीबा की तरफ से। सिद्रा को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। जहां मैं डॉट बॉल्स की बात करी थी दानिश, अगर मैं कैलकुलेशन करती हूँ पूरी और ये देखती हूँ कि कितने एक्चुअल ओवर्स पे रन्स बनाए गए हैं सो ऑलमोस्ट 12 ओवर्स पे जो है वो ब्लास्टर ने ये रन्स बनाए हैं। सो इमेजिन हमें दिख तो यहाँ पे 28वां ओवर रहा है पर डॉट बॉल्स का रेशो बहुत ज़्यादा। शॉट खेलने के लिए गई थी लेकिन मैच हुआ और रन यहाँ पर हासिल हुआ। जी हाँ, इन डॉट बॉल का शायद एहसास शुरू में नहीं होता जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं लेकिन बाद में अगर आप चेस कर रहे हैं तो उस वक्त यकीनी तौर पर या फिर मैच खत्म होने के बाद याद आता है। और इस बार रन आउट हो सकती हैं लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत जल्दी अपनी क्रीज में आ गई वरना मामला बड़ा गंभीर हो सकता था। ऐसे मौकों पे डायरेक्ट हिट बहुत मैटर करती है। 19-20 का फर्क होता है, डायरेक्ट हिट बहुत मैटर करती है। यहाँ डायरेक्ट हिट होती तो मुश्किलात बढ़ सकती थी ब्लास्टर्स के लिए। मुनीबा जो कि
पहला ओवर खेलने के लिए आई हैं, कप्तान है, विकेट हासिल करना चाहती हैं लेकिन अब तक खाली 3 रन दिए हैं। एक बार फिर यहाँ पर 1 रन हासिल किया, दूसरा करना चाहती हैं लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि फील्डर जो है बहुत जल्दी फील्डिंग पर आ चुकी हैं। तो अब 77 रन चाहिए, 77 रन, और बॉलें बाकी रह गई हैं 102। 28 ओवर्स के बाद 110 पे 2। मेरा अपना फ्लेक्स अपना टशन है, ये आवाज सुन इसमें वजन है, सड़कों से गलियों तक गलियों से घरों में मिल बैठे सामने स्क्रीन के, हिल ना सके अपनी सीट से, ग्रूव वेक मेरा टीवी थे, बेबी लेजेंड्स नेवर टेक द इजी वे, बातों में आग से चलते रहेंगे, झूमेंगे वो भी जो घर पे रहेंगे, सितारे हम जैसे उभरते रहेंगे। ब्लास्टर्स का बैटिंग कार्ड ये आपके सामने है। नाहिदा जो कि अभी तक मौजूद हैं, उम्मीद ब्लास्टर्स के लिए 66 रन बनाए नाहिदा ने, नॉट आउट हैं, 83 बॉल्स फेस किए हैं। गुल फिरोजा 30 रन बनाकर वापस हट पहुंच गई और उमैमा सुहेल ने सिर्फ 2 रन चिप इन किए। सिद्रा नवाज साथ देते हुए नाहिदा का, कैप्टन इनिंग रिक्वायर्ड होगी सिद्रा की तरफ से, मगर सिद्रा इस वक्त अनईजी लग रही हैं, दानिश सेटल्ड नहीं लग रही हैं। जिस तरह अभी नाहिदा ने खैर बहुत टाइम गुजार लिया है क्रीज पे, बट सिद्रा को 22 बॉलें फेस कर चुकी हैं, अब सेटल हो जाना चाहिए था क्रीज पे। सीनियर प्लेयर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर। जी आई थिंक कि जब वो आई हैं बैटिंग के लिए तो स्पिनर्स जो थे मौजूद थे, और हम ये देख रहे हैं कि अच्छा खासा गेंद जो है वो ब्रेक हो रहा है। यही वजह है कि इतना जल्दी शायद अपने आप को सेट नहीं कर सकें, और जो प्रॉपर शॉट्स हैं वो नहीं खेल पा रही हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हैं। दूसरी तरफ हमना ने बहुत आज इम्प्रेस किया है, 6 ओवर में 9 रन दिए हैं खाली, कोई विकेट इनको नहीं मिली है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर रही हैं। 1.50 रन्स पर ओवर इन्होंने दिए हैं। मजे के देखने की बात यहाँ पे ये है दानिश के, डायनामाइट्स के पास कंप्लीट बॉलर लिस्ट है, बॉलर्स कंप्लीट हैं बॉलर्स, मगर मुनीबा डिसाइडेड कि शायद मुनीबा को भी बॉलिंग करनी चाहिए। मुनीबा को हमने बहुत रेयरली डोमेस्टिक में बॉलिंग करते हुए देखा है, और आज शायद मुनीबा ने ये सोचा कि मैं ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब हो जाऊं, बिकॉज 2 विकेटें ऑलरेडी गिरी हुई हैं, 2 के ज़्यादा देर नहीं हुई है इस पेयर को क्रीज पे, मगर मुनीबा ने सोचा कि शायद कोई ब्रेक थ्रू दिला दें अपनी टीम को। जी हाँ, मे बी आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने सोचा हो कि यहाँ पे कोई गलती करें नाहिदा और उनको विकेट जो है वो मिल जाए। सरान गुलाम फातिमा अपनी बॉलिंग को जारी रखेंगी यूनिवर्सिटी रोड एंड से। डायरेक्ट हिट्स की हम बात करते हैं, मगर लेट हो गई थोड़ा सा मेरा ख्याल से, और सिद्रा पहुंच गई थी वापस। ब्लास्टर्स के बैटर्स आर सेफ एंड नेल्सन इज ऑन द बोर्ड। जी हाँ, सिंगल जिस तरह हम देख रहे थे कि आहिस्ता के साथ गेंद को पुश भी करते हैं, फील्डर करीब भी होते हैं, लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि जो सिंगल्स हैं वो किसी तरह बिल्कुल भी ना छोड़ें और उनको हासिल कर लिया जाए।
और इस बार विकेटें छोड़ दी थी और मेडॉन को क्लियर करना चाहती थी, लेकिन बिल्कुल बाउंड्री करीब माहम तारिक जो थी, माहम गई और गेंद को फील्ड करके रोकने में कामयाब हुई। और कोशिश ज़रूर की थी माहम ने इसको जज किया कैच को, लेकिन उनके ऊपर से चला गया। और कोशिश की थी यहाँ पे नाहिदा ने कि इस तरह बाउंड्री मिल जाए, लेकिन कामयाब नहीं हुई। माहम ने कम्प्लीटली मुझे लगता है दानिश यहाँ पे मिसजज किया। थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ी सी एफर्ट और करती तो ये विकेट शायद यहाँ डायनामाइट्स को मिल सकती थी। बिकॉज जिस तरह मैं बार बार कह रही हूँ, टारगेट छोटा है, हाफ चांसेस को फुल चांसेस में आपको खुद कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, कोशिश कर रही थी माहम के इसको कैच कर लें, लेकिन गालबन कुछ मिसजज कर गई, वरना शायद अगर थोड़ा सा पीछे हटती तो मे बी इस कैच को लिया जा सकता था। अब 99 बॉल्स बाकी रह गई हैं, 71 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। दानिश, जब हम इन वुमेन टूर्नामेंट्स की बात करते हैं, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जो होते हैं, आपको लगता है कि यहाँ एटलीस्ट इन लड़कियों को ज़्यादा स्कोर बनाना चाहिए, ज़्यादा रन्स बनाने चाहिए? बिकॉज जब आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट के कंफर्ट में एटलीस्ट 200-250 रन्स बनाएंगे तो आप इंटरनेशनल सिनेरियो में जाके 200 रन्स बनाएंगे। मगर अगर आप डोमेस्टिक में ही 200 रन्स नहीं बना पाएंगे तो आप इंटरनेशनल में जाके तो 150 पे ही फंस जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपके जो मेन इवेंट्स हैं वो दो ही हैं, एक तो पाकिस्तान कप है, फिर साथ साथ T20 है। तो यहाँ पर अपने जौहर यकीनी तौर पे दिखाने चाहिए। इस बार ऊंचा खेला है लेकिन सेफ रहेगा। हम एक बार फिर गई थी मेडॉन से, लेकिन दूर था उनसे। तो बिल्कुल यही ऐसे टूर्नामेंट्स हैं कि जहाँ पे आप थोड़ा सा खुल के खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि आप जो शॉट्स हैं अपने अपने खेलें। लेकिन हम तो यहाँ पे ये देख रहे हैं सवेरे जो फुल टॉस बॉल है वो भी जो है ज़ाया चली जाती हैं। बिल्कुल, और डोमेस्टिक का मतलब भी यही होता है कि आप डोमेस्टिक में वो सारी अपनी जो कंफ्यूजन्स हैं, जो मुसीबतें हैं, वो यहाँ से हल करके जाएं इंटरनेशनल सिनेरियो में। और जब हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं, जब हम मॉडर्न टीम्स की बात करते हैं, इसीलिए वो हमें इतनी आगे दिखती हैं। यही वजह है जो वो इतनी आगे दिखती हैं, बिकॉज वो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही होती हैं और इंटरनेशनल सिनेरियो पे आपको और अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखती है। बिकॉज अगर मैं अब रीसेंट टाइम्स में बात करूं तो 180 प्लस के रन्स आपको T20 में दिखते हैं, ना कि वनडे में। जी, अब तक हमने ये देखा कि जो बाउंड्रीज हैं उनका फुकदान नज़र आया और जो डॉट बॉल्स थी वो बहुत ज़्यादा दोनों ही टीम्स खेलती हुई नज़र आई हैं। तो यकीनी तौर पर वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को बेहतर करना है। इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत सख्त कंपटीशन है और मुनीबा जो है वो उन्होंने कहा है कि अपनी बॉलिंग को कंटिन्यू करेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल मुनीबा ने ये डिसाइड किया कि पहला मैंने ओवर किया, सिर्फ 4 रन ही पड़े मुझे, तो क्यों ना मैं एक और अटेम्प्ट करूं, क्या पता मुझे ब्रेक थ्रू मिल जाए। कैप्टन है, कैप्टन सोचता है, अलग अलग चीज़ें सोचते हैं, कभी कभार अपने आप को टेस्ट में डालते हैं, अपने आप के ऊपर वो जिम्मेदारी लेने की कोशिश करते हैं। ड्राइव खतरा हो सकता है लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हमला थी वो बॉल को कलेक्ट नहीं कर सकी और अगर कलेक्ट करके थ्रो करती तो मामला बड़ा मुश्किल हो सकता था। और जहाँ मैं कैप्टन की जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ दानिश, तो कैप्टन वो जिम्मेदारी उठाने की कोशिश तो करता है। बड़ा क्लोज था। कैप्टन वो जिम्मेदारी जरूर कोशिश करता है उठाने की, मगर वो बैकफायर भी कर सकती है। जी, और यही वजह है कि मुनीबा जो है शायद वही जिम्मेदारी उठाने के लिए आई हैं और इस बार LBW की अपील भी की थी, लेकिन डाउन द लेग साइड थी। यही वजह थी कि शायद अंपायर ने ज़्यादा इस अपील पे कान नहीं धरे। अगर यहाँ इस विकेट को देखा जाए दानिश, अनलाइक नेशनल स्टेडियम विकेट लग रही है बिल्कुल। मतलब जब हम नेशनल स्टेडियम की बात करते हैं, बैटर्स के लिए एक आइडियल विकेट होती है, बैटर्स को बहुत फ़ायदा होता है उस विकेट पे, मगर ये विकेट डिफरेंट लग रही है। जी, मे बी आज शायद ओवरकास्ट कंडीशन भी थी, लेकिन
हमने एक एक बात आप देखें सवेरा कि शायद हमने दोनों ही टीम की जानिब से बहुत ज़्यादा एक देखा भी नहीं, कोशिश की गई हो बॉल को हिट करने के लिए। ये भी एक बहरहाल फैक्टर है जो हमें बॉडी में कहीं नज़र नहीं आया हमको। कट किया और यार रन आउट हो सकती नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और किस्मत की धनी रहेंगी जो बॉल जब थ्रो हुई है तो नाहिदा की खुद बॉडी पर आकर लगा, जिसकी वजह से बाल बाल बच गई वो। बिल्कुल जी, नाहिदा बिल्कुल खुश नहीं है, वो बहुत नाराज है इस बात पे कि मतलब बॉल तो देख के फेंको। जी हाँ, अगर देख के फेंकती तो फिर उनको वापस जाना पड़ता। फिर वो और नाखुश होती। और वाकई आप सही कह रहे हैं, इंटेंट नहीं लगी दोनों टीम्स की। अगर मैं बात करूं तो इंटेंट नहीं लगी हिट आउट करने की, बड़े शॉट्स मारने की, रन्स कलेक्ट करने की, वो उस तरह की इंटेंट नहीं लगी। ज़्यादा एफर्ट करती हुई नहीं दिखी लड़कियां कि बाउंड्री मारें, या मे बी ये जो ओवरकास्ट कंडीशन है ये इनके सर पे ज़्यादा हावी है। जी स्टार्ट से ही, चाहे वो पहली इनिंग्स हो या फिर दूसरी इनिंग्स हो, उसमें जहाँ बाउंड्रीज दरकार थी फर्स्ट इनिंग्स में, लास्ट में वहाँ पर भी कोई हमने बहुत ज़्यादा शॉट्स लगते हुए नहीं देखे। जबकि जो दूसरी इनिंग्स है जहाँ पे ब्लास्टर्स बैटिंग कर रही है, वहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज हमने नहीं देखी हैं। और कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आप जो हैं वो बड़े शॉट्स की तरफ नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जा रहे हैं। उसका क्या रीज़न हो सकता है, वो डेफिनेटली बेहतर तौर पे मैनेजमेंट जो है वही जानती होगी इनकी टीम की। सो दानिश, बस अब बहुत इजी सी इक्वेशन हो गई ब्लास्टर्स के लिए। यहाँ पे 65 रन्स रिक्वायर्ड हैं ब्लास्टर्स को, 91 बॉल्स अभी भी अवेलेबल हैं। इजी टास्क टू डू। आई गेस कि अगर यहाँ पे विकेट्स नहीं गिरती हैं तो फिर शायद हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर डायनामाइट्स की टीम 2 या 3 विकेट्स लेने में कामयाब रहती है तो फिर प्रेशर जो है वो शिफ्ट हो सकता है ब्लास्टर्स के ऊपर, क्योंकि विकेट्स गिरने की सूरत में जो डॉट बॉल्स हैं उनका वो खेली जाती हैं और उसकी वजह से जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ जाता है। सो मे बी यहाँ पर जो विकेट्स हैं उनको अपने हाथ में रखना होगा और फिर शायद मामला और आसान हो जाए ब्लास्टर्स के लिए। अदरवाइज जो विकेट्स हैं अगर यहाँ पे डायनामाइट्स ले लेती है तो फिर मुश्किलात ब्लास्टर्स के लिए बढ़ सकती हैं। Fatma continuing with the spell. She's bowled 6 overs so far for 26 runs she's given away, taken a wicket. After 30 overs, they are 123 for 2, the Blasters, chasing 187. Quick run, driven towards extra cover, set off immediately Sidra. Well, the equation is not difficult for the Blasters. They've got 88 balls, just need 63 runs, but again they need to keep rotating the strike and punish the bad balls.
firmly struck, but well fielded of her own bowling. Fatma has bowled well today. Whoa, missed by everyone. Sweep. Neither missed the sweep and the keeper missed the ball. Wide ball, says the umpire. That was a dangerous shot attempted. Just walking across the stumps to a leg spinner. It was a very rare margin. Could have been hit the stumps. The sweep shot seems to be Naida's favorite shot. She uses it to not only get away when she's in a bit of a fix, not getting the singles, and but it is also her scoring shot. She sweeps very well inside and also square of the wicket. At times she sweeps fast bowlers as well. You haven't seen that. It's still yet to come. Yes, most probably once she's back in form after those runs under her belt, she'll start doing that now. After 31 overs, it's 128 for 2. A wicket is needed by the Dynamites desperately if they want to get back into this game, and keeping that in mind, I think Muniba has brought back Alia Riaz, the most experienced bowler, to get her a wicket or two quickly so they can come back in the game, put some pressure on the Blasters. Yes, even if they can contain runs here, that can add pressure to Blasters as well. Alia Raz has been struggling a little bit with her bowling form, but it's a good opportunity for her to regain that. Beautiful shot that. Just lent into that shot. 4 more. Beautifully timed that. Bit on the leg side, using her wrists as well, and avoiding that mid-on fielder. Look at that beautiful shot. Right under her eyes, just allowed the ball to come closer and just flick off the wrist. That's one of her signature shots. Siddhar Nawaz just now catching up the dot balls she played initially. Excellent cricket. Hit a 4, get off strike. Give Naida a chance. That's how it should be done. We've been talking about how Pakistan players should look different. They know the standards of international cricket. They should be applying it here as well. Swept. Just the last over, Marina was mentioning that Naida also sweeps the medium pacers and fast bowlers, and there you go. I'm sure when you're starting a tournament, there are a few things that are going in your mind. You want to make a good start, a winning start. You're a bit more careful than usual. We're all hoping here that as the tournament progresses, it's a wide ball, very wide in fact. Yes, so we're all hoping that as the tournament progresses, everyone will be getting into their
own, and cut, point, misfielded, couple of runs. End of the 32nd over. It's 137 for 2. And once the early jitters of starting off a new tournament are gone, I'm sure everyone will be performing better. The standards will get better, the fielding standards will get better, the batting and the bowling the bowlers will find their lines, will be more attacking, the batsmen will be finding their timings, and things will get better and better. Again, the slip is missing. See, when you're looking for opportunities to get batsmen out, most certainly you cannot now contain the blasters. You cannot just defend this total by bowling dot balls. So you have to get wickets. You have to get wickets by placing your fielders in the right positions. We've talked about how the bowlers should also be taking responsibility of their own field. And if I talk about captaincy of Muniba, she has a leg spinner who's turning. There's a definite slip, should be there, especially in this circumstances. Again, the ball kept a bit low, turned. A bit difficult for the keeper to collect that, but good keepers do collect that. Yeah, there's no excuse for that. As a keeper, you should be collecting every ball. And Ghulam Fatma and Soha also play together in one club, so she's not new to this. That's good bowling. Flighting it, turning it. But again, the point which is being missed is even if she's bowling well, even if she's turning it a yard, there's no one catching the ball. There was no one in those positions. Neither is saying to Ghulam Fatma that she missed a boundary. Was looking to sweep that ball, but again going against the spin is not a good option. That's straight to square leg, swept, or you can say slog sweep, or straight to the fielder, top edge most probably. And that's the wicket the blasters, the Dynamites were looking for. It's 140 for 3. I was just saying going against the spin is not a good option, especially if it's turning this much. Slog sweep didn't turn out well. Sidra Nawaz, the captain, has to walk back, scoring 22 of 22 balls. Should have been finishing the match. That's what you expect of her, being a captain, being a Pakistan player. But now Nida Dar, one of the prolific players, are going to join in the middle. There you see, playing it uppishly. Could have rolled her wrists and played it down, especially when that fielder was in the deep. And when you're going against the spin, especially against leg spinners and left armers, that's the way to do it. You have to keep it down. For the off spin is a different thing because you're playing with the spin. But when you're fond of sweeping and you're going against them, you probably paddle it, but not play it like that, straight into the hands.
New batter in, Nida Dar, very experienced campaigner, and this pair now should see the Blasters home. There has been a clear difference in captaincy if I talk about the young captains. Munib Ali still waiting for the batters to just make mistakes, which they're doing. But on the other hand, Sidra was very good and calculated in field setting and operating bowlers. For the longer run, this kind of captaincy by Muniba won't win her matches. Alia Riaz continuing to Nida Dar. With that packed offside field, there's a point, cover, extra cover, and off. The line is too straight by Alia. Just 46 required now, and this pair should see through it. Was probably trying to hit it too hard. Missed. A short ball. She likes to cut, and whenever there's an opportunity, she goes hard. You have to judge the pace of the wicket. So far so good by Alia. But having said that, well, the Blasters wouldn't mind just picking up those singles and doubles and that odd boundary. Again, that sweep shot, a favorite sweep shot, Maeda's. Struggling with line, Alia, not helping the cause. Most of these players have been around playing cricket regularly since probably January and onwards. Got domestic tournaments, they've got tours of South Africa, West Indies, and camps on and off. They played recently in Quetta. That was an event organized by Quetta Gladiators. Again straying down that leg side. Very enthusiastic appeal by the keeper. Umpire says nothing doing. It's a white ball. Why would you chase it? That is my question. Either why would you chase it? End of the 34th over. It's 143 for 3. Well, yes, thank you for mentioning the amount of cricket these girls have been playing in the recent past. Because I was under the impression that they're a bit rusty at the moment. Well, having played all that cricket in a short period, I am still hoping that the matches after this one, things will improve. You need time to gel in because there are a lot of youngsters here, different teammates. So obviously it takes 1 or 2 games and probably days to just gel in, but they've been around, all of them.
Well fielded by Alia. That was struck hard. Yeah, you can see that on Alia's face. It was hammered by Nidadar. An awkward bounce and I think probably hit on the knee. Oh yeah, lovely ball, yeah, lovely ball. Very well bowled, Fatma. Come on, Abhi ke wicket, come on. Really impressed by this bowler. Flighted the ball well, turned it. Not getting the field she should be getting. But she has bowled good lines. She has been around Pakistan team as well, but been out for a while now, struggling a bit with the form and as well as with fitness. Oh, that was sloppy again. And Nidadar gets a 4, driven straight back. Well, not straight back really, but driven straight past mid-off. And there you can see trying a bit of football. That's sloppy, really sloppy. We've been talking about how important fielding is. That's one area we need to work on. Fielding. And that actually comes naturally. You have to work hard for that. At the end of the 35th over, it's 148 for 3. Yes, it's a very, very important aspect of the game now. Fielding is like game now, especially just by stopping a few runs and restricting the opposition's totals to whatever they want to get. But yes, I have to say, and of course, as we were discussing, with the fielding, if we find a good fielder in Pakistan, in any format, it's like you know, players play just because they are good fielders in teams, but if you see in foreign teams, it's just a compulsion. It's compulsory for fielders to work on the fielding, improve their fielding and contribute. It doesn't matter if you're a bowler or a batter, you have to be out in the field for the whole quota of overs. So that's why it's not an added thing, it's a compulsory thing, as you were saying. And it shouldn't be treated as something exceptional, it should be natural. That is pulled towards mid-wicket for a single. Alia, as Marina has mentioned, is struggling with bowling, and it is evident with she's not hitting the lines or the lengths she usually does. Swept again in the gap this time for a couple of runs. Moves on to 89. That has been a good innings for her. She has to make sure that she takes her team across the line. That's what's expected of a senior player. Yes, this inning should be quite encouraging for us selectors as well, who are most probably watching not only the new players but of course the senior players who are out of form,
when you're going into big tournaments or big matches, the experience of these players is very handy. End of over number 36. It's 153 for 3. Things are not looking very good for the Dynamites. The body language is not good. The team is down now, and mentally, I think they have accepted defeat now, it seems. Two very experienced campaigners on the wicket at the moment. I think the approach from the both teams, that was the difference, and the approach from captains was what made it different. And again, I think that approach the Muniba Siddiqui has adopted, it's not going to help her in a longer format. Yes, that's a very good observation, very good point actually. Main difference has been the captainship. Sidra was very proactive at times, and the change of bowling, it was very, very impressive. The way she handled her bowlers, and Muniba has been, short of ideas. Short board pulled. Oh, again, that is sloppy work at the boundary. That's 4 more runs. That should have been stopped. The captain and the bowler won't be happy with that effort. Amna Bilal, the youngster, it was an easy regulation fielding. That's the things we've been focusing on. It's not the way to go about. We've been talking about captaincy. It's like if you're going into the battle, you've got all the right soldiers, but you don't utilize their skills with the right positions. Again short, pulls it. Square of the wicket this time. She'll get another boundary. That's consecutive boundaries for Nida Dar. She's opening up now, wants to go home early. Very, very good shot. Polish pitch shot, quickly getting on to that back foot and thumping it to the mid-wicket boundary for 4. It's actually poor bowling by Maham Tariq at the death innings. At this time, you have to be trying for your slow ones and Yorkers. Nida Dar with this kind of pace Maham has and this length, he will put away these for boundaries all day long. Again straying down leg side. Easy pickings for Nida Dar. Flicked it to fine leg for a single. That's one area where Maham Tariq needs to improve. The variations, the bowling at death overs, slow ones and Yorkers, because that's the time where you need to contain the runs. Driven to covers, straight to a fielder, Nahida.
will be a confidence booster for her if she gets to that 100. But I don't think Niradar will let her do that. Yeah, she's not going to just stay there and watch. But Naida will be eyeing that. She's worked hard, really hard for that. Let's see if she can reach it. Again, trying to hit too hard. Missing the ball. Trying to force the cut shot off the front foot. And that's one of the reasons she missed it. It's the end of the over. After 37 overs, it's 162 for 3. "25 more runs to get of 48 balls. Should be an easy target, this one. But as we've been discussing, you never know in cricket. Yeah, but again, I think the main concern for the Dynamites is how to utilize their bowlers well with the right field settings. Because in these kind of conditions with this outfield and this wicket, it's quite batting friendly. It's not going to allow much help to fast bowlers, so they have to do something different. They have to be tactically aware how to create chances to get wickets out of it. Otherwise, it will be a one-sided play, as we've seen today. It wasn't a difficult target for Blasters with the batting lineup they had, with all the experience they had. But something different was needed from Dynamites. डाउन द लेग साइड, एक्स्ट्रा का मजीद रन यहाँ पर। तो अब 24 रन चाहिए हैं और 48 गेंदें बाकी रह गई हैं। तो आसान से आसान तरीन ये मैच होता हुआ ब्लास्टर्स के लिए। यहाँ पे ब्लास्टर्स की दो चीज़ों से रेस है इसमें। एक तो ये रन्स compete करने हैं, चेस करने हैं, 24 रन रह गए हैं। दूसरी तरफ दानिश, बादल बिल्कुल तैयार हैं, कभी भी बरस सकते हैं बिकॉज हवाएं बहुत तेज चलना शुरू हो गई हैं। और हमें नेशनल स्टेडियम के ऊपर जो पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं वो बहुत तेजी से हिलते हुए दिख रहे हैं। तो ये भी जहन में रखना होगा कि बारिश से पहले पहले ये जो पॉइंट हासिल करना है ब्लास्टर्स ने, वो फौरन से पेश कर दिया जाए। जी हाँ, लेकिन आई थिंक कि अगर बारिश हो भी गई तो शायद इस मैच का नतीजा जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज ना हो, क्योंकि डगपुर ट्विस्ट से जो रिज़ल्ट है वो हम देखेंगे कि सामने आ जाएगा। तो बारिश ने शायद देर कर दिया आते आते लेकिन बहरहाल क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा है कि मैच जो है वो उस पर असरअंदाज ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, और अब तो देर हो गई है तो हो ही ना अब बारिश, अब नहीं होनी चाहिए। हमना ने इस पूरे मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, ब्रिलियंट बॉलिंग बाय हर। अगर डायनामाइट के ट्रम्प कार्ड की बात की जाए तो आज हमना एक ट्रम्प कार्ड की तरह साबित हुई है। वेरी इकोनॉमिकल, विकेट नहीं हासिल कर सकी मगर परफेक्टली इकोनॉमिकल बॉलर। वेरी क्लोज। राइट जी, अंपायर का इशारा किसी किस्म का लेग बाय का नहीं, तो इसका मतलब कि नाहिदा ने
अहमद ने हमें बताया कि अपने 3,500 रन मुकम्मल कर लिए हैं लिस्ट ए में। नाहिदा और अहमद को किसने बताया, वो आप बता दें। बिल्कुल जी, अजीम ने। हमारे स्टैटिस्टिशियन अजीम ने ये स्टार्ट हमें यहाँ पे बताया है। तो बिलाखिर मेरी आंखें तरस गई थी, बाउंड्री यहाँ पर हमने देख ली है और चौका यहाँ पर हासिल किया है खूबसूरती के साथ। सो निदा डार जो कि बैटिंग कर रही हैं अब आहिस्ता आहिस्ता, जब से आई हैं क्रीज पर अपने स्ट्रोक्स भरपूर तरीके से खेल रही हैं। सिर्फ 18 रन रह गए हैं मैच जीतने के लिए ब्लास्टर्स को। और नाहिदा की जहाँ आप बात कर रहे हैं दानिश, तो नाहिदा इज अ वेटरन फॉर पाकिस्तान। लिस्ट ए करियर अगर आप देखें 119 मैचेस खेल चुकी हैं, 3,500 रन हो गए हैं। 2009 में इन्होंने डेब्यू किया था। सो जस्ट इमेजिन के ऑलमोस्ट 12 से 13 साल से खेल रही हैं। निदा डार अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए कोशिश करिए जल्द से जल्द ये टारगेट चेज हो जाए। 16 रन बाकी हैं ब्लास्टर्स के लिए और 44 बॉल्स। लिस्ट ए करियर में अगर हम मोस्ट रन्स की बात करें वुमेन क्रिकेट में, तो जवेरिया खान पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट में टॉप कर रही हैं इस वक्त। 5,541 रन हैं यहाँ जवेरिया के। और इस तरह के शॉट्स जो हैं वो हमने बिल्कुल भी डायनामाइट्स की जानिब से नहीं देखे। अलबत्ता आलिया जो थी वो ऐसे शॉट ज़रूर खेलती हैं और ब्लास्टर्स की जानिब से हम देख रहे हैं कि बिलाखिर ऐसे शॉट्स नज़र आ रहे हैं जो अमूमन बड़े कम अब तक हमने इस मैच में देखे हैं। पॉइंट और कवर्स के दरमियान से यहाँ पर गैप को तलाश करते हुए ड्राइव किया है। अगर हम एक दफ़ा फिर से देख सकें लिस्ट है के जो टॉप स्कोरर्स हैं, तो हमें नज़र आएगा जवेरिया खान एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर टीम पाकिस्तान की भी। जब जब जवेरिया अच्छा खेलती हैं, टीम पाकिस्तान आपको अच्छी खेलती हुई दिखती है। जवेरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है टीम पाकिस्तान की और इसी वजह से आपको लिस्टे में भी उनके रन ज़्यादा दिख रहे हैं। सो जवेरिया खान 5,541 रन के साथ 38 के एवरेज से। बिस्मा मारूफ अभी इस वक्त मटर्निटी लीव पे हैं, 5,080 रन हैं उनके 37.91 की एवरेज से। नैन आबदी एक और सीनियर नाम जो कि अब अवेलेबल नहीं है, अभी नहीं खेलती हैं वो पाकिस्तान के लिए, 3,707 रन उनके। और नाहिदा खान अब इस लिस्ट का हिस्सा 3,500 रन विद एन एवरेज ऑफ 33.33। जी हाँ, ऑलमोस्ट अगर आप एवरेज देखें तो 30 प्लस सबका नज़र आता है। जवेरिया खान और बिस्मा मारूफ का ऑलमोस्ट 38 का है। सो ये टॉप 4 पाकिस्तान की प्लेयर्स जिन्होंने पाकिस्तान के लिए लिस्ट ए में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं। तू शाही है बसेरा कर। सीधा हाथों में कोशिश की थी कि बाउंड्री को क्लियर करती, लेकिन नाकाम रही और सीधा फील्डर के हाथों में कैच गया, यूं अपनी विकेट गंवा दी। और माहम ने यहाँ शाहीन वाला काम किया बिल्कुल। माहम तारिक की अगर मैं बात करूं तो जब ये शुरू में बिल्कुल नहीं आई थी तो इनकी पेस बहुत ज़्यादा थी। बीच में एक इंजरी का शिकार हुई, कम बैक किया वापस, बट पेस उतनी नहीं। वंडरफुल बॉलिंग राइट नाउ और विकेट हासिल हुई। 25 गेंदों पे 25 रन बनाए। ब्लास्टर्स की एक बड़ी विकेट यहाँ पे निदा डार, एक्सपीरियंस्ड निदा डार की विकेट हासिल करना। 25 पे 25 बनाकर निदा डार बैक टू द हट।
लेकिन बहरहाल निदा डार की अगर आप बैटिंग देखते हैं तो ये पॉजिटिव माइंडसेट जिसकी हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से बैटिंग हमें नज़र नहीं आ रही थी, आई थिंक इसमें 100 में से 100 नंबर इनको मिलने चाहिए कि सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने बैटिंग नहीं की, बल्कि जो टारगेट था वो इनको मालूम था कि बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लिहाजा इन्होंने स्ट्राइक रेट को वहाँ से बढ़ाया, बड़ी उम्दा बैटिंग की है। रन ज़रूर कम बनाए हैं, लेकिन आई थिंक के मैच को जो है बहुत जल्दी चेंज कर दिया इन्होंने। बिल्कुल दानिश, और निदा के एक्सपीरियंस की बात करें तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितनी तारीफ करें उतनी कम है। रीसेंट पास में उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं है, बट बॉलिंग में अगर मैं बात करूं तो ये पाकिस्तान की वाहिद प्लेयर हैं, बीट मेंस क्रिकेट और वुमेन क्रिकेट, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेटें हासिल की हैं। सिर्फ 13 रन यहाँ पर चाहिए ब्लास्टर्स को इस पाकिस्तान कप वनडे टूर्नामेंट में अपनी पहली फतह हासिल करने के लिए, अपने पहले ही मैच में। अच्छी बॉल थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फुल लेंथ डिलीवरी कि जिसको बीच करने में कामयाब रही नाहिदा के, जिनको 16 रन चाहिए अपनी सेंचुरी के लिए, लेकिन जो टारगेट है वो सिर्फ 13 रन का बाकी रह गया है। माहम अच्छे पेस के साथ बॉलिंग करती हैं, अपने करियर में इंजरी का भी काफ़ी शिकार रही हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पे माहम तारिक। ब्लास्टर्स के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ब्लास्टर्स की ओपनर नाहिदा जो हैं वो मौजूद रहीं, मुसलसल क्रीज में मौजूद रहीं, पार्टनर्स आते गए, नई बैटर्स आती गईं, उनको सेटल कराने में नाहिदा ने बड़ी हेल्प आउट की, और नाहिदा यहाँ पे मौजूद हैं 84 रन्स के साथ। और दानिश, यही क्वालिटी है एक सीनियर प्लेयर की कि वंस अगर आप सेट हो गए हो तो फिर आप अपनी विकेट ना गंवाएं, फिर आप ये मैच खत्म करके ही क्रीज से बाहर निकलें। जी हाँ, मैच फिनिश करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और कॉन्फिडेंस भी देता है वो आपको, और यही वजह है कि नाहिदा ने बड़ी सेंसिबल बैटिंग का मुजाहरा किया है। इब्तदाई लम्हात से ही इन्होंने कोई गैर ज़रूरी शॉट्स नहीं खेले, पहले विकेट पर कैच हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो रन रेट था उसको भी बढ़ाया। अपटाइट बॉलिंग बाय माहम तारिक। 39 ओवर्स मुकम्मल, 174 पर 4, 13 रन चाहिए 36 गेंदों पे। पाकिस्तान कप वुमेन्स वनडे टूर्नामेंट 2021 का ये इनॉग्रल मैच, जहां पे ब्लास्टर्स और डायनामाइट्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबल, और ब्लास्टर्स को सिर्फ 13 रन्स चाहिए, सिर्फ 13 रन्स दरकार ये मैच अपने नाम करने के लिए और अपना अकाउंट इस टूर्नामेंट में ओपन करने के लिए। इस टूर्नामेंट की जो फातेह टीम होगी उसको 1 मिलियन रुपीस की इनामी रकम दी जाएगी, जबकि जो रनर अप है उसके लिए 5 लाख रुपए रखे गए हैं। कट किया लेकिन सीधा फील्डर के पास, इसके पास साथ साथ 20,000 रुपए प्लेयर ऑफ द मैच को दिए जाएंगे हर मैच में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 50,000 रुपए की इनामी रकम, तो एक अच्छी यहाँ पर इनामी रकम जो है रखी गई है इस पाकिस्तान कप के लिए। इन्हीं बेनिफिट्स की हम पहले बात कर रहे थे दानिश, कि यही वो बेनिफिट्स हैं जो इनिशियली नहीं मिलते थे। इस टाइम फ्रेम में, इस मैनेजमेंट के अंदर आपको ये बेनिफिट्स दिखना शुरू हुए हैं। सो अब इन लड़कियों के पास कोई रीज़न नहीं है, दे नीड टू परफॉर्म, दे नीड टू शो अप देयर टैलेंट, क्योंकि फैसिलिटीज सारी मिल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इनको। बिल्कुल सही कहा आपने, और पैशन जो है यकीनी तौर पर होना चाहिए। इससे पहले भी
जिस तरह हम बात कर रहे थे माजी में जो क्रिकेटर्स खेले उनके पास ये सहूलियात नहीं थी, लेकिन पैशन ज़रूर मौजूद था। खुद हमारे साथ कमेंट्री मरीना भी मौजूद है, उनके ज़माने में भी इतनी सहूलियात नहीं थी। दानिश, एक स्कूल ऑफ थॉट है, क्या पैशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू फैसिलिटीज? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे फैसिलिटीज बढ़ती रहती हैं, पैशन का लेवल कम होता रहता है। बेहतरीन शॉट शावाल की तरफ से, चौके के लिए गया ये, और मुनीबा बिल्कुल। और दानिश, मैं पर्टिकुलरली ये बात वुमेन्स क्रिकेट में नहीं कर रही, ये मैं ऑल टुगेदर बीट मरती जा रही हैं, बट पैशन कम होता जा रहा है। जी हाँ, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में बिल्कुल ऐसी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। इस बार ख़तरा हो सकता था, आज बहुत जल्दी जो बॉल थी वो लैंड कर गई, लिहाजा सेफ रही यहाँ पे। एक रन यहाँ पर हासिल किया, और ऐसा हम देखते हैं ख़ास तौर पे जिस तरह से पैशन की आपने बात की कि ओवर भी मुकम्मल हो चुका है, 40 ओवर्स के बाद 180 पे 4। पैशन वक्त के साथ साथ अगर आपके इंसेंटिव्स बढ़ रहे हो तो फिर वो शायद आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। सो अब 30 गेंदों पे 7 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। ब्लास्टर्स को सिर्फ 7 रन दरकार इस मैच को अपने नाम करने के लिए। फॉर्मेट से ज्यादा आप यंगस्टर्स का इंटरेस्ट T20 फॉर्मेट में देखते हैं। कम खेलें, कम एफर्ट लगाएं, मॉनेटरी बेनिफिट ज्यादा। सिंगल खतरा हो सकता है, लेकिन लिहाजा सिंगल आसानी के साथ बन गया। ओवरऑल आपने क्योंकि T20 की बात की, चाहे वो हम मैंस क्रिकेट में भी देख लें, हमें कुछ ऐसे प्लेयर्स नज़र आते हैं इंटरनेशनली भी क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, और वो चाहते हैं कि जो T20 है लीग्स उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहें। लेकिन अगेन वही बात है कि जो पैशन है वो आपके अंदर होना चाहिए, और चाहे आपकी रेड बॉल है, लेजेंड्स उसी से बाहर। जो रिस्पेक्ट एक टेस्ट क्रिकेटर की होती है वो शॉर्टर फॉर्मेट के प्लेयर्स की नहीं होती। फील्डर गेंद के पीछे एक और चौका यहाँ पर लगाने में कामयाब रही है, तो बिलाखिर जहाँ चौके नजर नहीं आ रहे। नाहिदा खान इज नॉट स्टॉपिंग एट ऑल। उनको पता है कि थोड़े से रन्स रह गए हैं, सेंचुरी तो उनके लिए करना मुश्किल होगा, बट जितने भी रन्स यहाँ पे बटोर सकें, जितने भी रन्स लूट सकें, लूट लें। तो सिर्फ 2 रन चाहिए यहाँ पे ब्लास्टर्स को अपना पहला मैच जीतने के लिए, और नाहिदा यकीनी तौर पर इस फतह में एक अहम किरदार उनका, जिन्होंने 89 रन बनाए हैं। तरफ, और ये आखिरी रन बाकी है ब्लास्टर्स को ये मैच जीतने के लिए। द स्कोर्स आर इवन हियर, 186 फॉर 4 ब्लास्टर्स के। 1 रन रिक्वायर्ड है ये मैच अपने नाम करने के लिए। सो विनिंग शॉट शावाल के हिस्से में आएगा। और इस बार शॉट जरूर खेला था फील्डर ने, लेकिन जो थ्रो की बैकअप मौजूद नहीं, और जिसकी वजह से 1 रन यहाँ। तो ब्लास्टर्स की टीम जिसने ये मैच 6 विकेटों से जीत लिया है अपना पहले ही मैच, और पहले ही मैच में कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहे। बिल्कुल, पहला ही मैच, और पहले मैच में एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस हमें ब्लास्टर्स की तरफ से दिखी। और दानिश, हम बात कर रहे थे कि शावाल को मौका मिलेगा विनिंग रन खेलने का, मगर ओवर थ्रो ने वो मौका दिया कि यहाँ पे एक और रन ले सकें। नाहिदा 90 रन बना के 112 बरस के बाद एंड तक लेकर गई। यही करता है एक सीनियर प्लेयर, जिस तरह नाहिदा ने आज परफॉर्म किया अपनी टीम ब्लास्टर्स के लिए। जी हाँ, जिम्मेदारी के साथ सेंसिबल बैटिंग की है नाहिदा ने। आगाज से ही ये जानती थी कि टारगेट इतना बड़ा नहीं है, तो लिहाजा बहुत जल्दी नहीं की, और आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग की है। बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट को बरकरार जो था वो फिर बाद में इन्होंने मेंटेन किया। 112 गेंदों पे 90 रन बनाए, जिसमें 7 चौके शामिल रहे। स्ट्राइक रेट रहा 80.36 का, तो दाद देनी पड़ेगी जिस तरह इन्होंने सवेरा सेंसिबल बैटिंग का मुजाहरा किया है। और जिस तरह बात कर रही थी कि खुद तो बैटिंग की, लेकिन साथ साथ जो साथी बैटर्स आती रही उनको भी खिलाती रही है, और अब डगआउट में जो इनके प्लेयर्स मौजूद हैं उनसे दाद वसूल कर रही हैं। बिल्कुल जी, सबसे पहले कैप्टन से दाद वसूल की, और उसके बाद खुश नाहिदा ये हमें दिख रही हैं
यहाँ मुकाबला हो रहा था डायनामाइट्स का ब्लास्टर्स से, जो कि ब्लास्टर्स ने 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया। तो ब्लास्टर्स के जिसने मैच 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया, जबकि आज टॉस जीता था डायनामाइट्स ने और पहले बैटिंग करते हुए 187 रन का टारगेट जो था वो सेट किया था, बावजूद इसके कि ओवरकास्ट कंडीशंस थी, लेकिन उसमें 187 किए थे। ये ब्लास्टर का स्कोर कार्ड। बिल्कुल जी, ब्लास्टर्स के बैटिंग कार्ड की बात की जाए तो नाहिदा जो कि नॉट आउट रही 90 रन्स बनाकर, गुल फिरोजा 30 रन्स बना सकी, उमैमा सोहेल ने 2 रन्स बनाए, सिद्रा नवाज ने 22 रन्स बनाए, निदा डार क्विक रन्स 25 रन्स बनाए उन्होंने 19 बॉलों पे, और फिर शाहवाल 7 रन्स बना सकी, और इस तरह ब्लास्टर्स ने 6 विकेटों से जीत हासिल की। बॉलिंग में सबसे कामयाब बॉलर विकेटों के लिहाज से गुलाम फातिमा रहीं, जिन्होंने 39 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं। नशा ने भी 36 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। महम तारिक ने भी 1 विकेट हासिल की है, लेकिन हमना बिलाल ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की थी और 7 ओवर में 21 रन दिए। कोई विकेट इनको नहीं मिली, लेकिन इकनॉमिकल बॉलर रही हैं। मुनीब अली ने भी 2 ओवर किए, 7 रन दिए, इनको भी कोई विकेट नहीं मिली, लेकिन गुलाम फातिमा सबसे कामयाब बॉलर की, जिन्होंने यहाँ पर 2 विकेटें जो हैं वो हासिल कर ली हैं। तो यूँ यहाँ आज का मैच ब्लास्टर्स ने 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया है। और ओवरऑल जिस तरह से हमने देखा ब्लास्टर्स के लिए नाहिदा ने बैटिंग की है, बड़ी कमाल की। ये डायनामाइट्स और ब्लास्टर्स के दरमियान जो मैच था, बिलाखिर ब्लास्टर्स की टीम जीतने में कामयाब रही। ग्राउंड के ऑलमोस्ट आगाज़ में हमने देखा कि जो स्ट्रोक्स खेले थे वो कोशिश ज़रूर की थी बाउंड्रीज हासिल करने के लिए, उसमें आगाज़ में कामयाब भी रही थी। उसके बाद एक लम्हा ऐसा ज़रूर आया था कि जहाँ पर सिंगल डबल हासिल करना शुरू कर दिए थे, एक अच्छा गैप तलाश किया था कवर एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से, और मिड विकेट की जानिब यहाँ पर बाउंड्री हासिल की। तो नाहिदा ने ज़रूर कोशिश की कि ऑन साइड और ऑफ साइड दोनों पर रन जो हैं बटोरे जाएँ। ये मिड ऑन को क्लियर किया और बाउंड्री यहाँ पर लगाने में कामयाब रही थी, और न सिर्फ इनको ऑफ साइड बल्कि ऑन साइड दोनों ही हमने देखा खासे स्ट्रॉन्ग जो थे वो हमें इनके नज़र आए। और ये विकेट थी जो कि गिरी, और महम ने कोई गलती नहीं की यहाँ पर कैच लेने के लिए, जबकि एक और विकेट, और इस तरह से एक और विकेट यहाँ पर गिरी थी। बिल्कुल बेहतरीन कारकर्दगी ये ब्लास्टर्स की तरफ से हुई। आपको जिस तरह हम इनिंग में बार बार बात कर रहे थे, चौके नहीं दिख रहे हमें, बाउंड्रीज नहीं दिख रही हमें, बट ब्लास्टर्स की इनिंग में ये बाउंड्रीज दिखी, और यहाँ फिर ब्लास्टर्स ने विकेट गंवाई। यहाँ पे मिसफील्डिंग का मुजाहरा भी हुआ था और 4 रन बन गए थे उसकी वजह से, लेकिन जैसे ही गेंद में एक दफ़ा फिर कंट्रोल आया, विकेट्स यहाँ पर कम गिरी, और उसके बाद से अपने स्ट्रोक्स एक बार फिर खेलना शुरू कर दिए थे। ख़ासतौर पे निदा डार जब बैटिंग करने के लिए आई, थोड़ा सा चेंज कर दिया था, गेयर्स को शिफ्ट किया था, और ग्राउंड के चारों तरफ बड़े खूबसूरत स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिए थे। और ये वो कैच के जिस पे आउट होने के बाद एक और बाउंड्री लगाने की कोशिश में निदा डार जो थी वो वापस चली गई, लेकिन उसके बाद से एक दफ़ा फिर सिलसिला जो था वो शुरू रहा बाउंड्रीज़ का, और चौके हमने देखे कि लगना शुरू हो गए थे, और नाहिदा की जिन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया था और 90 रन बनाए, कामयाब रहीं अपनी टीम को ये मैच जितवाने के लिए 6 विकेटों से। ब्लास्टर्स की टीम जिसने अपना पहला मैच अपने नाम कर लिया। ये मैच समरी। बिल्कुल जी, डायनामाइट्स की तरफ से मुनीबा अली ने 62 रन चिप इन किए, आलिया रियाज 57, सदफ शम्स 22। बेहतरीन बॉलिंग जो है वो हमें निदा डार की तरफ से देखने को मिली, 2 पे 22 रन। उरूप शाह ने 2 विकेटें लेके 39 रन दिए। जवाब में नाहिदा खान के 90 रन, गुल फिरोजा ने 30 रन बनाए, निदा डार ने 25 रन बनाए, और गुलाम फातिमा ने 2 विकेटें लेके 39 रन दिए, और माहम तारिक ने 1 विकेट लेके 32 रन दिए, और इस तरीके से ब्लास्टर्स ने ये मैच 6 विकेटों से अपने नाम किया। सो ओवरऑल प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो हम देखेंगे कि अब से कुछ देर के बाद हमें ज़रूर यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन है, लेकिन ओवरऑल सवेरा अगर हम बात करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच की, तो आपको क्या लगता है किसको, नाहिदा को ही होना चाहिए? डेफिनेटली मुझे लगता है नाहिदा को होना चाहिए, बिकॉज नाहिदा जिस तरह खड़ी रही ब्लास्टर्स के लिए और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, अपने साथ दूसरी बैटर्स को खिलाया। 2 के सिद्रा जो है वो कैप्टन थी, मगर जो कैप्टन इनिंग्स खेली वो पर्टिकुलरली ऐसा लगा जैसे नाहिदा वो खेल कर गई हैं, बिकॉज सिद्रा ज़्यादा देर मौजूद नहीं रही क्रीज पे। सो नाहिदा ने अपनी सीनियरिटी का भरपूर फ़ायदा उठाया और अपनी टीम को भरपूर फ़ायदा दिया। जी, आपसे कुछ देर के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी जो है वो होगी,
और जिसे मिशा इमरान जो है वो होस्ट करेंगी। उसकी भी तैयारियां ग्राउंड में इस वक्त जारी हैं, लेकिन इस वक्त डायनामाइट्स और ब्लास्टर्स दोनों ही टीम के जो प्लेयर्स हैं वो ग्राउंड में मौजूद हैं। याद रहे कि आज पहला मैच जो था वो खेला गया इस पाकिस्तान कप विमेंस वनडे टूर्नामेंट का, कि जहां पर ब्लास्टर्स की टीम ये मैच जीतने में कामयाब रही है 6 विकेटों से। फिलहाल हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी के साथ आपको एक दफ़ा फिर वेलकम बैक करेंगे।
match has been played and it has been won by Blasters by 6 wickets against the Dynamites. First up, let's have the unfortunate captain Muniba Siddiqui and have a bit of chat with her. मुनीबा बहुत आज थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा आपकी टीम के लिए, बताइएगा कि आपने जैसे ही आप टॉस जीती है लेकिन यू ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट, उसके क्या रीजंस थे? रीज़न यही था कि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, तो हम लोग ये चाह रहे थे कि हम काफ़ी मतलब अच्छा टोटल पोस्ट करें, तो आई थिंक हम 20 to 30 रन शॉर्ट थे, अगर मे भी वो होते तो आज डिफरेंट रिजल्ट होते, लेकिन ये है कि आई थिंक हमारी टीम ने काफ़ी अच्छी खेला और सुबह जिस तरह का विकेट था उसमें जिस तरह की बैटिंग की, तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट अदर मैचेस। चलें, आपका नेक्स्ट मैच चैलेंजर्स के साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। And now we call upon the winning captain Sidra Nawaz of Blasters. हेलो और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी टीम आज ये मैच जीत गई है। कैसा लग रहा है आपकी टीम ने इतना अच्छे तरीके से कंडीशंस को अपनी तरफ लेके गई, इवन दो रेनी कंडीशंस थे, आप लोग ने बहुत अच्छी आपकी कैप्टनसी नज़र आई है, बताइएगा। ऑब्वियसली क्रेडिट जाता है सब प्लेयर्स को, हमने बड़ा अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया इनको। हमारा टारगेट 180 था, फिर भी हम 7 रन हमने ज़्यादा दिए इन लोगों को, लेकिन बहुत अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया, बहुत अच्छा। निदा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, फातिमा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, साइमन ने, हमने एक यूनिट से जो एक बॉलिंग यूनिट से मुझे चाहिए था उन्होंने प्ले किया अंदर रूल। बिल्कुल, अब बहुत ही अच्छी आप लोग की परफॉर्मेंस सामने आई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। And now we have somebody, the player of the match, somebody who is the most experienced, Nahida Khan. Can we please have Nahida Khan? अस्सलाम वालेकुम नाहिदा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर मानी जाती हैं और आपका एक्सपीरियंस आज खुल के सामने आया है। थोड़ा सा बताइएगा मैच के हवाले से और आज की कंडीशंस के हवाले से, आपने पिच को कैसे रीड किया है और किस तरीके से आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अल्लाह का शुक्र है हम ये मैच जीते और मैंने अच्छा परफॉर्म किया। दूसरी बात ये कंडीशंस ठीक थी, पहली जो हमने बॉलिंग की उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, सेकंड बैटिंग में कंडीशंस बेहतर थी। बस ये था कि पेशेंस के साथ खेलना पड़ा और ये था कि जूनियर्स को साथ लेके जाना है और आखिर तक जाना है। उसके बाद मेरे साथ जो गुल खेली थी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मेरा साथ दिया। उसके बाद सिद्रा नवाज़ ने भी अच्छा हम पार्टनरशिप लगाई, निदा ने बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई मेरे साथ, सो ये मैच हम विन कर गए। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत मुबारक हो आपको फिर से। So here, that's it from the post-match presentation ceremony. We'll take a short breather here and we'll be back again with the post-match show.
match discussion of the very first match of Pakistan Cup Women's One Day Tournament 2021. And now the first match has ended between Dynamites and Blasters. Blasters have won by 6 wickets. Batati Charan, that this is when we have officially kicked off of what seems nothing less than an extremely promising, action-packed women's domestic season. With me here, I have somebody who you are always seeing on your screens. She is an former international cricketer, Marina Iqbal. Welcome to the discussion, Marina. First, tell us about the match. How do you think about the performance of Nahida Khan? She's an experienced player. Tell us something about that. Well, she played brilliantly. She was out of form, but I think with today's innings, she's back in the nick. And probably being a senior player, she showed us how a target should be chased down. That's true. I mean, it was a bit slow in the starting, but then they picked up the pace, and that is when they completely swept the board, right? So then tell us something about, because you have seen these players in and out, their performance. Tell us something, who should we anticipate would, take the board off the roof? Well, there are plenty of players actually, and we haven't seen the best of them because it was just the first match. Right. We've got a really good tournament up ahead. But talking about these two teams, I think Nira Dar stood out today. She showed that she's an international player. The way she played, the approach was really good. On the other hand, if I talk about Blasters, the way Sidra Nawaz led, she's a young captain, but the way she led, utilized and operated with her spinners, even the part-timers, that was really crucial. Because she kept the pressure on the Dynamites and didn't allow any loose runs. Right. Also, Muniba, it was very interesting that Muniba won the toss, and even though the conditions were rainy, she chose to bat first. But then, I think it played a bit against her team. What do you have to say about it? Well, I don't think so, because if we have a look at the pitch, it was quite a good batting wicket, and we haven't seen anything off the pitch. But bowlers did get some swing early on. But I think it was overall a good wicket to bat on. And then, as she said, that she wanted to test the bowling strength, which actually was exposed, and we saw that none of her bowlers actually capitalized later on. And it wasn't a big total, but it was always a hard task for them to defend this total. Yeah, even though it wasn't a mammoth total, what do you have to say about Alia Riaz's performance? Because she, I think, played brilliantly as well. Actually, Alia played against her nature. She was definitely very well aware. She played a mature innings, because that's not her nature to just maneuver around singles and doubles, but she knew the value of her wicket. It was really crucial partnership and crucial innings. And hats off to her that she adopted and adjusted in the environment and also the role she was given to. Right, and I think, thank you so much, Marina. Here, next match we have on Saturday. Which is against Dynamites versus Challengers, and that is going to be a very interesting match here from National Stadium, Karachi. So we will see you on Saturday and right here at National Stadium. Thank you.